change in format today will not change the focus of both teams as they begin their ICC Women's Championship campaigns. Bisma Maroof anchored her side to an earned it right series victory, finishing the game twice by leading from the front. In pursuit, Pakistan discovered raw talent in Tuba Hassan, who claimed 5 scalps and a Player of the Series award. And that's straight away, wicket! But victory came with hurdles as Sri Lanka jolted their chases regularly, bringing it down to the last over. Can the longer format bring a change in fortunes for Sri Lanka, or will Pakistan dominate over yet again? We're here in Karachi for the first one-day international between Pakistan women and Sri Lankan women. Hello, good morning and welcome to Southend Cricket Club for the first one-day international between Pakistan and Sri Lankan women. Well, this series is extremely important as this marks the start of ICC's third cycle of women's championship, that is. To talk about this and more, I've been joined by former vice captain Marina Iqbal alongside me. But before we ask her a lot of questions, let's have a look at the schedule of the series that has been here in Pakistan. Sri Lankan women starting off with T20 internationals. Well, it's been all Pakistan, winning it by 6 wickets, 7 and 4 wickets. This is the start of the first ODI, that is today. Got Marina Iqbal with me. Marina Iqbal, a very good opportunity for Pakistan's side to start off this ICC Women's Championship on their home soil. Familiar with the conditions, good signs for Pakistan? Well, definitely. I mean, they have gained the momentum playing the T20 series. It was a whitewash. It's never easy. And obviously, it's going to boost their morale. And playing at these conditions, they had a long camp here. They are, performing really well. They have understood the conditions. And also Sri Lankan team. So definitely, it's a win for them. And they have to go it and back that point. I know the Sri Lankan women have been here for over the week now. They've been going out a lot. Women especially liking the shopping here in Pakistan. Well, let's have a look at this package. Like this, especially in Pakistan. It's our first time in Pakistan. Whenever I come to Karachi or Lahore, we love shopping. Yeah. Carpets, saris, those days. हाँ जी, हम लोग सीरीज सेलिब्रेट करने आए हैं और लेकिन हम इंजॉय कर रहे हैं शॉपिंग यहाँ पर. आज हम लोग ऑफ डे था तो श्रीलंका की टीम के साथ आए हैं. Yes, women and shopping. This is match made in heaven. Well, let's talk about Sri Lankan's cricket here. They've been here for T20 series. It's a disappointment series. They won the toss every time, but the results haven't come their way. Yeah, I think they're still waiting for the viability of batting first. But again, you have to give few edge to them that they haven't played a lot of international cricket. T20 is not their cup of tea. Probably they'll depend a lot on Chamari Atapattu, but they do have some players who can actually click on ODI. So I think that's where they would be focusing, and that's where actually Sri Lankan performance meant. Absolutely. They've played well in patches, but the consistency has not been there. Probably, as you said, too much reliance on the captain Chamari Atapattu. They've bowled well, but their batting hasn't clicked really. Well, I think they're missing the point. Obviously, they know that power hitting is not their strength. But again, when you look at the strike rotation, which had actually helped them in the past as well, and what is their strength, they're also relying heavily on that. And on occasion, we've seen that it has a total chaos. So probably, I think they're trying a little bit too hard on trying to focus on their strengths, but not having an adequate plan where they can come out and plan how to score against Pakistan. Yeah, talking about the plan, and the guy who's responsible for the plan, Hashant Tilakaratne, the coach of Sri Lanka, spoke to Marina Iqbal a while earlier. Let's see what he has to say.
Hashan, considering the fact that Sri Lanka hasn't played a lot of matches in given year or so, what was your vision joining this team? Well, I'm not looking for excuses, but I think our girls are well equipped for this challenge. But unfortunately, our batters really let us down in the T20 series. So believe this is a new series, a 50 ODIs. So we believe that they'll put up a better show. Well, considering Sri Lanka overall, they are not favourite for the T20s, but what are the strengths in ODI cricket? Well, as I said earlier, our bowling is our strength, and even our batters are reasonably doing well the last series. Yeah, we believe that they will put up a better show. ICC Championship is kicking off today. Yeah. What areas did you work on in these 3 off days? Well, rotating the strike and running between the wickets. Key to our batting and our bowling strength, bowling dot balls and taking wickets at the right situations, wicket taking options. So we really work hard on those areas. Thank you. All the best for the game. Thanks very much. Lots of areas to work for Ishan Tilak, Ratna Dilshan. They have not played one-day cricket since 2018, so a lot of work is still to be done. Yeah, but they did play a lot of domestic cricket, but again, they have to focus on this series now because the points really count. And I think it's not an easy wicket to bat, but according to their strength, spinners are their strength and they can actually tackle Pakistan. Absolutely, we've seen that. This is not an easy pitch to bat on. Let's see, Marina Iqbal was on the pitch earlier. Let's see what she has to say. The ODI mode has been activated and I am out in the middle of Southend cricket ground. The temperature, it's 29, but it will get hotter later. Well, talking about this surface for the game, it's not a batting friendly soil that we have seen in the T20s. The pacers will get some aid from the breeze blowing, but the spinners, they will enjoy their time out in this surface. This window, just around middle and fourth stump, this is ideal, just around 4 to 5 meters down from the crease. Well, batters, it's going to be a hard task for you. You will be tested for a longer time, but if you keep your patience and pick your areas, you can score runs off the surface. Keys to score runs, I think, get to the pitch of the ball and keep your bat as close as possible. Keep your head forward, especially going to back foot, because it will keep low and it will get slower as the play proceeds. Wonderfully explained by Marina Iqbal there. Well, let's see what the two captains decide. Shah Faisal is there with the two captains. All in readiness for the toss here in the middle. I've got the two captains, Bisma Maroof from Pakistan, Chamari Athapathu from Sri Lanka, and the ICC match referee, Mr. Javed Malik. Bisma has got the coin. She'll give it a flip. You ready? Head. Heads. Heads is the call. And it is heads. Sri Lanka has won the toss. Chamari, what are you going to do? We are going bat first. Okay. You coming off of that 3-0 loss in the T20I series, you played well in patches. What are you bringing into this ODI series? Actually, this 3 ODIs is very crucial for us and important game for us. So we try to play positive cricket today. Yeah, we lost the last 3 T20s. We learned a lot of things there. So we have to play positive cricket today. Okay. And you played on this wicket before. What do you reckon is a good score? 200 is good score in this wicket. Okay. And any newcomers in the side that we haven't seen? 2 new faces in my side, Prasadini back to the side, and Hansima as well. Okay, thank you very much, and have a good one. Bisma Maroof, once again, Pakistan will be chasing. You coming off of a 3-0 win here, so how's the morale in the camp? Yeah, it's very high and we need to take this confidence into this series. Yeah, looking forward to the match now. And do you mind chasing on this wicket? I think it's a good batting track to bat on. Bowler has to restrict them, yeah, we will try to restrict them early and chase it down. And I'll make it easy on you. Which 4 are not playing today?
Anam Amin, Ayman Anwar, Sadaf Shams and Gulfroza, they are missing out today. Okay, Bisma, have a good game. Thank you. Thank you. So the news from the middle is that Sri Lanka has won the toss and they have decided to have a bat first. Now, match results might not have gone Sri Lanka's way, but toss definitely have gone their way. Let's have a look at the two sides that will be playing today. I'll let Marina Iqbal explain the sides. Yeah, they've got Inoka Ranavira back in and Achini as well. It's a good thing. I do like that they are relying on their, obviously again, bowling. Pakistan, a lot of changes. We've got Sidra Amin up the order, and definitely we'll see Ghulam Fatma in the action, another leggy. Sadia Iqbal, a very crucial potential for Pakistan, being a left armer. And Sidra Nawaz, the keeper, main keeper, is back in the side. Absolutely two formidable sides. Marina, if you have to pick one side for today, who will you pick? That's a difficult question. Given the fact that it's not an easy batting track, spinners will dominate. Pakistan has to be very adamant where they are going with this, chase. I think, again, definitely I'll pick Pakistan, but they have to do their work. Definitely, our expert says Pakistan is definitely favourite for today's match. We're going to have a break here. When we come back, we'll be there for the live action. Hello and a very warm welcome to the South End Cricket Club in Karachi, and this first ODI of the Transgroup ODI series between Pakistan women and Sri Lanka women, all in readiness here. It's a beautiful day here in Karachi, and I think in the middle at the moment both the sides are lined up ready for the national anthem. We'll go straight down there.
The national anthems being played here at the Southend Cricket Club. It's another hot morning, but the breeze is pretty good, and that will give some comfort to the players. As we look at both sides, I've been joined in the comm box by Leena Aziz. She'll go through the Pakistani lineup. Yeah, a few changes, 4 changes for Pakistan. Sidra Nawaz coming as a keeper, then Muniba still opening. The rest, usual suspects, different looking team for the ODIs. In Sri Lankan, they will heavily depend on Chamari Atapattu once again. Hasini Pereira showed some signs of form. We got a different wicket-keeper as well. Prasidini Virakodi is here. And also Nilakshi De Silva showed some signs of form. They'll be looking to put up a team performance here, a different format, the start of the World Championship as well, and looking forward to a great game of cricket here. Pakistan once again will be taking to the field, like Leena said, a different looking side from the T20I. 2 officials. Faisal Afridi is already in the middle. He'll be joined by Asif Yaqub. These are the match officials for today's game. Sri Lanka's openers are also taking to the field, but looking forward to this game. Leena, Sri Lanka won the toss once again, and they decided to have a bat first. This is the 4th consecutive toss they've won in the series as we watch the openers take to the field. Very important toss to win. They would want to put runs on the board. 200 is what she said at the toss, and she can do it with her batters, but Atapattu is the main character in this. The difference is, Faisal, that these in a one day you have 300 balls, so you can settle down. There's no hurry. She's the opener, so she will have a lot of time to gauge the pitch, the bounce, and the and the pace of the pitch. So if she can stay a few overs and settle down, then she can really launch and move towards those 200 runs, because we all know that she's the mainstay as far as the Sri Lankan batting is concerned, and she's the captain. So she'll have to lead from the front and just stay on the wicket. There are lots of deliveries to play, 300 in total, like I said before, so lots of time. There's no doubt about that. Atapattu is a world-class batter. Look at her stats, very impressive. 2,600 runs at an average of 31. That strike rate of 67 is pretty acceptable. But look at that, 178 not out, her best. On her day, she can take any bowling attack apart, and Sri Lanka certainly will be hoping for that. Hasini, her partner, like I said, she had a decent T20I series, so she's familiar with the conditions. She'd look to put that average straight, 14 at the moment. She's a better player than that, 46 her highest, and she'll be looking to provide a solid foundation to her team. Diana Beg, another usual suspect. Here's her record: 42 matches, 40 wickets, 33.75 average. She's also got 2 4-wicket hauls and an economy of 4.75. She's a bowler to watch out. She's done well for Pakistan. And the 2 batters ready. All in readiness. Call is play from Asif Yaqub. That wind will definitely help Diana Beg's outswinger, which will be an in-swinger to the left-hander Hasini. Little bit of shape, starting off a little too straight onto her pads. Looking for the second run. Throw on the bounce, and a good start for Hasini. She got in line, managed that swing very nicely, and got herself off the mark. Always good to get off the mark. First ball, your feet start moving, confidence is up. You look at the scoreboard and you see 2 runs and you're off, your team is off. Hasini's played well. Angling across the left-hander. She was playing for that swing, which never happened. Diana Beg is a very, very experienced campaigner. A very, very good athlete. She is a standout bowler for Pakistan, and a lot is expected of her. Watch. Just some movement away. Good to see. And the left-hander is always going to be in trouble with the movement away.
That is their area to hit the ball, and that is where they get into trouble also. Little bit of shape back into the left-hander with that breeze that is blowing from our left to right as we look at the stadium from our vantage point. And Diana Baig is a good exponent of a way swinger, but like we said on the second delivery, she will be looking to mix it up. Early change in field already. There's a short cover catching, and there's also a short mid-wicket catching. Yeah, good to see that they have this aggressive field positions, because once you're in the eye line of the batter, it does create problem. It would stop them from driving, and they would be thinking about those field positions, the short cover and the short mid-wicket. So good captaincy. Very compact. Not a big stride, but that head was going into the shot nicely. Hasini was pretty impressive, like I said, in the T20I series. So she would have spent time in the middle. That really helps. And coming into this slightly longer format, like you said earlier, Lena, she can have that time that's available at her disposal in 50 overs. And she can stay longer at the middle. Nice firm push down the ground. So 2 runs taken, end of the over, 2 for no loss, Sri Lanka. Fatma Sana, a very impressive youngster, just 20 years of age, already has played 23 games under her belt, 28 wickets as well, 1 4-wicket haul, and the best of 5 for 39. A lot is expected of her. She really came to prominence in the last year or so, and that ICC award really put her on the world map, so to speak. Confidence must be really high, sky high for Fatma Sana. She's a good young bowler, good athlete, picks up wickets for Pakistan. And for Sri Lanka, Atapattu will have to take her time today, bat well, anchor this innings. She's their mainstay, so anchoring is important. If they want 200, she's the girl. Slanting away from the left-hander. Fatma Sana on the spot immediately. I think that's good about her. She's got a very simple and a very nice action. We've seen already on this page the ball is keeping slightly low. Yeah, it was keeping low. The previous matches also looks flat, will keep low. Slow and low. There is a slip, which is always a great sign. Means that the bowler is being backed by her captain. And there is a chance of an edge. And always a good sign. Okay, that pretty dry. But the soil is pretty lifeless, so there's not a lot of carry. It is hard. And these cracks will open up because it's very hot. And today is a 50-over game, so it's going to last a fair distance longer than the T20 game. Batting second will be a problem. You're the pitch guru, Faisal. Although I believe there are no pitch gurus in the world. Like Sunil Gavaskar once said, it's the most difficult thing in the world to reach the pitch. And it's just very difficult task. Close look at Fatma Sana. Very, very good run up. Look at her still head. She just can't drag that
right foot a little bit more across, but she's young, and Coach Salim Jaffer been working very hard with her. He's consistently looking to push that ball away from the left-handers. Having two left-handers in the middle probably will allow her to settle into a decent line and length. That is why the slip is there. There is a plan for the left-handers taking the ball away. First over, we saw Diana taking one ball, a couple of balls away from the batter. And now we've got the slips and the bowlers trying to take the ball away from the batsman, trying to get that edge. Talking about Fatma Sana, like she's young, she can still improve on a couple of things on her action as well. That probably will give her a yard or two of extra pace. That run-up is very rhythmical. The arms pumping. That gives her a very good balance. Look at that delivery stride. Look at that. Her point of release can be a lot higher. We'll come back to it because she's not using her maximum height at the moment. And if she can do that, she will get that ball done a little bit quicker. We'll talk about it when we come back. 2 overs done, 4 for none. Here the two teams, we told you there were 4 changes for Pakistan, some newcomers coming in. And here's the team for Sri Lanka, 2 changes for them. Their main players would be their spinners, the Trioka they've got, which is going to be very important. Once again, that one keeping slightly low. That will be the problem for the batters in execution of their stroke play. And it's not going to get better as the day wears on. So that's why winning the toss can be an advantage if Sri Lanka can put up a decent score. One slip in place, short cover. Anam Amin and Nashra Sandhu are the 2 players missing in this Pakistan 11 from their previous ODI, which was against New Zealand in the World Cup. The spinning Trioka we were talking about for Sri Lanka, Dilhari, Inoka and Kumari, 3 very important bowlers. 2 left-arm spinners and Dilhari, of course, the off-break bowler. So very important, those 3 bowlers for Sri Lanka. Little bit of proactive movement there from Chamari. Diana Baig has had a lean patch recently. She's only taken 3 wickets in 7 games in the World Cup this year. Pakistan expected a lot out of them, but Sri Lanka playing after 2.5 years, and Pakistan is right on top amongst the list of the teams who played most ODIs since 2020. It is a fact, actually. Since COVID, Pakistan, the men's team and the women's team, have been the one who's played a lot of cricket. And where a lot of tours got cancelled or postponed, Sri Lanka suffered. But Pakistan was the team that they played plenty of cricket during that time. Oh, it's good that Pakistan took advantage. It was a tough time for the world, but even then we went on tours. We played in tough conditions, lived in bubbles, not easy.
But then just shows how much Pakistan as a nation, we love cricket and how much we've contributed in this very tough time. Slightly angled face of the bat. And Sri Lanka is playing for the first time since the pandemic. So throughout that whole period, they didn't play a single ODI. So you make a good point here, Leena, that Pakistan was the team, despite the hardships and uncertainties, both men and women, they were prepared to tour, and they went through a lot. And I think World of Cricket needs to recognize that what Pakistan cricket did on those difficult times. Strays down the leg side. Diana, even in that last T20I, she didn't look in her usual rhythm, and like Mazhar just communicated to us that she's only has 7 wickets in the last 7 games, 3 wickets in the last 7 games. That all of them were in the World Cup. It's a good chance for Diana to get her rhythm back. Sidra Nawaz also coming back to the team today as a keeper. The more she bowls, the better the rhythm will become. 7 for no loss, 3 overs gone. Sidra Nawaz is one of the top wicket keepers. Slow start, steady start. Sri Lanka wouldn't mind that. This is not a wicket where you can come out all guns blazing. Despite Chamari Athapaththu consistently trying to move around her crease to play with the lines and lengths of the bowlers. Early doors, even now, it looks like Chamari Athapaththu, she's itching to get to a quick start. That's her character. But no freebies yet from the Pakistani bowlers. This time wide of the crease, once again keeping slightly low. Fatma Sana very cleverly just using the crease, but we're talking about her action last over. And there's a couple of things that Coach Salim Jaffer would be really interested in working on, because that left knee, which ideally should be braced, very little problem here. This is excellent. But look at that, her point of release, she's hardly using her full height, but also the right leg as well. That drag is not in a straight angle. Chance, and I think this is the first wicket. Yes, this is not good from Sri Lanka. They must have that nightmares of 5 run-outs in the third T20I. And this is a real big wicket for Pakistan, but an absolute gift. Complete harakari committed. There was absolutely no need to take this run. Just tapped the ball and went for it. Ball didn't go anywhere, so I just feel there was absolutely no need, and suicide committed, and just lost the first wicket. Run out, no reason at all, but first wicket's gone. Hasini Pereira gone for 4. Once again a horror start for Sri Lanka. 7 for 1. Hansima Karunaratne batting at number 3 for Sri Lanka.
got a job on her hand because this is not a good start. Atapattu is there, but she needs support. But that was a bad call. We'll come back to it. Off the mark, the new batter, Karunaratne. Left-right combination on the crease now. This should make things difficult for Pakistan. Never easy when a left-right combinations are on the crease. We were talking about Fatma Shana's action. There are a couple of good things also. The leap is really good. I like the leap. But then maybe it should be more side-on. And you talked about the brace leg. So a couple of improvements needed. Look at that. It was Chamari's call. And she hesitated herself. And probably that proved fatal for Hasini. There was never a run in that. And like we said in the beginning, 300 balls, no hurry. You take your time, get settled. So there was no reason to take that single. Ultimate suicide committed. Talking about Fatma Sana, her career is on a rise. And she had pretty decent World Cup. She ended up getting 7 wickets in that World Cup. And living up to her reputation. That was on the legs, picked up very nicely. Couple of bounces into the fence. First boundary of the day. This is a very good pickup shot. First boundary. And that should really give her some confidence, especially after that run out. 4 overs gone, 12 for 1. Diana Baig bowling to the right-hander for the first time. Generally her lines and lengths have been pretty good. I think she's bowling well within herself. She's capable of bowling quicker, but with the conditions I think she's realized just drop it on a line and length. But that boundary on the last, it wasn't quite a half volley, but she picked it up very nicely. She picked up the line very quickly. Just that roll of the wrist. She's a powerful player. Power packed. Atapattu. Nicely played for a single. There is a fielder on third man. And we were talking about Diana Baig. We were saying earlier that she's, had a loss of form. So to come back in form, maybe she's bowling well within herself, bowling line and length, get that line and length going, and then get that pace. It's important to get back in form. She's recently part of a franchise league. She played for Tornadoes in the Fairbreak Invitational T20 in Dubai last month. A franchise league that had players from 35 countries. And from Pakistan, the likes of Baig, Bisma Maroof, Sana Mir, Fatma Sana and Alia Riaz. They participated in that tournament. And in the opening match of that tournament, Chamari Atapattu scored 100. Remember, Sri Lanka didn't play in the World Cup, so she announced her presence in that tournament early doors. Atapattu also has 100 in her last ODI. That was against Australia, even though that was almost 3 years ago. She's a quality player, there's no doubt about it. Once she stays on a wicket, gets her eye set, eye in, she can get those big runs. There's no question about it. She can play strokes all around the stadium, hit everywhere, all nooks and corners. Excellent player, just needs to spend some time.
She also needs to get used to that role of captaincy as well, because apparently Sri Lanka during that 2.5 years they lost quite a lot of senior players, and her role in the team has completely changed from a dasher, a newcomer, to now being leading the side and still be the main batter with her style of play. There must be added pressure on her. Age-old debate about whether a dasher should be a captain, best batter should be a captain. I'd say, you know, if the person's got leadership ability, should be captain. 5 overs gone, 13 for 1. First 5 overs, Pakistan has largely bowled good lines and good lengths on a sluggish pitch. Not much room has been provided to those Sri Lankan batters. They rue the fact that they lost an unnecessary wicket. Once again looking to use the crease, Fatma Sana this time strays down the leg side. A rare fumble from Sidra as well behind the stumps. She's one of the very top wicket keepers of the world. Yeah, nimble-footed, Sidra Nawaz. Soft hands, very important for a wicket keeper. Both those things. Also that action we were talking about, more chest on, needs to get side on, but a couple of very good things. The leap I really like, and that's a good thing for her. Keeper Bisma, short cover catching. Tentative push, but that running is still very hesitant. Sidra Nawaz in action. Yeah, talking about Sidra, she's got very, very good hands, and her footwork is good too. A big test for wicket keepers on this pitch though, because the way it's keeping low was on the second bounce, but her real skill will be on show when she comes up to the wicket against spinners. You can see how quick she is. Slip and a short cover catching. Faisal, I don't know if you agree with me or not. When the pitch is keeping so low, it's slowish in nature. Maybe the slip and the keeper need to just come up a little bit, because if there is an edge, it probably wouldn't carry. So they just need to move up a little bit. Head-to-head between Pakistan and Sri Lanka. Clearly Sri Lanka way ahead in that comparison, but it isn't the true picture, because in the last 10 games Pakistan have won 8. Slightly bringing the equation to parity, but still Sri Lanka a long way ahead. And a very interesting stat that Mazhar has come up with, that out of the first 20 games, Sri Lanka won 19 between these two sides. So that's the kind of dominance that Sri Lanka had over Pakistan, but Pakistan is pulling it back. Yeah, it just goes on to show that they made a good comeback in the last 10 games and made a good match of it. 14 for 1 is the score right now. Almost 6 overs gone. From here on, Sri Lanka can now start getting a few more runs. They've looked at the pitch, saw the conditions, seen how the pitch is behaving. Now, particularly, Atrapattu can go for a few shots. Warming up, Nidadar, Lady Lala. Nicely timed, but straight to the fielder. 6 over done. Sri Lanka
14-1. क्राउड आहिस्ता आहिस्ता साउथ एंड क्राउड में बढ़ते हुए हमने देखा कि T20 के जो गेम्स है उसमें अकील बहुत ज़्यादा क्राउड था। बहुत खुशाइन बात थी कराची के क्राउड के लिए कि बहुत नंबर्स में आया क्राउड यहाँ पे। चमारी आतापातू आज अपनी जो नेचर के अगेंस्ट बैटिंग कर रही हैं, शायद रियलाइज़ करती हैं कि उनकी विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि जब ये आउट हो जाती हैं तो उसके बाद टीम का मोराल जो बहुत गिर सा जाता है। तीनों T20s में हमने देखा अच्छा आगाज आखिरी T20 में मिला था, लेकिन जब आउट हुई तो उसके बाद एक लाइन सी लग गई। अकील समर मेरे साथ मौजूद हैं। यस, ODI एक डिफरेंट फॉर्मेट और अब तक इन्होंने जो शॉट सिलेक्शन का मुजाहरा किया उसमें वो हिंट तो नज़र आया है जिसको इनको यहाँ तक पहुँचाने के लिए तक़वियत मिली। ओह ये अच्छा बॉल था, लकी रही यहाँ पे जमारी आतापातू, बहुत करीब से बल्ले से बॉल गया। एक डिफरेंट बॉल गेम है जब आप ODI क्रिकेट में फ़ौरन से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और अब कम से कम ये इंटेंट नज़र आ रही है पिछले चंद ओवर से कि वो शॉट्स के लिए जा रही हैं, ख़ास तौर पर अपने पार्टनर को गंवाने के बाद। गेंद में शायद बाउंस से कुछ खाइफ नज़र आती थी। इससे पहले स्क्वायर की एक बड़े मजबूत प्लेयर हैं, ऑन साइड पर एक बड़ा खूबसूरत फ्लिक शॉट लगा चुकी हैं जो कि कहीं ना कहीं जयसूर्य का याद ताज़ा करता है। साइड ऑफ स्टंप एक और शानदार डिलीवरी। डाना बेग ने बहुत शानदार बॉलिंग की, अपना चौथा ओवर करी, सिर्फ 6 रन दिए हैं। और ये जो लाइन और लेंथ की जब हम बात करते हैं तो शायद पूरी पाकिस्तान साइड में सबसे बेहतरीन बॉलर डाना बेग अपनी लाइन नहीं छोड़ती हैं, एक ही जगह पर बॉल करती रहती हैं। एक मरतबा फिर उन्होंने कमिट करवाया ऑफ स्टंप के बाहर और अब टेंटेटिव नज़र आ रही हैं चमारी। उस पिछले शॉट को अटैम्प्ट करने के बाद उन्होंने गैर ज़रूरी हीरोइक से इज्तनाब किया है और यही वो मोमेंट्स हैं जो कि मज़ीद विकेट्स लाने का बायस बन सकते हैं। शमारी आतापातू श्रीलंका की शायद सबसे बेहतरीन बैटर रही हैं। हालिया में हमने देखा बहुत ज़्यादा रन्स किए। फेयर ब्रेक इन्विटेशनल T20 में भी 313 रन्स बनाए, हाईएस्ट रन गेटर थी वहाँ पे भी। लेकिन ज़्यादा सूट जो इनको फॉर्मेट करता है वो T20 करता है, इनके स्टाइल ऑफ प्ले को। बड़े हिट मारती हैं, लेकिन ODI में भी 178 रन की बड़ी इनिंग खेल चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और क्या ही शानदार इनिंग थी वो। 5 सेंचुरीज बना चुकी है अपने करियर में ODI में। तो ये कहना ज़रूर होगा कि श्रीलंका की सबसे बेहतरीन बैटर यही है। एक बार फिर बहुत जोरदार तरीके से मारना चाहती थी, लेकिन प्लेसमेंट जहां मारना चाहती थी वो नहीं थी। फिर भी 4 रन डेफिनेटली मिल जाएंगे इनको। एज जरूर था लेकिन इतनी जोर से शॉट मारती हैं कि फिर भी बॉल जो है वो कैरी कर गया 4 रन के लिए। मुस्कुराहट वापस आई है श्रीलंकन कप्तान के चेहरे पर। ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन के साथ एक मरतबा फिर कमिट किया डियाना ने और उसका भरपूर जवाब दिया। मुकम्मल कंट्रोल में नहीं थे शॉट को खेलते हुए, लेकिन फुल स्विंग ऑफ बैट और बिल्कुल तीर की तरह सीधा इन्होंने अबूर करवाया साइड स्किलिंग की जानिब। एक अच्छा चौका, सिर्फ दूसरा अब तक की इस इनिंग्स का, तो एतमाद देगा श्रीलंकन कप्तान को। उनको जो टोटल हासिल करना चाहती हूँ कम से कम 200 के बियॉन्ड का हासिल करना होगा। ये अच्छी क्रिकेट है। 7 ओवर से इख्तिताम पे 18 पर 1 श्रीलंका। हसीनी पेरेरा आउट होने वाली वाहिद प्लेयर। और अकील समर गेस कीजिए कैसे आउट हुई हैं वो। एक और रन आउट श्रीलंका के लिए हमने आखिरी T20 में देखा कि 5 रन आउट से एक इनिंग में हुए थे। एक अच्छी पोजीशन में थी श्रीलंका की साइड आखिरी T20 में,
लेकिन उन 5 रनआउट्स की वजह से ढेर हो गई और 107 रन ही बना सकी थी। तो ये एक मसला डेफिनेटली श्रीलंकन रनिंग बिटवीन द विकेट्स में रहा है। निदा डार 91 मैच खेल रही हैं, 84 विकेट्स, 3 बार 4 विकेट्स आउट ले चुकी हैं एक मैच में। बहुत ही शानदार ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, टॉप 10 में शामिल हो गई हैं T20 बेस्ट ऑलराउंडर्स में इन द वर्ल्ड। तो एक बहुत अच्छा साइन है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। स्लिप के साथ बॉल करेंगी। यहाँ सर्कल में गेंद करने के लिए आई हैं और इब्तदाई 10 ओवर्स में जिस तरफ की हवा है राइट हैंडर को फ़ायदा हासिल हो सकता है कुछ कीमती रन्स हासिल करने का, क्योंकि अभी भी फील्डर बाहर नहीं है बड़ी तादाद में, लेकिन इन्होंने ऐसी मोहतात के साथ रन्स को बनाने का फ़ैसला किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को जो शायद ज़रूरत है कि वो पार्टनरशिप को बनने का मौका ना दे, वो भी इनवाइट कर सकता है, क्योंकि अब तक हमने वो एक वीकनेस देखी है श्रीलंकन खिलाड़ियों के पार्ट पे कि वो बड़ी शॉट्स को लगाने के लिए जाते हैं तो मुकम्मल तौर पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते और वो जो हाफ हार्टेड इंटेंट है वो उनके आड़े आ जाती है। सो विल सी कि किस अंदाज से स्ट्रेटजी काम करती है, क्योंकि निस्बतन जल्द आई हैं। आमतौर पर हमने देखा है कि फास्ट बॉलर्स कम से कम 8 ओवर्स तक एक्शन में रहती हैं। मिड विकेट पे कप्तान खुद आ गई हैं। बहुत स्लो बॉल करती हैं निदा डार, फ्लाइट बहुत शानदार तरीके से देती हैं। और जैसा ये पिच है ये बहुत सूट करता है ऐसी बॉलिंग को, क्योंकि बल्ले पे ज़्यादा अच्छे तरीके से बॉल आ नहीं रहा है। T20s में भी हमने देखा उस तरीके से स्ट्रोक प्ले के लिए ज़्यादा ये पिच साजगार नहीं है, तो सूट करता है इनकी बॉलिंग को। तुबा हसन को भी हमने देखा बहुत स्लो फ्लाइट से बॉल करती हैं और यही उनकी कामयाबी का राज रहा है। यहाँ पे एक शानदार डेब्यू सीरीज रही उनके लिए। तब तक इन्होंने अपनी इंटेंट वाज़ेह की है स्पिनर्स के खिलाफ कि गैर ज़रूरी शॉट से वो इज्तनाब करें। फ्लाइट दे रही हैं एक मरतबा फिर। निदा डार भरपूर एक्सपीरियंस की हामिल हैं, आई लाइन के ऊपर से इनवाइट कर रही हैं और एक अच्छे पहले ओवर को मुकम्मल किया। निदा ने सिर्फ 2 ओवर दिए, श्रीलंका 20 पे 1। हरचंद के सुबह के वक्त बड़ा बेहतर मौसम होता है, लेकिन आगे चल कर एक और निस्बतन गर्म मौसम रहने का इम्कान है। लेकिन अगर आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान में कहीं और से या दुनिया भर में कहीं भी, तो कराची मेरे ख्याल से उन चंद शहरों में एक है जहाँ पर काबिल बर्दाश्त सबसे बेहतर मौसम रहता है जून जुलाई के महीनों में। कंटिन्यू कर रही हैं डियाना। गो कि श्रीलंका की साइड शायद आपको इस वक्त उस अपने आउटफिट में नज़र नहीं आती जो कि ओवरऑल जो कि इनका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके म्यार से हो, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। श्रीलंका की टीम ने ना सिर्फ मेंस में बल्कि शायद अपनी मेन क्रिकेट से बढ़ के परफॉर्म कर रखा है अपने पिछले चंद सालों की परफॉर्मेंस में, जो कि इससे पहले उन्होंने 20 मैचेस खेले थे पाकिस्तान ने श्रीलंका के ख़िलाफ़, उसमें 19 मैचेस इन्होंने हारे, जो कि बड़ा एक ग्लेयरिंग स्टेटिस्टिक्स है। सिर्फ एक मैच में फतह हासिल हो सकी और अचानक से सूरत हाल ने पलटा खाया है। एक अच्छी बात तो ज़रूर है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ है। 2010 के बाद से अगर हम देखें तो डोमिनेट किया है श्रीलंका को। बहुत एक डियाना बेग भी एक ख़ास वजह है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है पाकिस्तान की साइड का। बिस्मा मारूफ, जवेरिया, आलिया रियाज, इन सब के आने से बहुत इंप्रूवमेंट आई है पाकिस्तान टीम में। स्किल वाइज बात करें, फिटनेस वाइज बात करें, तो एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि एटलीस्ट इंप्रूवमेंट की तरफ है पाकिस्तान वुमेन साइड। स्विंग अवेलेबल है हरियाणा के लिए और शायद यही वजह है कि बहुत ध्यान से इनको खेल रही हैं, क्योंकि उनको शायद मालूम है कि अगर इनके ये पहला स्पेल आप निकाल लेती हैं तो रन्स डेफिनेटली अवेलेबल होंगे। बड़े लीप्स एंड बाउंड तरक्की की अगर हम जो कमिटमेंट की बात करते हैं पीसीबी की वुमेन क्रिकेट के लिहाज से, क्योंकि शायद आपको इब्तदा में उतने रिटर्न्स हासिल नहीं होते
कमर्शियली भी और फ़ैन फॉलोइंग वाइज भी, लेकिन आपको इन द लॉन्ग रन स्पेंड करना पड़ता है। जिस अंदाज से कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, जो इनको पैकेजेस हासिल हुए हैं अपनी लीव्स के लिहाज से और अपने दीगर ट्रेनिंग के लिए, आई थिंक वो सेकंड टू नन है। कदमों का इस्तेमाल किया, ये शानदार शॉट है, बहुत ही आला शॉट, हवा में बॉल और बहुत ही दूर जा गिरा है। हमारे आतापातु दिखाते हुए अपने असल रंग, क्योंकि इसी स्टाइल के लिए जानी जाती हैं, ये बड़ी हिट मारती हैं और इस बार शानदार तरीके से 6 रन हासिल किए। हवा के साथ खेली और क्या खूबसूरत अंदाज से उन्होंने फ़ज़ाई रास्ते का इंतखाब किया है और जो ज़रूरत थी शॉट को इन्फोर्स करने के इस पिच पे, वो करने में कामयाब हुई। मुख्तसर बाउंड्री का भरपूर फ़ायदा उठाया है। दिलकश शॉट जो कि इससे पहले एक चौका लगाने में कामयाब रही थी, लेकिन उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज से डेवलप किया है और अपने टैलेंट का भरपूर सबूत दिया है श्रीलंकन कप्तान ने। और लगता है कि गेंद का भी इंतज़ार करना पड़ेगा अली। वो कोविड के दिन तो शुक्र है कि शायद कम अज़ कम इस सीरीज़ में उससे बाहर निकल चुके हैं, जिसमें गेंद आने के बाद उसको कई मराहिल से गुजरना पड़ता था, सैनिटाइजेशन और सफाई सुथराई। लेकिन आई थिंक कि गेंद उन्होंने किसी ऐसे कोने में फेंक दिया जहाँ से फौरी तौर पर वापसी नहीं। बड़ा ये एक खूबसूरत और गुंजाना बात तो है, लेकिन बड़ा हरा भरा इलाका है और बिल्कुल घरों के बीच में आपको किसी ताज़ा हवा के झोंके से कम नज़र नहीं आता अचानक से जब आपको इतने बिजी एरिया में क्रिकेट ग्राउंड नज़र आता है। लेकिन घर के अंदर नहीं गेंद गई, ये गेंद सिर्फ और सिर्फ स्टैंड तक ही गई और वहाँ से वापस आ रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट मेंस की भी हो चुकी है यहाँ पे अली, यू रिमेंबर? कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ, 1993 के गालिबन आप जिक्र करें जब पाकिस्तान ने यहाँ पे अपना टेस्ट मैच खेला था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। शानदार कामयाबी हासिल की थी पाकिस्तान ने। वकार यूनुस ने 13 विकेट हासिल किए थे उस मैच में। पहला एज अ कैप्टन उनका पहला मैच था। एक और वजह है याद रखने की। मैं तो बिल्कुल ही छोटा सा होता था, तो आपको मुझे यकीन है कि याद होगा। डिफेंस क्रिकेट ग्राउंड के नाम से उस वक्त जाना जाता था और यकीनी तौर पे जिस अंदाज से अचानक से इस ग्राउंड को डेवलप किया गया, जिम्बाब्वे ने यहाँ पर दौरा किया, उसके बाद मज़ीद फैसिलिटीज़ यहाँ पर डेवलप हुई हैं। और कराची में मजमूई तौर पर हम अक्सर बात करते रहते हैं, चाहे आपको फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट की बात हो, बड़ी तादाद में बैंक्स के तवसत से, और इसके साथ साथ जो प्राइवेट फैसिलिटी है, जो पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के टॉप पे, ये क्लब हाउस है और जिसके बाइस यहाँ पर इस ग्राउंड को मेंटेन करना मुमकिन हुआ। दैन मोइन खान एकेडमी, राशिद लतीफ़ एकेडमी के ग्राउंड्स मौजूद हैं, फिर स्टेट बैंक, नेशनल बैंक, UBL। तो कहने को तो वैसे लाहौर बागों का शहर है, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड के फैसिलिटीज़ के लिहाज से अली आई थिंक कंपटीशन पुटअप कर रहा है या कराची लाहौर को। या शायद यहाँ पे बॉल से ज़्यादा खुश नहीं है एम्पायर्स। बिस्मा मारूफ भी खुश नहीं, क्योंकि इतने ज़ोर से बॉल शायद जाके दीवार को टकराया और अब बॉल उनको चेंज शायद किया है, जिससे शायद बिस्मा खुश नहीं, क्योंकि रिलेटिवली नया बॉल था जिससे पहले बॉलिंग कर रही थी। तो शायद इसी बात की जो बहस है बिस्मा के साथ कि अब थोड़ा पुराना बॉल उनको दिया गया अब। और ग्राउंड्स की अगर बात करें तो लाहौर में भी बहुत शानदार ग्राउंड है, स्पेशली अगर आप मॉडल टाउन की तरफ आते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्राउंड्स मॉडल टाउन के अंदर मौजूद हैं। बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन्ड ग्राउंड है, क्लब क्रिकेट बहुत होती है वहाँ पे। लेकिन अगर आप कराची की फैसिलिटीज़ की बात करें तो शायद हम थोड़ा पीछे रह जाएंगे। कदमों का इस्तेमाल किया था पिछले बॉल पे चमारी आतापातु ने, तो उसी नतीजे में जो विकेट कीपर हैं वो अब स्टंप्स के ऊपर आ गई है। अच्छा एक स्ट्रेटजी हो सकती है अगेंस्ट चमारी आतापातु, क्योंकि कदमों का इस्तेमाल करना पसंद है उनको। जी हाँ, अगर आप लाहौर की बात करें तो मेरे ख्याल से एक बाग़ जना ग्राउंड बाकी सब ग्राउंड्स पे भारी है, जो उसका खूबसूरत बैकड्रॉप, जो उसकी तारीख़ी हैसियत है। सो गेम जारी। चमारी आतापातु क्या इस छक्के के बाद मज़ीद हिरुक्स के लिए जाएंगी, क्योंकि ये सर्कल के इसके बाद एक ओवर बाकी रह जाएगा और ये वाइड हो जाएगा। और शायद इसी चांस के लिए सिद्रा जो है वो विकेट के ऊपर आई हैं, लेग साइड के ऊपर, क्योंकि चमारी की जो बैलेंस है वो थोड़ा आउट हो गया था और एक चांस क्रिएट हो सकता है कि पाकिस्तान टीम जानती है कि ये बहुत बड़ी विकेट है। अगर यहाँ पे चमारी आतापातु की विकेट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत पलड़ा भारी हो जाएगा। इस बार बैलेंस रहा, कलेक्शन भी अच्छी थी रही। बेहतरीन बॉलिंग है, ये एक्सपीरियंस है जाना बेग। अच्छा कमबैक किया है 6 रन के बाद।
9 ओवर्स के इख्तिताम पे 27 पर 1 श्रीलंका। डिसअपॉइंटिंग टूर रहा है अभी तक श्रीलंका के लिए। क्लीन स्वीप हुआ T20 सीरीज में, ये अच्छा मौका है इनके लिए कि वनडे सीरीज में कम बैक कर सकें और एक मोमेंटम हासिल कर सकें। आईसीसी चैंपियनशिप का ये मैच है, पहला मैच है ये, आज से आगाज हुआ है, तीसरा सर्कल है ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। इसे खेल दिया हवा में सीधा फील्डर के पास, तो इंटेंशन शायद अब थोड़ा हमें नजर आ रही है कि रन्स की तरफ जा रहे हैं। निदा डार जो कि अपने मखसूस अंदाज से काफ़ी वेरिएशन लाने की कोशिश करते हुए और आज ज़्यादा फ्लाइट दे रही हैं। कोई काम इनका एक्शन बहुत ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल इनका एक्शन लगता है, क्लासिक ऑफ स्पिनर वाला एक्शन है। बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही थी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जब आखिरी दफ़ा वर्ल्ड कप में खेली थी हैमिल्टन में, 4 विकेट्स हासिल की थी, जो वाहिद विक्ट्री थी पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में। एक बहुत ही सीजन कैंपेनर है, ना सिर्फ बॉलिंग से और बैटिंग में भी बहुत क्रूशल रन्स करती हैं। दूसरे T20 में हमने देखा, पहले में रादर हमने देखा कि एक मैच विनिंग इनिंग खेली थी बिस्मा के साथ मिलकर इन्होंने। अच्छे तरीके से ड्राइव किया है। गुजरांवाला से ताल्लुक है निदा डार का, बहुत ही एक्सपीरियंस कैंपेनर है ये पाकिस्तान साइड के लिए। एक गेंद रह गई है ये इब्तदाई पावर प्ले की और निदा डार अपना दूसरा ओवर करने के लिए मौजूद हैं। अब तक महज 2 रन दिए हैं, इस ओवर में भी अब तक उन्होंने कोई रन नहीं दिया। सो अपनी बॉलिंग के टॉप पे और ज़रूरत से ज़्यादा शायद मोहतात, लेकिन 1 रन वाइड का बहरहाल हासिल हो जाएगा श्रीलंका को। सो ओवरऑल अगर श्रीलंका ने अपने लिए इस पावर प्ले में टारगेट सेट किया था विकेट्स गिरने का तो शायद उसके साथ हैं, लेकिन रन्स के लिहाज से कम से कम 10-15 रन पीछे लग रही हैं। हालांकि 2 अच्छी बाउंड्रीज हासिल की इनके कप्तान ने। एज 1 रन तो जरूर मिलेगा, रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखना होगी। ये अच्छे तरीके से वापस आ गई हैं, 2 रन मुकम्मल किए। ये जब भी बॉल अब ये भागती हैं तो हमें थोड़ा डर सा लग जाता है। 10 ओवर्स का इख्तिताम हुआ, 30 पर 1 श्रीलंका। हसीनी पेरेरा रन आउट हुई 4 रन्स बनाकर, लेकिन जो खुशाइन बात है वो है चमारी अदलापातू अभी तक क्रीज पर मौजूद हैं 16 रन्स बनाकर। उनके साथ हंसिमा करुणारत्ने जिन्होंने 5 रन्स बनाए। एक अच्छी क्रूशल पार्टनरशिप है श्रीलंका के लिए, 23 रन्स पर पहुंच चुके हैं 10 ओवर से इख्तिताम पे। तो इब्तिदा में डियाना बेग ने ऑन द ट्रॉट 5 ओवर्स मुसलसल किए हैं और निस्बतन वो महंगी साबित रही हैं। सिर्फ 1 विकेट पाकिस्तान को रनआउट की सूरत में हासिल हो सकी और अब दूसरे एंड से भी बॉलिंग में तब्दीली। सादिया इकबाल लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंद करने के लिए आ गई हैं। अच्छा आगाज है सादिया इकबाल की जानिब से। अनम अमीन की जगह इस टीम में आई हैं। T20 में हमने देखा कि अनम अमीन लेफ्ट आर्म स्पिन की जिम्मेदारी निभाती थी। इससे पहले हमने देखा नाशरा सिंधु भी टीम में शामिल थी। दोनों ही अनम अमीन और नाशरा सिंधु इस टीम में नहीं है जो कि वर्ल्ड कप में मौजूद थी। नाशरा शायद फिटनेस की वजह से, शोल्डर इंजरी की वजह से शायद शामिल नहीं है। इसे स्वीप कर दिया शानदार तरीके से, लेकिन प्रोटेक्शन मौजूद है, 1 ही रन बन पाएगा। तो वकील काफ़ी लकी हैं पाकिस्तान के, बहुत ज़्यादा क्वालिटी स्पिनर्स अब पाकिस्तान में हमें देखने को मिल रहे हैं। सादिया इकबाल उनमें से एक है। तूबा हसन ने बहुत शानदार तरीके से डेब्यू किया है। नाशरा सिंधु भी एक बहुत ही फॉर्मेडेबल एक्सपीरियंस बॉलर बन चुकी हैं पाकिस्तान साइड के लिए। फील्डिंग को अब दोबारा चेंज करते हुए स्लिप के साथ बॉलिंग कर रही है। अच्छी कप्तानी है बिस्मा की जानिब से, अटैक कर रही है यहाँ पे। जी हाँ, और जिस अंदाज से अब तक खेला है हांसेमा ने 22 गेंदों पे महज 5 रन बनाए हैं
वो इस बात को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन उनके आड़े आएगी। रिमाइंडर हमारे देखने वालों के लिए कि 4 फील्डर्स अब बदस्तूर बाहर रख सकती हैं दायरे के वुमेन क्रिकेट के रूल्स के मुताबिक। खूबसूरत गेंद जो कि मुकम्मल तौर पर बीट करती हुई गई, ये शार्प लेग स्पिन हुई राइट हेड इन हांसमा के लिए और मजीद डाउट्स क्रिएट करेगी। जहां बहुत ही शानदार लाइन और लेंथ स्पिन भी मिला है, यही क्वालिटी है सादिया की। ऑन साइड पर कर 1 रन तो जरूर मिलेगा, एक ही पर इत्तेफाक करना पड़ेगा यहाँ पे हांसिमा को। राइट हैंड लेफ्ट हैंड का जो कॉम्बिनेशन है ये भी थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है बॉलर्स को, इसीलिए शायद चमारे आधापातू का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये रहेंगी रन आते रहेंगे और कंफ्यूजन ज़रूर रहेगी बॉलर्स के लिए। तो 2 रन हासिल किए इस पावर प्ले के बाद पहले ओवर में, श्रीलंका 32 पे। निदा डार ये बॉलिंग जारी रखेंगे। तीसरा ओवर, अभी तक सिर्फ 5 रन दिए, विकेट हासिल नहीं किए अभी तक, ये थोड़ा अनयूजुअल है। और ये शानदार तरीके से खेली हैं, बहुत ही कमाल का शॉट है। एक ठप्पा पड़ने के बाद बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। तो 24 गेंदों से ये लावा पकड़ा था हांसमा के दिल में, जो कि बिलाखिर उन्होंने अनलिश किया है निदा डार के खिलाफ, और जब किया तो बड़ा भरपूर किया। बखूबी मालूम था हांसमा को कि फील्ड कहाँ पर मौजूद है। गो के पावर प्ले का खेल मुकम्मल हो चुका था और एक मरतबा फिर उन्होंने हवा के साथ इस गेंद को खेला और बड़े क्लीनली इस 4 रन को हासिल किया पहली बाउंड्री के लिए। काफ़ी अटैकिंग यहाँ पे फील्ड सेट कर रखी है बिस्मा ने। यूजुअली हम देखते हैं कि ऑफ स्पिनर के लिए लॉन्ग ऑन पे होता है फील्डर, लेकिन यहाँ पे मिड ऑन पे रखा हुआ। दोनों फील्डर मिड ऑन मिड ऑफ दोनों ही सर्कल के अंदर हैं, तो आसान अगर आप यहाँ पे सीधा खेलते हैं तो रन्स तो डेफिनेटली अवेलेबल हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा चांस लेना होगा, ऊपर से खेलना होगा। शायद इसी चीज़ का जो वेट कर रही हैं बिस्मा के, ऊपर से खेले, चांस क्रिएट हो। फील्ड सब दायरे के अंदर मौजूद है, सिर्फ एक डीप मिड विकेट पे फील्डर मौजूद है। ओ एक और शानदार डिलीवरी, ये बेहतरीन बॉलिंग है। अच्छा कमबैक किया निदा डार ने बाउंड्री के बाद। हल्की सी इंक्वायरी की थी विकेट कीपर सिद्रा नवाज ने, लेकिन पिछला पैर फर्मली प्लांटेड नजर आ रहा था हांसमा का और उन्होंने ठीक किया, कोई गलती नहीं किया। हालांकि ऑल एंड्स बीट हुई, दूसरी तरफ अपने एक्सपीरियंस का बड़ा भरपूर इस्तेमाल किया है। इनवाइट किया बैट्समैन को ऑफ स्टंप के बाहर के वो स्ट्रोक के लिए जाएं और बड़े खूबसूरती से बीट करवाया। मिनी बैटल को जीता अब तक निदा डार ने चौके के बाद। एक बार फिर ओ ये ज़्यादा अगर बेहतर टाइम होता तो फील्डर के हाथ में भी जा सकता था, इसी वजह से शायद दोनों फील्डर्स को सर्कल के अंदर रखा है, इसी चांस के लिए ऊपर से खेलना चाहती थी। और अगर थोड़ा सा भी मिस हिट होगा तो ये फील्डर के पास चला जाएगा बॉल। अच्छी बॉलिंग, अच्छी कप्तानी। 12 ओवर से इख्तिताम पे 36 पर 1 श्रीलंका। पार्टनरशिप जो है वो 29 रन की हो गई है, और हमने देखा जब वनडे क्रिकेट में पार्टनरशिप की अहमियत बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जब आपके एक अटैकिंग ऑप्शन हमारी आधापातू मौजूद हों तो थोड़ा तसल्ली रहती है कि जब भी अब वो चाहेंगी वो बड़े हिट मार सकती हैं। या इसी के साथ ही बड़ा हिट मारने गई बहुत, लेकिन वहाँ पे प्रोटेक्शन मौजूद। एक ही रन, तो इंटेंट तो है कचमारी की। अब हम देख रहे हैं कि जब
अब वो बड़े हिट्स की तरफ जा रही हैं, लेकिन केयरफुल रहना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की बॉलिंग साइड बहुत शानदार है। जब जब कदमों का इस्तेमाल किया चमारी ने, यही नज़र आया कि वो शॉट को एग्जीक्यूट करने की सलाहियत रखती हैं। इनके कोच खुद हशान तलक कहते हैं बड़े स्टाइलिश बैट्समैन थे, और वो जो पूरी श्रीलंका की आउटफिट थी जिसने एक नया दवाम दिया श्रीलंका को, वो सारी अपने फुटवर्क और रनिंग के लिहाज से बिल्कुल एक डिफरेंट टीम नज़र आती थी। और शायद ये वो चीज़ें हैं जो कि समझा सकते हैं हशान, इनके कोच, एवर स्माइलिंग, और लगते हैं कि बिल्कुल भी बड़े नहीं हुए उसके बाद से, यानी कि बिल्कुल ही वैसे के वैसे नज़र आते हैं। और वही मखसूस मुस्कुराहट इनके चेहरे पे मौजूद है जो 90s में जब दौरा किया करते थे, 1996 की उस टीम का हिस्सा थे जब इन्होंने अगेंस्ट ऑल ऑड्स वर्ल्ड कप जीता लाहौर के गजाफी स्टेडियम में। तो वो जो टीम थी राना टुंगा की क़यादत में, जिसमें डिसिल्वा, हशान, ये सारे गुरु सेना, इन सब की रनिंग बिटवीन द विकेट्स, जो फुटवर्क, वो बड़ा मिसाली हुआ करता था। और ये कम से कम बड़ा गैप नज़र आ रहा है। कदमों का इस्तेमाल ज़रूर किया था, लेकिन जी हशान तलक रत्ने की हम बात कर रहे हैं तो 90s में शायद मेरे लिए एक वो चाइल्डहुड मेमोरी है, क्योंकि एक 95 रन की उन्होंने इनिंग खेली थी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। अनफिट हो गए थे एंड पे, और उस फिटनेस की वजह से अपनी विकेट भी गवा बैठे थे, लेकिन बहुत करीब ले आए थे उस वेस्ट इंडीज़ की बड़ी साइड के अगेंस्ट श्रीलंका को कि वो मैच जीत सकते। सिर्फ 4 रन से वेस्ट इंडीज़ वो मैच जीता था, और बहुत ही शानदार इनिंग रही थी ये। तो वो आज तक मेमोरी जो है मेरे जहन में ज़रूर है। 169 रन की इनिंग खेली थी ब्रायन लारा ने भी उस मैच में, शारजा में। बहुत ही शानदार मैच था वो। 13 ओवर्स का इख्तिताम हुआ, 37 पर 1 श्रीलंका। अली, आपकी और भी चाइल्डहुड मेमोरीज हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि शायद पुरानी बात नहीं लगती जब आपका बचपन था और लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो जो आपकी चाइल्डहुड वाला टाइम था, उस वक्त श्रीलंका की टीम ने जो स्पार्क हासिल किया, क्योंकि वो जो सेल्फ बिलीफ चाहिए होता है एक टीम को, आई थिंक वो 96 के वर्ल्ड कप में इन्होंने अपने ऊपर से वो एक हॉल हटा दिया था कि ये बड़े टूर्नामेंट्स या बड़ी टीम्स को हरा नहीं सकते। और उसके बाद से ये उस लीग में शामिल होने लग गया है जिसमें वो जो टॉप की 5 और 6 टीम्स आती हैं। और यही वो चीज़ है जो कि मेरे ख्याल से श्रीलंका की इस वक्त की टीम में लैग करती नज़र आती हैं। गुलाम फातिमा अब गेंद करने के लिए आ गई हैं, जो कि एक मरतबा फिर स्पिन बॉलिंग पाकिस्तान के हक़ में कितना वंडर्स ला पाएगी हम देखते हैं। निस्बतन नौजवान है और मौके हैं इनके लिए कि मज़ीद प्रेशर डाल सकें। बैकफुट पे आके अच्छे तरीके से पंच किया, लेकिन गैप नहीं तलाश कर पाई चमारी अथापातु। गुलाम फातिमा लेग स्पिनर इस टीम में मौजूद हैं, और हमने देखा एक अच्छा कंपटीशन अब यहाँ पे हो सकता है तुबा हसन के आने के बाद। जब 2 लेग स्पिनर्स आपकी साइड में हो तो बहुत लकी होता है वो कप्तान के, इतनी ऑप्शन हो आपके पास एज जितनी पाकिस्तान बिस्मा के पास है। एक बार फिर जोरदार हिट तरीके से हिट गया, रन एक ही बनेगा। और आलिया शायद नजरें अपनी हटा ली थी बॉल से, क्योंकि चमारी अथापातु जब हिट मारती है तो वो बहुत जोरदार हिट होती है। अब बात कर रहे थे 96 की श्रीलंकन साइड की, तो अक्सर ऐसा होता है जैसे बड़ी टीम्स जितनी भी होती हैं, एक बंच आपका प्लेयर्स का बहुत शानदार तैयार हो जाता है, लीडर भी आपका अच्छा होता है, तो वो बहुत कम टीमों के ऊपर इतना अच्छा वक्त आता है जो श्रीलंका पे तब आया था। ऑस्ट्रेलिया की भी मिसाल देखी, पूरा बंच ही बहुत शानदार रहा जो उन्होंने डोमिनेट किया 2000 ऑनवर्ड्स। एक और रन हासिल किया यहाँ पे ऑन की जानिब खेल के। 90s की पाकिस्तान की साइड, आई थिंक वो भी बहुत एक शानदार बंच था। कप्तान वसीम अकरम की कप्तानी में खेले, सलीम मलिक भी कप्तान रहे, तो वो मैच विनर्स का एक बंच पूरा इकट्ठा हो जाए तो आपकी टीम वर्ल्ड बीटर हो जाती है। एक बार फिर बहुत जोरदार हिट मारती हैं ये, बहुत जल्दी बॉल पहुंच जाता है लॉन्ग ऑफ की फील्डर के पास। डोमिनेंस की बात हम कर रहे थे तो ऑस्ट्रेलियन विमेन टीम पिछले 3 साल में सिर्फ एक मैच हारी है। एक और एग्जांपल डोमिनेंस की, वर्ल्ड कप जीते, अब आईसीसी के दोनों चैंपियनशिप के साइकिल जो है वो भी जीते ऑस्ट्रेलिया ने।
वो जब बंच एक आपका अच्छा इकट्ठा हो जाए तो इससे अच्छा बेहतर कुछ होता नहीं है। ऑन साइड पे खेलकर एक और रन हासिल किया यहाँ पे। ये पार्टनरशिप आहिस्ता आहिस्ता अब दर्द सर बनती जा रही है पाकिस्तान के लिए। 34 रन 62 बॉलों पे। तो देखते हैं इस दर्द का दरमा कौन करेगा। वैसे है ये जो ट्रांजिशन है ये भी बड़ा मायने रखते हैं, क्योंकि इस वाली टीम में नज़र ये आ रहा है कि चमारी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द वो जो पुरानी श्रीलंका की साइड थी उससे वो ट्रांजिशन हासिल नहीं हो सका। इसे शानदार तरीके से स्वीप जरूर किया, लेकिन फील्डर मौजूद हैं, एक ही रन बन पाएगा। और इसके साथ ही 14 ओवर्स का इख्तिताम हुआ। 42 पर 1 श्रीलंका। Steady proceedings for Sri Lanka. Partnership brewing, 35 of 63. But the good thing for them is Chamari is still out in the middle. Harshima playing a good role. And some role to be played alongside me, Shah Faisal. It's a long day. Off the back foot. Lifted it beautifully. Will roll away to a boundary. Chamari, she is delivering one of the best shots. It was short. She picked it up really quickly. And her power is very, very evident. Look at her. She went right back in her crease. That bottom hand gave her the elevation. Just one bounce and over the fence. It kept low, but she managed it very nicely. Careful at this occasion. Her balance has looked quite better in comparison to T20. I think she knows that she has a lot more time at her disposal. And she had a nervous start. I mean, that run out, she contributed towards that, and that must have jolted her. Down the track. And gone! This time, Sadia Iqbal will have the last laugh. Big wicket for Pakistan. Chamari Atapattu, who was looking dangerous, will now have to take the walk back to the hut. It's an exceptional catch from Muniba Ali. It was really traveling. She got it out of the screws. And it was over her head, but she judged it to perfection and caught it above her head. She had to keep her balance. Sadia Iqbal tempting her with a flighted delivery, but look at that catch. The power and force of the ball nearly took her away, but she kept her balance. Steady hands. Superb take from Muniba. Chamari Atapattu was threatening, but has gone now for 25. 46 for 2, and players will take drinks.
sip of relief for the players and as well as for Pakistan. Chamari Atapatu started to shift her gears. Sadia Iqbal on the receiving end, gone for 25. 2 down now on 46. Pakistan has been disciplined in terms of bowling. These are the wickets. The first one, run out yet again. Confusion for the girls in blue. Clean take from Sidra Nawaz. And then the bright wicket of Chamari. Down the track again, couldn't really find the meat of the bat. Good take, well judged by Munib Ali. Pakistan's bowling has been steady. Tiana Beg got 5 overs under her belt. Wicket for Sadia Iqbal, 1 for 7. Ghulam Fatma has already been into the attack. They have to rebuild yet again. Was a good partnership. Couldn't really capitalize. But again, Sri Lanka in all sort of trouble. Good bowling from Sadia. The last game she played was in Zimbabwe. Let's talk about Prasadini. Never got experience. 54th match for her. It's down the track. No runs. It's a brilliant over, conceding 1 boundary and a big wicket. Sri Lanka 46 for 2. For 2. This is the first series of the new ICC Women's Championship cycle, which is going to run from 2022 to 2025. And this is the first ever ICC Women's Championship series to be played in Pakistan. It's a big thing. And for the first time, I think there are 10 teams in this championship, with Bangladesh and Ireland being the 2 new teams. What a delivery. Ghulam Fatma tossing it up in the right area, turning it away. That's a sight every leg spinner and the captain would love to watch. Okay, that flight and that drift and dip turned right across the face of the bat. Brilliant bowling. Look at how high she had to throw it up. Got it above the eye line. It's never easy to control such a flight, but she has that power in her wrist. Can turn the ball big time. And watch out for her googly as well. Oh, Apesh and gone! Beautifully bowled by Ghulam Fatma and brilliant captaincy by Bisma Maroof. Another one down for Sri Lanka. It's a very, very self-dismissal. She's been there for 40 deliveries, 39 to be precise, but she really tamely pushed it away from her body and in the air straight to Bisma Maroof. She could not wish for an easier catch than that. Look at that. That ball sat up. She was back. Her weight was back and she never committed to the shot. Ghulam Fatma really delighted with her success. Sri Lanka slumps further, 46 for 3. Spinners are roaring against the Sri Lankan Lionesses. Ghulam Fatma, Sadia Iqbal, Nilakshi De Silva. Again, an experienced campaigner has a lot on her plate right now. They need to score runs and keep the wickets as well. 2 experienced batters in the middle. Sri Lanka in desperate need of a partnership. Nilakshi had 1 good innings in that T20I series, but you expect better now from them because they've been here for quite some time. Look at the field, slip and short cover catching. Ghulam Fatma into her work.
giving nothing away. Ghulam Fatma had a great outing in the World Cup. Grabbed 3 wickets just in the time of 2 overs against South Africa and 2 wickets against Australia. Good dominating performance. She's playing with the batters. Brilliant bowling. That flight and loop is really disconcerting for the batters. And that's the wicket. Just no footwork whatsoever. She just couldn't transfer the weight as well. Very, very tame in the end. This is Ghulam Fatma's temptation when she throws that ball up in the air. Oh, that's a quick run. You have to hurry. And oh, Alia. She nearly threw that into her feet. Had an ample time to aim to those stumps. The batter wasn't in the frame. 16 overs gone, Sri Lanka 47 for 3. Talking about the ICC Championship, like I was just mentioning, there are 10 teams for the first time, Bangladesh and Ireland being added to this format now. In the previous 2 cycles, that was 2017 to 2020 and 2014 to 2016, there were only 8 teams. ICC looking to increase the pool of the women's team, and recently 5 new teams have been given the status of ODI. Outside off stump, no run. We've got a tight ring on the offside around the batter. And that's brilliant initiative. ICC Women's Championship. The calendar has been released. 10 teams now. Bangladesh and Ireland getting that spot. 6 teams, including the host. And 5 top teams to qualify for the World Cup. And the thing that really makes me happy, let's talk about each team will play 8 3-match series, 4 at home and 4 away. And this Pakistan Sri Lanka is the first series of the cycle. Pakistan is currently hosting Sri Lanka. They'll host Ireland in November and then the big Aussies in January. That will be an away series against Australia. So there's plenty of cricket coming for these girls and from Sri Lanka as well. The T20 World Cup is coming up in February 2023 in South Africa as well. And for the first time, Women's Under-19 World Cup will be held in January as well. That too in South Africa. Aisha Naseem, one of the contenders for that pick. It's brilliant to see that globally the women cricket is right on track. Under 19 was really needed. Commonwealth Games are just around the corner. That's a maiden from Sadia Iqbal. Pakistan dominating. 17 overs gone, 47, 3 down, Sri Lanka. That's the schedule for Pakistan Women's. Hosting Sri Lanka currently now. They're going to tour Ireland. We've got Commonwealth Games, a lot of cricket. Ireland will tour Pakistan in October, November. And then Asia Cup in December. That's another big one to eye. Pakistan will tour Australia. And then that's the Women's T20 World Cup in South Africa. Busy schedule. Non-stop cricket for these girls. And it's a good start for them. They've already bagged the T20I series 3-0. And they're really dominating. And in that graphic, what we didn't see that when Pakistan tour Ireland, they're going to be playing a Tri-Nation series
and the third team involved will be Australia. That'll be a good preparation for that Commonwealth Games, because Australia is placed in Pakistan's group. Searching for runs. Yes, they've got South Africa and West Indies to host at home as well. And England, New Zealand, Bangladesh are the other away series for Pakistan. Plenty of exposure. He's trying to get to the pitch of the ball. No run. Previous was the first maiden over of the innings by Sadia. 9 dot balls in a row. Good captaincy, attacking captaincy by Bisma, giving nothing away. Slightly short. Just a single. Couldn't put it away. You make a good point about the captaincy of Bisma Maroof. She's really attacking. She's kept 2 catchers both in front of the batter in her eye line. As this one was short. It's the kind of opportunities the batters would like to put away, to put pressure back onto the bowlers. You can't just allow them to bowl. Down the track, quick single, again confusion, Alia. It's home safely for Sri Lankans. They are testing the fielders. Yeah, they've picked Alia a couple of times now. I think Alia didn't have enough time for an overarm throw. A quick underarm flick might have given her a better chance. That ball was slightly to her right side, so she had to do the overarm throw. Once again, that turn. Prodigious from Ghulam Fatma. They're rattling along with these overs now. 49 for 3. Pakistan women's squad was announced. Tri-Nation series against Ireland and Australia, and then the Birmingham Commonwealth Games. Now going with the same squad. They've got a T20 World Cup to eye. It's good to give more consistent chances to players and then pick the best out for the World Cup. See, Ghulam Fatma missing out on that squad. Like Ali was mentioning earlier, she's now got stiff competition with Tuba. Could one of those days we'll see both 2 leg spinners playing in the same 11? If they're good enough, why not? Definitely. I think Tuba brings a bit more to the table in terms of her fielding fitness and batting. But definitely one step ahead. Ghulam Fatma has been good in the ODIs. So it's a good thing to have a healthy competition around the circuit. Everyone knows they have to push harder. Talking about competition, it's good to see ICC giving ODI status to associate nations as well. Not beaten this time. They've got Netherlands, Papua New Guinea, Scotland, USA and Thailand. Teasing line and length there. Yeah, definitely a very good step to get more nations involved. Especially if you look at the prospect of cricket being inducted into the Olympics for the LA Games in 2028. That's just about in the right time to add that pool of countries playing the ODI and get the circuit bigger and better. Good fielding and confusion in the middle. Again, nearly there. Fatma Sana quickly moving inside the 30-yard ring, cutting the angles very nicely. The throw was off balance. In the end, run completed safely to bring about the 50 for Sri Lanka. It's been really hard work for them so far. Into the 19th over. 3 wickets down.
Down the track. Oh, that's a misfield. Rare occasion. That will probably hop over to the fence. No, it stopped. Munibali chasing it away. It's timed very, very nicely. Wasn't looking to hit it hard. Probably that's the key on this wicket. You have to just look to time the ball. There you go. Hardly hit it. And that ball bounced onto the square and defeated the fielder. She misjudged it slightly. And it almost trickled to the fence. That's the kind of batting Sri Lanka will have to do. You don't have to go big because this wicket is not easy. 53 for 3. And at the toss, Chamari Atapattu also said that she was looking for 200. And that's what I think, that once she got on her way to a start, she'll be kicking herself in the changing room that she gave it away too easily. With her being in the middle, the rest of the dressing room will be very confident. Now that one mistake, and then they've lost another wicket after that. Still, there's plenty of time as we watch Faisal Afridi signal a wide. They have time to recover. Yes, they just need to build a steady partnership. It's not going to be easy against Pakistani spinners, especially the sort of field placement they have. But again, it's all about resilience. They need to have a plan. They've got overs left. No run yet again. So what's the plan they'll be looking to adapt, the Sri Lankan batters? You saw that last delivery? She picked up the length quickly but didn't commit into the shot. Wasn't looking to hit the ball into any of those gaps. She just played it straight to the fielder. As we look at the ring of field, it's very hard to hit her from that length. This was just about perfect. But if the bowlers allow you to play off the back foot, you got to make those deliveries count. There's plenty of gaps around. If you can't pierce the gap, play it with soft hand and probably run well. That's better. Work to do for Diana Baig, but they'll pick up a couple. All they need to do is find those gaps. Anything short, they should capitalize on it. But again, whenever an opportunity is being provided, they have to go with a positive approach. See, once again, she didn't try to hit it too hard. You just placed the ball into the gap and a couple of runs. If you don't look for big boundaries or powerful boundaries, you just put the ball in the gap and see if you can run hard. Well, at those moments, they need to rely on their strengths. Obviously, coming down the wicket against Ghulam Fatma is a huge risk, but can be maneuvered off the back foot. Just like that. Keep trying to manipulate those gaps. 20 overs gone, Sri Lanka, 56 for 3. It was not a good opening stand. Hassini again falling early, gone on 4. Chamari Atapattu just when she looked dangerous. Sadia pulled back the reins for her, gone on 25. Hasima took a lot of time, gone for 12, but now again the rebuilding phase. Prasadani and Nilakshi, they do have the ability to score, but these bowlers are impeccable. 1 for 11 for Ghulam Fatma. She's been very impressive. So has been Sadia Iqbal. 1 for 11 in her 5 overs. They've really put the stranglehold on these Sri Lankan batters. It's a partnership of 10 of just 27 deliveries. They need to stay there for a lot longer. Nidada now down the track. That's more compact. No slip against the left-hander.
for Nida. For a right-hander, that was a good option against off-spin. Just get down to the pitch, just knock it down the ground. Now we see field changing for the left-hander. Just one shot cover catching and a ring of fielders on the offside. Plenty of temptation for the batters to go over the top. Two fielders mid-on, mid-off or up in the ring as well. They heard me. Got to slip in. That's a good ploy. Off the back foot, just waiting for the ball. Good fielding. Ghulam Fatma on that occasion. There have been a decent fielding side, Pakistan. Good ground covering. Catching has been brilliant. And so have been these shots from the official photographer. Arbaz is the man with the big lens. Just enough turn to create doubt in Prasadani's mind. And that's what Nida can bring. Once again, unsure with the footwork. It's the doubt that she created with that flight in length. Using the feet. Quick single. They are testing the fielders. The fielders need to read the bat speed. You can pick up if the batter is going to hit or just going for a soft single. There have been twice or thrice we've seen a chance of run out. That's good bowling. Beautiful drift from Nida Dar away from the right-hander, creating that angle. If she tempt her into a drive from that angle and one spins back through the gate, classical off-spin bowling. No, that's exactly what she's looking. That's the over. 2 from it. Sri Lanka 58 for 3 after 21. Plenty of breeze blowing, making it comfortable for the players and spectators. Colors of Karachi. Women garments and dupattas. Look at those fascinating colors to match the combinations. Marina would know better about it. Every girl's biggest concern. They want the colors to be there. Done in a proper way. It's not an easy task, it's an art. And I've seen many of my dupattas being done. Use of the feet. Have to be very careful. Muniba is placed just enough for that uppish drive. She wants her to play that drive to create that gap because she's turning it big. Looking for that gap. Oh, trying to guide it. Probably not one of the wise things to do. 3 dots straight away. And they're rattling along between the overs as well, the spinners. Doesn't allow the batters too much time to think. And when they look up at the scoreboard, these overs are running out. Driven but straight to Diana Baig. They have to do something different. See, that length is perfect, tempting the batters onto the front foot. But whenever the bowlers are short, whenever the bowling is short, that's where the Sri Lankan batters have not done well because they don't commit to the strokes onto that back foot. On the front foot, with the ball turning as much as it is, they can only go for it if they're right up there. Oh, walked away. Nearly managed to get a wood on it. Otherwise it would have been a clean bowled. That's dangerous. But at least they're trying to do something different. 22 overs gone, Sri Lanka 63.
Sri Lanka needs to pick their boundary options. They cannot just tag along with Pakistan's plan. They are dominating. Nudged around. Will be another single. Oh, they've pushed for second one. Ghulam Fatma a bit lazy in approaching that ball. More evidence of turn there for Nida Dar. But it was slightly shorter, allowed the batter to maneuver it. Interesting field. The shot mid-on catching. Almost handshaking distance with the non-striker. Quick run, shy at the stumps. So again, a desperate dive. Nilakshi survives it. It's some urgency in the last few deliveries. Got to it on the full and ran as she played the stroke. A direct hit. Have to see, did she? Yeah, she judged it all right, I think. Pretty quick. Cutting it straight to Ghulam Fatma. That's what I was making a point. They don't commit to strokes on that back foot. That is their run scoring opportunity, but just keep hitting it straight to the fielders, and that builds pressure on them. Change of personnel, same field. No run. Nida Dar had a great World Cup. Best bowler for Pakistan, grabbing 10 wickets. Had a good few ones with the bat as well. 250s. No run there for sure. Sri Lanka can't afford any more run-outs. There have been plenty on this tour. 5 in the third ODI, third T20I, and 1 already today. That's through. Slide of misfield. We'll pick up a couple. Five coming from it. Sri Lanka 23 overs gone, 65 for 3. सो 45 गेंदों पे 19 रन की पार्टनरशिप हुई है प्रसादनी और निकाशी डिसिल्वा के दरमियान, और जो ऊपर तले विकेट्स गिरी वो एक मरतबा फिर श्रीलंका को ये क्लस्टर में विकेट गिरने के बायस हर्ट करेंगी, और अब जो टारगेट उनके जहन में आधे ओवर्स तक पहुंचने के साथ मौजूद होगा उससे भी डिस्ट्रैक्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। इब्तिदा में खासा मोहतात अंदाज से उन्होंने वक्त गुजारा लीना, और वही वो तमाम स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि हमने T20I में भी उनको मिस करते देखी, और अगर इसी पार्टनरशिप में वो कुछ 20-30 रन बना लेती तो अभी ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट होता। जी हाँ, इसी अरसे में एक वाइड बॉल। देखिए, शुरू में हम यही कह रहे थे कि 300 बॉल्स हैं, आराम से खेल सकती हैं, देख के खेल सकती हैं, लेकिन नहीं हुआ ऐसा, विकटें गिर गई और अब रीबिल्डिंग का फेज़ आ गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है। यहाँ पर इन्होंने अच्छी शॉट, लेकिन रन नहीं मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने रीबिल्ड करना है इनिंग्स को, क्योंकि 3 विकटें गिर गई हैं, 23 ओवर गुजर गए हैं, और यहाँ पर एक 40-50 रन की पार्टनरशिप इनको अच्छा सर्व करेगी। अच्छी गेंद पड़ने के बाद इसने भी शार्पली टर्न हासिल किया। महमद सुहेल ओवर करने के लिए आई हैं, और ये बुरा वक्त किसी भी तौर पे नहीं है एक स्पिनर के लिए आने के लिए कि वो मजीद शुक्र को शुबात को लेकर आएगा बैटर्स के जहन में। शार्पली इस गेंद ने टर्न किया। फुल टॉस, उसका फायदा नहीं उठा सकी बैटर। 4 रन्स तो
बिल्कुल उस बॉल पे लिखे हुए थे। जब आपको वेस्ट हाई फुल टॉस मिले तो आप उसको कहीं भी खेल सकते हैं, लेकिन क्योंकि बैटर्स इतनी फॉर्म में नहीं है और टीम पे प्रेशर भी है तो डिस्पैच नहीं कर सके इस बॉल को जिस तरह करना चाहिए था। अपनी फील्ड के हिसाब से बॉलिंग की है जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर रहा, क्योंकि स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर अंदाज से नहीं हासिल हो सकी हैं। दूसरी तरफ श्रीलंका को बिल्कुल पैक करके रखा हुआ है, एक दीवार बना दी है लेफ्ट हैंडर के खिलाफ उमैमा ने। अक्रॉस द लाइन खेली, लकी रही कि बॉल पैड से नहीं टकराई, एक रन हासिल किया। अक्रॉस द लाइन बड़ा ही डेंजरस है इस विकेट पे अकील, क्योंकि यहाँ पर हमने पिछले मैचेस में भी देखा जिसने भी अक्रॉस द लाइन खेला, खासकर अटोपट्टू एक दफ़ा इसी तरह स्वीप करने गई थी और अक्रॉस द लाइन LBW करार दी गई थी। तो यहाँ पर सीधा खेलना चाहिए, सीधे बल्ले से खेलें। तीन रन उमैमा के पहले ओवर में, श्रीलंका 68 पे 3। दोपहर का वक्त अब करीब पहुंचता हुआ कराची में स्कूल्स के बच्चे बड़ी तादाद में आए थे। T20 चूँकि मुख्तसर वक्त में गेम पूरा होता है, लेकिन आज भी यहाँ पर कुछ आई बॉल्स मौजूद हैं जो कि इस मैच की प्रोसीडिंग्स को फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए हर लिहाज से एक बड़ा बिजी सीज़न है लीना, चूँकि आयरलैंड का कॉमनवेल्थ गेम्स के वहाँ पर जो टूर्नामेंट खेला गया जिसमें बारबेडोस, ऑस्ट्रेलिया जैसे ओपोनेंट्स मौजूद हैं। अच्छी शॉट, वेट किया और एक रन हासिल किया। अकील, इस तरह की शॉट्स की ज़रूरत है जब आप थोड़ा सा वेट करें, बॉल को आने दें और गैप्स में खेलें, क्योंकि विकेट स्लो है, इसमें मैन्युफैक्चर ही करने पड़ेंगे स्ट्रोक्स आपको। ऐसा नहीं है कि बॉल आपके बल्ले पे अच्छी आ रही है, आपको देखना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, समझदारी से खेलना पड़ेगा। और जैसे आप कह रहे थे बिजी स्केड्यूल है पाकिस्तान के लिए और अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले, इंपॉर्टेंट सीरीज से पहले। ऑन साइड पर फील्ड वाइड स्प्रेड है, 3 फील्डर मौजूद बाउंड्री पे और इसका फ़ायदा उठाना चाहती थी वो स्ट्राइक को रोटेट करके, बट नॉट टू बी। ये एक तरफ तो आपको गेम टाइम देता है इस तरह का एक टू है, दूसरी तरफ शायद कुछ आपको मज़ीद सहल पसंद भी कर देता है, क्योंकि श्रीलंका जैसे ओपोनेंट जिसमें आपको बहुत बड़ा टारगेट, क्योंकि मुसलसल ये चौथा इंटरनेशनल गेम है जिसमें पाकिस्तान टारगेट चेस करने के लिए उतरेगा, तो वो वाला कि आप कितने पानियों में मौजूद हैं, कितनी आपके पास सकत है एक बड़ा टारगेट सेट करने की, वो अब तक सेट हो नहीं सका। और शायद मज़ीद कम से कम एक मैच में मौका मिल पाए, रन्स मज़ीद हासिल होंगे। पहला रन तेज़ी के साथ और दूसरे के लिए भी वापस आने में कामयाब, ओपन एरिया में खेल के बिलाखिर उन्होंने कुछ रन समेटे। तो श्रीलंका तो इस हवाले से कमिटेड है कि वो कम से कम पहले ही कुछ टारगेट पुट ऑन करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए शायद ये एक मिनी चैलेंज हो सकता है कि वो कितनी तेज़ी के साथ उसको हासिल करने के लिए अपने टारगेट सेट करे, क्योंकि जब कंडीशंस डिफरेंट होंगी, ओपोनेंट्स आपको एक के बाद एक नए का सामना करना पड़ेगा, तो सूरत हाल शायद इतनी आसान ना हो। देखिए, ये भी है कि अगर आज 160-65 रन लगाए श्रीलंका ने, तो उनका जो ट्रियोका ऑफ स्पिनर्स है उस आसान नहीं होगा चेस करना। विकेट भी लो रह रही है, तो 170 रन के अराउंड अगर श्रीलंका स्कोर कर सके तो मुश्किल हो जाएगा। 25 ओवर के बाद 71 पर 3 आउट। आधे ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। श्रीलंका अब तक 3 खिलाड़ियों को गंवा चुका है और यहाँ से भी उसके पास मौका है कमबैक करने का। नौजवान उमैमा सुहेल बॉलिंग जारी रख रही हैं।
कदमों का इस्तेमाल और स्मैश करने में कामयाब रही हैं। बिलाखिर कुफर को उन्होंने तोड़ा, जो कि खुदा खुदा करके इनके ऊपर मुकम्मल तौर पर हायल हो चुका था। लेकिन क्या खूबसूरत कदमों का इस्तेमाल किया है, जब भी किया श्रीलंकन बैटर्स ने खूब दाद समेटी। फ्लाइटेड डिलीवरी, प्रस्तानी ने अच्छा कवर के ऊपर से 4 रन हासिल किए। अच्छी शॉट, और इस तरह का जो ये शॉट्स है इसको खेलने की इस वक्त ज़रूरत है, और एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा उनको। मजीद रन समेटने की कोशिश है, दूसरा हासिल करना चाहते थे लेकिन मौजूद नहीं था। लेफ्ट हैंडर के खिलाफ हमने देखा है कि उमैमा विवर्ड हो रही है अपनी लाइन के साथ, कुछ ज़्यादा फ्लाइट देने के चक्कर में ये लो फुल टॉस बन गई थी। इससे पहले भी जिस अंदाज की उन्होंने ये बॉलिंग की, काइंड ऑफ इनका स्लिंगिंग एक्शन है, ऑन द टॉप ऑफ द हेड से ये बॉल करने के लिए नहीं आती हैं, जो कि कंट्रोल करने के लिए जो ये टारगेट सेट करना चाहते हैं अपने लिए, शायद उसमें, और ख़ास तौर पर तेज चलती हुई हवा में प्रॉब्लम वो बस बन जाता है। और एक मरतबा फिर ये गेंद ड्रिफ्ट हो रही थी डाउन द लेग साइड, फ़ायदा मिला है, मज़ीद रन हासिल होंगे तो कुछ चीज़ें मोशन में आई हैं ज़रूर श्रीलंका के लिए पिछले 2 ओवर्स के दौरान। पैड पर ये गेंद थी, इसको अच्छा खेला लेग साइड पर 2 रन के लिए। ये एक्शन देखें इनका, ज़रा करीब से, कंधे कान के करीब से जब बॉल होती है तो ज़्यादा कंट्रोल होता है, इनका ज़रा वाइड आता है आर्म। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, एक मरतबा फिर ड्राइव लगा के दायरे के एज पे दूसरा रन का वरना मौका निकल सकता था, और उससे ज़्यादा मुनीबा की एफर्ट पिकअप करेगी पाकिस्तान को, जो कि दोपहर के औकात में इस पार्टनरशिप को तोड़ने की कोशिश करी है। बड़ी यूज़फुल खामोशी के साथ इसने दबे पाँव 33 रन बना लिए हैं, बड़े क्रिटिकल टाइम में यकजा हुई थी। जी बहुत इंपॉर्टेंट रन्स थे ये, और ज़रूरत भी थी श्रीलंका को इस वक्त एक पार्टनरशिप की, और अभी भी मज़ीद इस पार्टनरशिप को आगे ले जाने की ज़रूरत है। 30-40 रन अगर इस पार्टनरशिप में और बने तो काफ़ी मुस्तहकम हो जाएगी श्रीलंका की पोजीशन, और मज़ा भी आएगा मैच में। 170-80 का टारगेट मिलेगा, और जैसे आपने कहा पता लगेगा कि पाकिस्तानी बैटर्स कितने पानी में। एक और गेंद जो कि खराब लाइन के साथ की है, और इसको कामयाबी के साथ प्रसादी ने निकाला बाउंड्री लाइन की जानिब और इसको क्रॉस करवा दिया। शानदार ओवर रहा है श्रीलंका के लिए, 12 रन बनाए श्रीलंका 83 पे 3। और अब अपनी बेहतरीन बॉलर को इनिंग्स के ऑलमोस्ट एंड दरमियान में वापस लाने का फैसला किया बिस्मा मारूफ ने। नौजवान गेंद करने के लिए आएंगे फातिमा सना, आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का एजाज़ उन्होंने हासिल किया। शानदार बॉलिंग की है, बड़ी लाइवली इनका पेस, और साथ साथ ये अच्छे एरियाज़ को हिट करती नज़र आती हैं। कामयाबी उनको गो के आज की सुबह तक लेना कोई नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने बड़े नबेतुल अंदाज से अब तक बॉलिंग की, और कई मरतबा उन्होंने बैटर्स को ज़रूर बीट करवाया था। और अभी इंटरेस्टिंग गेम है चूँकि श्रीलंका अब स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश कर रहा है, और ख़ासे ओवर मौजूद है फातिमा सना के पास। जी अच्छी गेंद की है फातिमा ने, लेकिन फास्ट बॉलर्स को इस विकेट पे जो इतनी लो है, स्लो है, उस पर कामयाबी हासिल करना आसान नहीं है। लेकिन लाइन लेंथ बड़ी अच्छी रखी, कंट्रोल बड़ा अच्छा रखा, 3 ओवर्स में सिर्फ 7 रन। और यहाँ पर ये श्रीलंकन बैट्समैन का भी, बैटर्स का भी टेस्ट होगा कि वो उनको कैसे खेलती हैं, और एक जो प्रोग्रेशन उन्होंने थोड़ा सा बनाया है, प्रोग्रेस, उसको वो जारी रख सकेंगी या नहीं। लक्ष्य डी सिल्वा का बड़ा खामोश रोल है अब तक की इस पार्टनरशिप में। 2 चौके पिछले ओवर में लगाए प्रसादनी ने, और वो इनिंग्स का महंगा तरीन ओवर बना। लेकिन ओवरऑल लक्ष्य ने जिस अंदाज से अब तक चीज़ों को कंट्रोल किया है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स में से एक हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है श्रीलंका के पास। और ये वो खिलाड़ी होते हैं जो कि इस तरह के किसी ट्रांजिशन के फेज़ में गाइड करते हैं कप्तान को भी और दीगर खिलाड़ियों को भी, और एक बैकबोन का किरदार अदा करते हैं, और इस पार्टनरशिप में भी अब तक यही किया। अच्छी शॉट,
और 1 रन हासिल होगा। देखिए पार्टनरशिप में यही है कि एक जो बैटर है उसका डोमिनेंट रोल है क्योंकि विकेट्स गिर चुकी हैं, और एक जो है सिर्फ साथ दे रही हैं मीनाक्षी। तो ये इस वक्त ज़रूरी है कि वो विकेट पे स्टे करें, फ्रस्ट्रेट ना हो जाएं। अगर उनके स्ट्रोक्स ना नहीं लग रहे तो वो फिर भी खड़ी रहें, क्योंकि ओवर बहुत हैं, अभी आधी इनिंग्स तकरीबन 24 ओवर पड़े हैं। तो विकेट पे अगर स्टे करेंगी तो रन तो खुद ही आएंगे। फातिमा सना ने बड़ा धुआंधार अंदाज से अपना करियर शुरू किया था अलीना, जिन्होंने 15 ODIs में 21 विकेट्स हासिल कर डाली थी, लेकिन तब से स्लाइटली ऑफ ट्रैक नज़र आ रही हैं, जो कि पिछले 8 ODIs में खाली 7 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रही। अगेन उसमें शायद कुछ चेंज ऑफ कंडीशंस भी मौजूद हैं, जो कि इन्होंने ये ODIs खेले उसमें से ज़्यादातर बड़ी तादाद में न्यूजीलैंड में खेले गए, जहाँ पर नई कंडीशंस में मौजूद थी, और उसके साथ साथ जो उन्होंने वक्त गुजारा उससे पहले जिम्बाब्वे में था। तो ये बेहतर मौका है कि अपनी होम कंडीशंस में, कराची से इनका ताल्लुक है, वो एक मरतबा फिर वो स्पार्क हासिल कर सकें, जो कि इनके लिए अच्छे कॉन्फिडेंस का बायस बनेगा। अच्छी शॉट इस दफा कट किया और एक बाउंड्री की तरफ जा रही है। 4 रन हासिल हुए बैट्समैन को, और बहुत ही अच्छी शॉट। ये अब वो सेट हो गई हैं। अब जैसे ही उनको शॉर्ट बॉल मिलती है, मौका मिलता है, वो उसको कट करती हैं, 4 रन हासिल करती हैं। कवर के ऊपर से भी उन्होंने खेला, और ये जो है ये इस बात का नतीजा है कि ये विकेट पे रहेंगे। देखें शॉट बहुत ही अच्छा वेट किया उसको, और बैकवर्ड पॉइंट के थ्रू 4 रन हासिल किए। सादिया ने भरपूर दौड़ लगाई थी और एंड भी उन्होंने अच्छा किया, लेकिन ये शॉट उनके लिए तेज़ होती गई और इसके बावजूद वो रोक ना पाई। हालांकि डाइव लगाई थी, जबकि प्रसाद ने अब अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ स्कोर कर रही हैं। $88 for 3, 27 ओवर्स के इख्तिताम पर। एक मरतबा फिर कमेंट्री बॉक्स एंड से बॉलिंग में तब्दीली। सादिया जिन्होंने अभी अभी दौड़ लगाई थी चौका रोकने के लिए, 1 विकेट हासिल कर चुकी हैं, अपना 6वां ओवर फेंकने के लिए आएंगी। प्रीवियस ओवर में हम बात कर रहे थे फातिमा सना की, और उनको जो पिछले मैच अकील ने बताया कि न्यूजीलैंड में मिले और जिम्बाब्वे, तो ख़ासतर न्यूजीलैंड की कंडीशन तो एक पेसर के लिए साजगार होती हैं, लेकिन वो क्यों विकेट्स नहीं हासिल कर सकी, ये शायद लॉस ऑफ फॉर्म हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर बॉल बाउंस भी अच्छा है, न्यूजीलैंड में बॉल थोड़ा सा सीम भी करती है, तो एक पेसर के लिए अच्छी कंडीशंस हैं। एक मरतबा फिर अच्छा कदमों का इस्तेमाल करती नज़र आ रही हैं। जी हाँ, ये बात तो शायद बिल्कुल क्लियर है कि न्यूजीलैंड जैसे ममालिक में पेसर्स को अच्छी हेल्प मिलनी चाहिए, लेकिन शायद वो चेंज ऑफ ओपोनेंट्स जो है, जो इब्तिदा में उन्होंने अपने करियर के मैचेस खेले, उसमें बड़ी तादाद में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने लगातार खेले, और वहाँ पर भी, जबकि कराची में भी इनको खेलने का मौका मिला, लेकिन वहाँ पर जब वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट जिसमें राउंड रॉबिन लीग के तहत सारे मैचेस हो रहे हों, वहाँ पर आपको हर रोज़ एक नया ओपोनेंट, और उसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जो कि अपनी फॉर्म के टॉप पे हो, फिर आप टॉप ऑर्डर बैटर्स के खिलाफ आमतौर पर गेंद करती हैं। अच्छी गेंद, और दूसरा ये भी हो सकता है कि आप यंग होते हैं, आपको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड में का आप टाइटल एक मिल जाता है, आप पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ जाता है, और थोड़ा सा शायद टाइम लगता है इस प्रेशर को हैंडल करने में और अपनी बेयरिंग्स दोबारा हासिल करने में।
बड़ी तेज़ी के साथ ये पार्टनरशिप अप्रोच कर रही है 50 रन के मार्क को। ये 74 गेंदों से मौजूद हैं। इनकी अपनी फिटनेस का भी इम्तहान है, जबकि पाकिस्तान के फील्डर्स के लिए भी, जिनको एक मरतबा फिर लगातार चौथे मैच में अब ये 50 ओवर पोटेंशली इनको बॉलिंग करने पड़ रहे हैं सुबह की इस गर्मी में। और ख़ास तौर पर ये वो वक्त है दरमियान के ओवर्स का जिसमें अब कप्तान को एक्टिव रहना पड़ेगा। और अच्छा लग रहा है क्योंकि दरमियान में इससे पहले हमने देखा था कि शायद लैक ऑफ इंटेंट कुछ नज़र आती थी, लेकिन 28 ओवर्स मुकम्मल हुए हैं। एक अच्छा ओवर सादिया ने किया। श्रीलंका 90 पे 3। टॉप स्कोरर हैं ऑलरेडी प्रसादनी अब तक इस इनिंग्स की, और उनका साथ दे रही हैं तजर्बाकार नीलाक्षी डिसिल्वा और उससे पहले चमारी अतापतु, जिन्होंने अच्छी शॉट्स लगाई थी, लेकिन उनके और उनके साथ ही हांसिमा करुणारत्ने की विकेट्स ऊपर तले हासिल हुई। लेकिन उसके बाद से ये पार्टनरशिप अब 44 रन्स की, 7 विकेट्स मौजूद हैं श्रीलंका के पास, 22 ओवर बाकी, तो क्लियरली वो 200 को टारगेट करने की अहल हैं। बड़ा स्टाइलिश शॉट 1 रन के लिए प्रसादनी ने खेला, अच्छा रन भी हासिल किया। इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप आगे जाती भी। आल रियाज जो एक ज़माने में बड़ी अच्छी बॉलिंग करती थी, आजकल बॉलिंग करती नज़र नहीं आती, और ये एक डिलेमा ही है, हमें मिस्ट्री है, हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्यों हो रहा है आखिर ऐसा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है, इस वक्त ज़रूरत है कि 5 ओवर और ये दोनों खेलें, पार्टनरशिप आगे लेके जाएं। पाकिस्तान ने, जिसने दौरा करना है कॉमनवेल्थ के लिए, और वहाँ पर जिस तरह से ओपोनेंट्स बारबाडोस, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड का एक बड़ा बिजी सीज़न आगे आने का है, तो कम से कम एक मरतबा फिर वो जो टीम का कोर है उसको ना छेड़ने का फैसला किया है। हालांकि हमने 2 डेब्यूज़ हासिल होते हुए देखे T20s में, और अब देखना ये है कि ये खिलाड़ियाँ लॉन्ग रन में किस अंदाज से परफॉर्म कर सकेंगी। और इसके अलावा चूँकि हमने कई लोकल लेवल पे और डोमेस्टिक क्रिकेट में टूर्नामेंट्स मुनक़द होते हुए देखे हैं, तो वहाँ से जो टैलेंट की आमद है वो कितना सपोर्ट करती है, जो कि माने रखता है। और जो टॉप फ्लाइट क्रिकेट खेल रहे हैं ममालिक, ख़ास तौर पर वुमेन क्रिकेट में, उसमें बड़ी बात यह है कि आपको एक के बाद एक कम से कम बैकअप के तौर पे खिलाड़ी मौजूद नज़र आती हैं, जो कि रिप्लेस भी करती हैं और उसके साथ साथ टॉप परफॉर्म भी करती नज़र आ रही हैं। तूबा और आयशा दोनों का बड़ा अच्छा डेब्यू हुआ पाकिस्तान के लिए, और ख़ासतर तूबा की लेग स्पिन बॉलिंग देख के बड़ा मज़ा आया कि उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, एक्शन बड़ा अच्छा है उनका, स्पिन भी करती हैं, बाउंस भी मिलता है। और आयशा की बैटिंग तो सबने देखी, धुआंधार बैटिंग करती हैं। तो यकीनन अगर ये टीम अनाउंस ना हुई होती तो उन दोनों को ये वनडे में भी मौका मिलता, क्योंकि ये टीम अनाउंस हो गई थी तो शायद उनको मौका नहीं मिला। परफॉर्मेंस तो उनकी वर्दी थी कि शायद यहाँ भी मौका मिलना चाहिए था। एक मरतबा फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन वक्त में पलटने में कामयाब। यस, तो अच्छी बात यह है कि कम से कम वो जो T20 का स्क्वाड अनाउंस किया गया है वहाँ पे उनको बरकरार रखा गया है कंटिन्यू करने के लिए इस टूर्नामेंट में। जून का महीना और इसके इब्तदाई पहला ही दिन, जिस दिन ये सीरीज़ की शुरुआत हुई है, और साथ साथ वेस्ट इंडीज़ की टीम भी पाकिस्तान में आमद है। गो के वो शायद बहुत डिफरेंस होगा टेम्परेचर का जहाँ पे खेली जा रही है मुल्तान में, और आई एम श्योर कि कॉप अप करने को तैयार होंगे खिलाड़ी उस मौसम के लिए। स्ट्रेट बैट के साथ फुल टॉस को खेला है और वो एक मरतबा फिर सर्कल को अबूर करवाने में कामयाब ना हो पाई, लेकिन बेहतर ओवर एक मरतबा फिर श्रीलंका के लिए। 4 रन जिसमें निकाले श्रीलंका 94 पे थी। पाकिस्तान की टीम जिसने दौरा करना है बर्मिंघम में खेले जाने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में और ट्राई नेशन में,
वहाँ पर ये स्क्वाड अनाउंस किया गया। और पाकिस्तान की जो अच्छी बात यह है कि टीम की कोर और इसमें इसके साथ साथ तूबा जो कि आते ही टॉक ऑफ द टाउन बन गई हैं, वो इसमें शामिल रखी गई हैं। इसके साथ साथ ऑलरेडी उन्होंने एज ए रिज़र्व प्लेयर दौरा किया था वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम के साथ। और अभी भी गुलाम फातिमा जो कि एज़ पर द एक्सपेक्टेशन परफॉर्म नहीं कर पाई, अलॉन्ग विद सदफ शम्स और नौजवान उम्मे हानी के साथ मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा जो आपकी टीम की फॉर्मेशन है वो वही लगभग नज़र आती है, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि कंटिन्यूटी के लिए जहाँ पर अच्छे मौके भी मिलेंगे, चैलेंज भी होगा। अच्छा वेट किया बॉल के लिए, 1 रन हासिल होगा, शायद 2 भी हो जाएं, और 2 रन हासिल हुए। आप कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और टैलेंट बड़ा नज़र आया। और दोनों जो प्लेयर्स जिनकी हम बात करें, तूबा और आयशा, दोनों बड़ी टैलेंटेड हैं, और यकीनन 1-2 T20 सीरीज़ खेल के वो ग्रेजुएट कर जाएंगी वनडे में भी, क्योंकि बहुत फ़र्क नहीं होता, फॉर्मेट सिमिलर हैं। अब वनडे जो है वो ऐसा फॉर्मेट है जो कि टेस्ट और T20 के बीच में है, और आप वहाँ से दोनों साइड जा सकते हैं, और T20 से आप वनडे भी जा सकते हैं। तो यकीनन अगर उन्होंने कॉमनवेल्थ में अच्छी परफॉर्मेंस दी तो दोनों प्लेयर्स जो हैं वो वनडे में भी उनका जगह बन जाएगी यकीनन। यस एब्सोल्युटली। और दूसरी तरफ सादिया इकबाल की अच्छी बॉलिंग का सिलसिला जारी, जिसमें अब तक उन्होंने कोई विकेट नहीं दिया, ख़ास तौर पर नीलाक्षी को, जो कि बहुत मोहतात हैं अपनी बैटिंग के दौरान। महज 35 के स्ट्राइक रेट के साथ अब तक उन्होंने 16 रन बनाए हैं, और नज़र ही आ रहा है कि वो अपनी साथी प्रसादनी को ज़्यादा स्ट्राइक देना चाह रही हैं। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इनवाइट किया नीलाक्षी को स्ट्रोक खेलने के लिए, कमिट किया, और चेस करते करते एज दे बैठी हैं, और पाकिस्तान फाइनली 50 रन वाली इस शराकत को तोड़ने में कामयाब। नीलाक्षी आउट कट करना चाहती थी बॉल को, लेकिन बॉल कट करने के लिए मौजूद नहीं थी, आगे हुई भी गेंद थी, यहाँ पर एज हुई, और बड़ा ही अच्छा सॉफ्ट हैंड्स के साथ सितारा ने कैच हासिल किया। अच्छी पोजीशन में थी कैच हासिल करने के लिए, और बैटर बिल्कुल पोजीशन में नहीं थी इस शॉट को एक्सिक्यूट करने के लिए। 16 रन बनाकर नीलाक्षी की इस मुज़ाहमत का खात्मा, श्रीलंका 96 पे 4। तो अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले सादिया इकबाल ने, जिनको वापस लाई थी एक ओवर पहले गेंद करने के लिए, कमेंट्री बॉक्स एंड से उन्होंने विकेट हासिल की, और काविशा दिलहारी बैटिंग करने के लिए आई हैं, और नए सिरे से इस इनिंग्स को बिल्ड करना पड़ेगा। लेकिन श्रीलंका के लिए अच्छी खबर यह है कि इनके साथ शराकत बनाने के लिए अब तक प्रसादनी मौजूद हैं, जिन्होंने खासी तेज़ी के साथ 30 रन बनाए हैं, 3 चौके भी लगा रखे हैं। दिलहारी जो ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करती हैं। इनिंग्स का स्टार्ट 96 पर 4। गुलाम फातिमा गेंद करने के लिए आ गई हैं फार एंड से, दूसरी तरफ मौजूद हैं प्रसादनी।
और खूबसूरत गेंद और मुकम्मल तौर पर बीट कर दिया और एक मरतबा फिर 2 ओवर के अंदर 2 विकेट्स पाकिस्तान को हासिल। सेट बैट्समैन टॉप स्कोरर प्रसादनी को आउट करने में कामयाब। खूबसूरत फ्लाइट और नतीजा गुलाम फातिमा की ऑल इंपॉर्टेंट दूसरी विकेट। प्रसादनी जो बड़ा अच्छा खेल रही थी, आउट हुई। कोई रीजन नहीं था इस वक्त डाउन द विकेट आने का। बीट हुई फ्लाइट में और अच्छा स्टंप किया सिद्रा ने। बहुत मायूस नजर आई अपने इस डिसीजन से। ये वक्त था जब वो थोड़ा सा आगे लेके जाती इनिंग्स को। बहरहाल उन्होंने अपनी विकेट गंवाई एक फॉल्स स्ट्रोक के जरिए। 96 पर 5 खिलाड़ी आउट श्रीलंका। Things don't look good here for Sri Lanka. Definitely. Every time they've looked to build a partnership, Pakistan have pulled back things. Ghulam Fatima taking a couple of wickets. Sadia taking a couple also. A run out of Hasini Pereira. 96 for 5 it is for Sri Lanka. Things don't look good. Shah Faisal alongside me. Let's have a look at the wickets. This one was the first one. Oh, that was poor. That was ordinary. They shouldn't have run on that. The first one. And then Sadia bowled some nice delivery. This was a very solid, very hard hit, but went straight to the fielder. These two spinners have really dented the Sri Lankan chances. This was brilliant. Sadia especially. This was the best of a lot. Wonderful delivery by Sadia. And this one, sharp glove work. Quick hands by Sidra. Last 2 dismissals, wicketkeeper Sidra was really at her best. Wickets for the spinner. Sadia with 2 and Ghulam Fatima with 2 as well. The overall bowling has been very steady. Oh, has she bowled that? Yes, she has. What a wonderful delivery that is by Ghulam Fatima. Ushadi had no clue where that ball came and hit the stumps. Another wicket down. They're in a hurry. How could you leave that delivery? How could you leave that delivery? She's been turning the ball prodigiously around the wicket with that angle. Had absolutely no clue. Oshadi, look at that. That drift probably tempted her, but look at that turn. Magical delivery there. Poor judgment, all right, but that was a sensational ball. Why would you do that? Shari Rana Singh on the very first ball, bowled by Ghulam Fatima. It's 96 for 6. Ama Kanchana into her 31st game, 293 runs, the best of 34. She's up against the hat-trick delivery of Ghulam Fatima. This is such a huge opportunity for her to get this hat-trick.
6 down, 9-6. Pressure on Amakanchana. There are fielders all around. There are 2 slips, a gully, short cover also in place. That is a huge opportunity for Ghulam Fatma to get this hat-trick. She's bowled beautifully, 3 wickets to her name. Can she do it? Here it is. Oh, nicely bowled. Nicely bowled delivery by Ghulam Fatma. She's on a roll. Pakistan. None of the Pakistani bowlers have had a hat-trick so far in the ODI cricket. But look at that delivery. That drift was taking the ball away, but as soon as it landed, it turned prodigiously. She didn't believe it at first. But this was incredible, the amount of terms she got. More than the delivery, it was ordinary batting. Because we know that the ball is spinning. Why would you leave that? You could always come forward and play a defensive shot. But she decided to leave it. That's not a good idea when the ball is spinning. Not a good idea. Amakanchana, what can she do? Oh, they're in trouble. Definitely we can see that. 3 wickets in last 7 deliveries without a run for Sri Lanka. Tells you the story. Pakistan has been brilliant. Everyone has chipped in. Captaincy has been brilliant too. Nicely bowled to end the over. It's a double wicket made in for Ghulam Fatma. It's 9-6 for 6. This is what competition does. Excellent scenes for Pakistan bowling. 3 for Ghulam Fatma, 2 for Sadia Iqbal. They've been the main destroyers in this inning for Pakistan. Sri Lankan batters have no idea, no clue how to play this spin. The twin spin of Sadia and Ghulam. That has been the story of this series for Sri Lankan batters. They've had few patches of good cricket, but they've lost their way. Another time here in ODI series too. Oh, again beaten. This is quality. This is excellent bowling by Sadia Iqbal. I'm really enjoying the wicket-keeping of Sidra as well. Look at how she gets up with the ball. Soft hands, allows the ball to lodge into those gloves. Excellent work. Nicely cut. That will run away. That is much needed boundary for Sri Lanka to bring up their 100. They're happy, why not? Boundaries have been hard to come. We said this all morning, this is the ball to put away. When they get a chance to go onto that back foot, they got to make it count. And on that occasion, Kavisha really transferred her weight, went deep in her crease, and look at how hard she came down at it. The bat coming from high to low with speed. And that really raced away to the fence. More of the same. Oh, nicely done again. Played it late, played it in the gap. This is better by Kavisha. She will come back for 2. Beautiful hands. She waited long enough to just dab that ball into the gap. This is more purpose from Kavisha. She's made use of 2 balls that were slightly short and set up, which the batters before her couldn't do. But that pattern of the fall of wickets, I don't like that about Sri Lankan innings. 46, 46, 96, 96, 96. That's better. Forward defense on a pitch like this is always handy. We're talking about the fall of wickets. It seems like every time Chamari Athapathu loses her wicket, everybody just follows. It happened in the last T20 also. They had a good partnership. Then as soon as Chamari Athapathu lost her wicket, everybody followed. You can tell by Pakistan's dominance if you look around the field on the offside. There's a ring of fielders on the offside, and this man, these men would be very satisfied
Oh, nicely done. That is through the gap. That is excellent timing. We'll earn her a boundary. That is good batting by Kavisha. It's probably two of the best shots of the morning. She hardly seemed to have hit it, just caressed it, and that fast outfield has done the rest. We'll come back to it later. 106 for 6. Nice breeze going on, helping these young girls play in this hot weather. We've seen Karachi's been very hot from last couple of weeks. Credit must be given to these girls, performing to their best here. Ghulam Fatma will continue. 3 wickets for 13 runs to her name. She was on a hat-trick in the last over. The bowlers who were bowled slow on this pitch have been more successful. We've seen that in the ODIs. That's the boundary. The first one, she really rocked back onto that back foot, and that bat speed had done the rest. On that occasion, big stride into the ball, and just the pure timing. She's given a good masterclass of how to bat on this pitch. Use of the feet, go right back or right forward. Yeah, she's batting on number 7. Wonder why? Because she's looked the better of the most as long as that footwork is concerned, shot selection is concerned. She's looked the better. She's looked better than the most. She bowls off spin herself. She's bowled plenty of overs in this pitch, so probably she knows what's the right type of method to score runs on these pitches. So far, so good. Absolutely. Using her feet is probably the way on this pitch. Disappointment again. We've seen those scenes before. Not conceded a single boundary, Ghulam Fatma. She's been brilliant into her 7th over, given away 13 runs, only 3 wickets. 30 dot balls. How many times do we see that? She's been held by some excellent captaincy by Bisma Maroof. She's kept the slip there. She's attacked them. And now we see short extra cover also in place. This is top-class captaincy by Bisma. You have to say that. She's not given away anything. Oh, that's poor. But there is a fielder. Protection there. They should have been deposited. It was halfway delivery. That's the thing. When you get an opportunity, you have to be able to put it away. Otherwise, you don't transfer that pressure back on. And like Ali was saying, 30 dot balls she bowled today, and not a single boundary of her. There was an opportunity last ball, but she couldn't capitalize. Ama Kanchana. Wonderful delivery. That has been the highlight of this spell. Ghulam Fatma giving it air, bowling it slow. That's the end of 33rd over, 107 for 6 Sri Lanka. Another dart being brought back. Oh, familiar faces here. The new lad in town. A friend here. Well, new in here, I meant. Well, that's our vantage point. Marina, victory. Yes, girls are doing well. The first ever ICC Championship series to be played in Pakistan. And Pakistan has got off to a wonderful start. Nice use of the wrist. We'll earn her a 1 run. Absolutely, you just mentioned it. It is a good opportunity for Pakistan side to have some important points here. This is a good opportunity. The clean swept Sri Lanka in T20. This is a good opportunity
They can be off the mark in that ICC Champions Trophy. Champions League, rather. It'll be important for Sri Lanka's chances. Kavisha, the way she played her 9 deliveries, she must have raised the hopes of Sri Lankans to get up to that 150 first, and then see how far they can go from there. Once again, that cut shot. She really plays this shot off the back foot with a purpose. Plenty of bat speed, and it almost carried to the fence. Probably did as well. Just trickled over. But this is the type of batting you need on this surface. That is top batting. She probably realizes how to play on a pitch like this. Have a look at that. Waited long enough and then placed it beautifully. Quick hands. Earned her a boundary. Dar is not happy. No bowler is ever happy. Nicely flighted again at the Dar. Now we were talking about getting to 150, Shah Faisal. I think the first step should be play out the remaining overs. Don't get bowled out before 50 overs. That is the thing that they should be looking. Play out those remaining 17 overs. Runs will come. But if you get bowled out before those overs, nothing can be done. Again, nicely played. That is good batting. This is the difference you make when you put pressure back on the bowlers. All day long there was no sweeper on the offside, but because she had 2 boundaries, she pushed that fielder back, so that gap has opened up for her to just play it into the gap and safely rotate the strike. Excellent batting. Remember, in the women's game, the first 10 overs are the power play, and after that, in the remaining overs, 4 fielders can be outside the ring for the remainder of the innings. Over bowled, 113 for 6. It's building up. Crowd, people are coming in. Probably by the second half we'll see more people coming in. Crowd was brilliant in T20 series. We expect the same here. I think we'll see more after the school time. I think school holidays have started today locally. Check with Rehan, who is a local. Have they? Rehan Mirza? He doesn't have kids. Oh, that's beaten. Wonderful delivery. That is exceptional by Ghulam Fatma. She's given an air spin available also. Bowling in the right areas. Everything working for them. This one was slightly wider. No help from Rehan, but our local cab driver, he was saying in the morning that the school holidays have started. So we may see some crowd in the afternoon, but like Ali said, it was brilliant during the T20 series. Oh, that's top bowling. That is excellent. In recent times, I've not seen a leg spinner ball with such control. Line and length being perfect. That is what competition does. Tuba Hassan has bowled brilliantly in T20 side, so Ghulam Fatma will have to up her game. Nicely swept in the gap, right between 2 fielders. Nicely cut off at the boundary line. Fielding has been spot on by Pakistan all through the T20 series, continuing here in ODIs. It's a good little passage for Sri Lanka though, after losing 3 wickets at the score of 96. This partnership, 20 of 25 deliveries, and Kavisha has really struck the ball nicely, 17 of 14. The kind of boost that Sri Lankans needed. Oh, excellent. How many times have we seen this scene? Flight to delivery been beaten outside the off stump.
It's not bad batting, to be honest, because Kavisha is watching that ball all the way and she's not committing herself. So, although it's turning and she's got beaten, but her bat was nowhere near the ball. The predictor says 170. Sri Lanka would be a very happy team if they can get to that 170 mark. It looks like a daunting task from here on at the moment, but the way Kavisha is playing, you never know. Kavisha has to be patient. Nicely played towards onside. Fielder there. Just one more run. 35 overs gone. 117 for 6. This is a good partnership building up. Ama Kanchana and Kavisha, 21 at the moment. Sri Lanka would be hoping that they too continue at least till 10 more overs. Get to that 45 overs and then look to go big in the last 5 overs. Bisma Maroof, always busy. And now we see her balls. 44 wickets to her name. 4 for 7 her best. Another leg spinner. She's a part-time bowler though. It's a good sign that 3 leg spinners for Pakistan in their pool. Uh-oh. Exactly the reason she's not a regular bowler. The control. Just the first time that we are seeing that, at least I am seeing her ball. Bisma Maroof. The captain. Nice and gentle. Kanchana helping it towards onside. One more run. Is it a good idea, Shah Faisal? Should be looking to get wickets. It's a rather interesting action there from the skipper. She's bowling for the first time since 2019. Get that little sling to begin with and then bowls wrist spin from there. I'm not sure if she's spinning by wrist, she's spinning with fingers. Yep, you're right. That's what I can think of. But she's bowling leg spins with those fingers. That's better. Much better. Yeah, that little sling, and then she tries to bowl it in a leg cutter action, imparting the spin or revs on the ball with her fingers, not the wrist, like you correctly pointed out. Whatever works. Oh, up and over. That is good batting by Kavisha. This will earn her another boundary. This time over mid-off. She's moved to 23 now. That's a very impressive little knock there from Kavisha. This is her 4th boundary, down the wicket. Use of the feet, got close enough to the ball. Probably didn't quite get it off the middle, but enough bat on it to get herself another boundary. Have they eased up a little, these Pakistani girls? 27 runs, last 5 overs without a wicket. They were at a point when they were dominating, but they've just let this partnership grow. Probably a bit relaxed. We see Bisma Maroof bowling. Nothing taking away from Kavisha. She's batted beautifully. Probably the best after Chamari Adapadu that I have witnessed from Sri Lankan side. Footwork spot on. Placement has been excellent too. Again, got it nicely through the gap. Placement beautiful. At least 2. They should look to get 3. No, they'll settle for 2. Over ends with those couple of runs. 8 of the over, 125 for 6.
7 bowlers used, Bisma Maroof being the latest one. But the wickets only going to Ghulam Fatma and Sadia Iqbal. The two non-regular bowlers went for 21 runs off their 3 overs. I'm not sure if Bisma needed to resort to this because she got plenty of options. She's the captain. She's the captain. Remember that. Probably she didn't want to go back to the pace option. Interesting. Ghulam Fatma has been different from all the bowlers that we've witnessed. 3 wickets for 18 runs into her 9th over. That has been an exceptional spell by her. Wonderful. I think they're just looking to play out Ghulam Fatma. That's their best approach, and that's the right way probably, because runs are coming from the other end. We saw Bisma Maroof giving away 8 runs. So runs will come if you stay. If you don't stay, they don't come. Simple. She encouraged a lot of youngsters to use their feet and get down to the pitch against the spinners. Last 2 deliveries, you watch carefully, Ama Kanchana. She is using her feet, but she's not quite committing herself. That's why it looked like it's a half-hearted attempt to use her feet. Oh, look at that. That should be out. Should be taken. Is taken. Another wicket for Ghulam Fatma. 4th of her inning. Losing the patience. Ama Kanchana just played a bit of nothing shot. That is career best for Ghulam Fatma. 4th wicket for her. Wonderful spell. That confusion in her mind costing her wicket. Once again going down the wicket but not committing, and in the end just an ugly hoik. Top edge. Sidra Nawaz will catch those in her sleep. Easy as you like. Partnership once again has come to an end. Ama Kanchana gone for 3. 125 for 7. Sugadika Kumari into her 25th game, 103 runs, best of 18. Bit of nothing of an average of 7. All she has to do is just stay there with Kavisha. She's the one who's scoring bulk of the runs, 25 of 23 deliveries. That is why that shot from Ama Kanchana surprised me. Why would you play when you got a set batter on the other end, scoring all the runs? There was no need of that heroics. Losing her wicket. Career best for Ghulam Fatma. Can she get a 5-er? That's the question. Very interesting, Shah Faisal. We'll talk about it. Have a look at that again. Oh, there was no point, no need of playing that shot. Easy take by Sidra. That's better, but straight to the fielder. Captaincy has been brilliant. I must say that. Another maiden wicket. This is the second time. The last time she bowled it was a double wicket maiden, and this time it's a maiden wicket. Wonderful spell. Well supported by the captain. It's 125 for 7. बहुत वाजे
परफॉर्मेंस नहीं नज़र आई चमारिया तवट्टू ने 25 बनाए। उसके बाद एक लम्हे पे अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप हो रही थी, लेकिन स्पिनर्स ने वो भी तोड़ी। प्रसादनी ने 30 बनाई और अभी काफी अच्छा खेल रही हैं, 25 पे नॉट आउट है। स्पिनर्स का बोलबाला है, लेकिन अब डियाना बेग को गेंद दिया गया है। थोड़ा सा हवा का भी फायदा उन्हें मिला। अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, 5 ओवरों में सिर्फ 17 रन दिए। और मेरे साथ मौजूद हैं जोशीले अकील समर। जी 3 विकेटें बाकी रह गई हैं पाकिस्तान के पास, ये अपॉर्चुनिटी कि जल्द रैप अप करे इस इनिंग्स को। वाइट बॉल इस मरहले पे आके डियाना बेग ज़्यादातर यॉर्कर, स्लो वंस, कटर्स कराती हैं। मसला वही रहा है अकील समर, श्रीलंका का चमारिया टवट्टू पे बहुत ज़्यादा दबाव था परफॉर्म करने का। नीचे आते हैं, बिट्स एंड पीसेस में पार्टनरशिप हो रही है, लेकिन फिर स्कोर रुक जाता है एक लम्हे पे आके। क्विक सिंगल, एक बार फिर रन आउट का चांस और डायरेक्ट हिट है। अंपायर कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे इसमें, पहुंच गई हैं लगता है। इस तरह के रन चुराने पड़ेंगे इन्हें, वरना 170 का टारगेट भी अबूर नहीं हो पाएगा। एक मरतबा फिर खदशा पैदा हो चला था कि अगर थ्रो डायरेक्ट लगती तो केस क्लोज बनता, लगी और वो वापस आने में कामयाब रही। लेकिन पूरी कोशिश है पाकिस्तान की कि वो फील्ड में कोई स्क्रीज को ना ढीले होने दें। और आखिरी ओवर्स में वो वक्त है जो कि अभी भी चंद कीमती रन श्रीलंका को कुछ कॉन्फिडेंस दे सकते हैं डिफेंड करने के लिए। बैक टू बैक विकेट्स के ज़रिए से पाकिस्तान ने शिकंजा कसा अपनी तरफ से मुकम्मल है। अपील सिद्रा नवाज भी काफ़ी ऊंची अपील के साथ नजर आई, लेकिन फैसल अफरीदी जो स्टैंडिंग अंपायर हैं उन्होंने कहा नहीं। बिल्कुल पाकिस्तान चाहेगा कि अब ये 3 विकेटें जल्द से जल्द हासिल करे। मरीना, आप सिलेक्शन प्रोसेस का भी हिस्सा रही हैं। ये मुख्तलिफ टीम्स के ख़िलाफ़ आपको परफॉर्म करना पड़ता है, मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं, तो इस सिलेक्शन के प्रोसेस में ये सारी चीज़ें इक्वेशन में आती हैं या और खिलाड़ियों को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाता है कि वो क्या टारगेट्स उनके लिए आने वाले सीक्वेंस में, आने वाले सीरीज़ में सेट किए जा रहे हैं? बिल्कुल होता है, जहां आप ट्रैवल कर रहे हो, टूर कर रहे हो, वहाँ कैसी कंडीशंस हैं, वहाँ पे पेसेस आपको चाहिए, स्पिनर्स चाहिए, उस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है। बैटिंग कॉम्बिनेशंस, आपके बैटिंग लाइनअप में ऑलराउंडर्स कितने दरकार है और कौन किस फॉर्म में और कौन किस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलता है। क्योंकि अब जाके अगर आप देखें ग्लोबली क्रिकेट का मेयार, वुमेन्स क्रिकेट का मेयार बढ़ता जा रहा है, तो पॉजिटिव इंटेंट बहुत मैटर करती है। यॉर्कर की कोशिश, कोई रन नहीं बन पाएगा इस बार। तो वो जो पूल ऑफ प्लेयर्स की हम बात करते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट्स तो अब खासे हो रहे हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट पे भी, और कई टीम्स भी आपको T20 में भी और वनडे के फॉर्मेट में भी बनती हुई नज़र आती हैं। तो वो जो आपको जिस तरह से तूबा ने आकर अपने झंडे गाड़े हैं या मज़ीद आपको डेब्यू होते नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा आपको कमक नज़र आती है खिलाड़ियों की कि वो इन जगहों को हासिल कर सके, या फिर अभी खासा वक्त चाहिए या इस टैलेंट को निखरने में? 1 रन का और इजाफा होगा। देखिए पाथवे बहुत क्लियर है। तूबा हसन भी एक प्रॉपर पाथवे से आई हैं, उन्होंने रीजनल क्रिकेट में परफॉर्म किया, पाकिस्तान ए के साथ ट्रैवल किया, पाकिस्तान टीम के साथ उसके बाद परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में दे के ट्रैवल किया, वहाँ से ये प्रॉपर पाथवे बना है, तो वो अब आके परफॉर्म कर पाई हैं। ये पाथवे बहुत ज़रूरी है। पूल ऑफ क्रिकेट की हम ज़ाहिर है बात करते हैं प्लेयर्स की, ट्रायल्स रिसेंटली अभी लिए गए हैं, लेकिन अगला स्टेप बहुत ज़रूरी है कि आपको एक प्रॉपर सेटअप देना है, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म देना है जहां ये लोग परफॉर्म कर सकें, कंपेटिटिव क्रिकेट खेलें। ये वाइड होगी। कंपेटिटिव क्रिकेट और क्वालिटी क्रिकेट ओवर क्वांटिटी क्रिकेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखें फ्रेंचाइज क्रिकेट आजकल हो रही है बहुत ज़्यादा, जितनी भी टीम्स प्रोग्रेस कर रही हैं वो क्वालिटी क्रिकेट खेलती हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान ए, ये जो तकरीबन 30 प्लेयर्स का पूल है, इसमें और जो नीचे आपका टीयर है उसमें ऑलरेडी बहुत गैप है। तो नीचे वाले टीयर पे काम करना, उसको पहले इस लेवल पे लाना, और फिर आई थिंक जो डोमेस्टिक में टीम्स को बढ़ाने की हम बात करते हैं, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन क्वालिटी
उसको मेंटेन करना पाकिस्तान टीम और इंटरनेशनल रिजल्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डोमेस्टिक की जो मैचेस हैं, जो स्टैंडर्ड है, उसको मेंटेन करें। ओवर मुकम्मल, श्रीलंका 129 पे 7। गुलाम फातिमा अपना आखिरी ओवर फेंकने के लिए आ रही हैं, और अगर आप वुमेन क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो अभी अभी वर्ल्ड कप मुकम्मल हुआ जिसमें पाकिस्तान ने कई मौके पर अच्छी परफॉर्मेंसेस दी और बड़ी टीम्स को वो बीट करने के करीब भी पहुंचा। और पूरा स्ट्रेच करके इस शॉट को खेला है सुगंधिका ने सिर्फ 1 रन के लिए। तो गुलाम फातिमा जिन्होंने 4 विकेट्स हासिल की हैं, आप ये सबसे पहले सवाल जाता है कि वर्ल्ड कप में इनकी परफॉर्मेंस क्या रही। तो वहाँ पे से 2 मैचेस खेली थी, तो ये आपको बाकी जो प्लेयर्स हैं उनकी अहलियत की वजह से लग रहा है या फिर शायद कुछ वहाँ पर बेहतर सिलेक्शन हो सकती थी? देखिए, कॉम्बिनेशंस भी काफ़ी डिपेंड करता है कि क्या टीम का है। उस वक्त नशरा संधू प्लेइंग 11 का हिस्सा थी और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। गो के उन्होंने विकेटें नहीं ली, लेकिन इकोनॉमी उन्होंने बहुत अच्छी वहाँ मेंटेन की हुई थी। शानदार डिलीवरी, बहुत बार आज ये देखने को मिला। अच्छा कंट्रोल, अच्छी फ्लाइट और ड्रिफ्ट, और फिर टर्न इस विकेट पे भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं सरफेस का। तो आप सिलेक्टर आवाज़ नहीं थी, ये इस वजह से शायद इतना मुश्किल क्वेश्चन आपके लिए ना हो। लेकिन अब अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में देखती हैं मुड़ के, तो ख़ासतौर पर इस परफॉर्मेंस के बाद, तो आप समझती हैं कि गुलाम फातिमा शायद 2 के बजाय 5-6 मैचेस इनको खेलने चाहिए थे और बेहतर चॉइस साबित हो सकती थी, क्योंकि नशा संधू को भी आपने आई एम श्योर के परफॉर्म करते हुए ज़्यादा करीब से देखा है और उनकी परफॉर्मेंस को भी। देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट में स्किल ज़ाहिर है मैटर करता है, लेकिन उसके साथ जब हम बात करते हैं मैचेस जीतने की और ओवरऑल जो आपके डिफरेंट एरियाज हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिससे फ़र्क पड़ सकता है, वो भी मैटर करता है। गुलाम फातिमा नो डाउट स्किल में उनके 100 पॉइंट्स है, लेकिन फिटनेस, फील्डिंग और इवन बैटिंग, यहाँ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। जब आप देखते हैं बड़े मैचेस जा रहे हैं, किसी बड़ी टीम के खिलाफ एक चांस भी किसी अच्छे प्लेयर को दे दिया जाए तो वो पूरा मैच ले जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो ओवरऑल पाकिस्तान टीम भी इसको सेट कर रही है, मैनेजमेंट भी और कप्तान भी ये चाहती हैं। कट करना चाह रही थी लेकिन रीड नहीं कर पाई। इस बार ओ शानदार एफर्ट डियाना बेग की, कुछ इंच ही दूर रहा उनका हाथ, वरना एक शानदार कैच हो सकता था और 5वीं विकेट हो सकती थी गुलाम फातिमा की। 5-4 का अभी भी एक गेंद की सूरत में इम्कान बन सकता है, वो एक अलग ही फील देती है आपको, और ख़ासतौर पर जब आपने 2 गेंदों पर 2 विकेट्स हासिल की हों। गेंद खासी देर तक फिजा में रही अपने पीछे की जाने भागते हुए, लेकिन बड़ा मुश्किल था। अगर हम डियाना बेग के हवाले से बात करें, उन्होंने अपनी सी कोशिश भरपूर की, इस बार अपील की लेकिन नाकाम रही। शानदार स्पेल गुलाम फातिमा का, 4 विकेटें हासिल की, सिर्फ 21 रन दिए अपने 10 ओवर कोटा में। श्रीलंका 132 पे 7 आउट। बहुत खुश होंगी, मुतमईन होंगी बिस्मा मारूफ आज अपने स्पिनर्स से स्पेशली। और ये गुलाम फातिमा की परफॉर्मेंस आज की, ये पहले डिसमिसल बहुत सॉफ्ट डिसमिसल था, बल्ला काफ़ी दूर था बॉडी से, और ये शानदार स्टंपिंग सिद्रा नवाज की, एक बार फिर फ्लाइट की और ये बिल्कुल रीड नहीं कर पाई, लेफ्ट करने चली गई। और ये एक और कैच आज बहुत अच्छा रिसीव किया इन्होंने, फ्लाइट में कंट्रोल रखा, आसान नहीं होता इस फ्लाइट के साथ कंट्रोल रखना। और ये शानदार परफॉर्मेंस है आज, 4 विकेटें हासिल की, सिर्फ 21 रन दिए। जी हाँ, जो आज टर्न हासिल हुआ है वो तो ख्वाब जैसा था, ख़ासतौर पर किसी स्पिनर के लिए। इन कंडीशंस को उन्होंने भरपूर अंदाज से एक्सप्लॉइट किया और बड़ा वाज़ेह फ़र्क से बैटर्स को उन्होंने बीट भी किया, सरप्राइज़ भी किया, और एक ड्रीम स्पेल मुकम्मल करके गई हैं। अब देखना है कि फिनिश किस अंदाज से कर पाती हैं।
ये बिल्कुल सूरजैन सवा नेज़े पे मौजूद है, हालांकि तेज़ चलती हुई हवा, लेकिन तरबूज का सीज़न और जैसे महसूस होती हुई। हालांकि ये जो इस तरह के ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं वो श्रीलंका में ज़्यादा बेहतर तादाद में और अच्छे जायके वाले पाए जाते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि कराची के फ्रूट भी उनको बुरे नहीं लग रहे होंगे, या फिर श्रीलंका से लेकर आई हैं जितने शौक से खा रही हैं, क्योंकि अदरवाइज़ जो एवोकाडो वो आपको शायद मिले भी ना, या जो मिलता है वो बहुत ही हाई प्राइस पे होता है, वो श्रीलंका में सिर्फ आपको जस्ट लाइक पोटैटोस मिल रहे होते हैं। कुछ ऐसा ही हाल जिम्बाब्वे में भी है एवोकाडोस का जहाँ तक ताल्लुक है, लेकिन गर्मी काफ़ी है और दाद देनी पड़ेगी इन सारे प्लेयर्स को। प्रोफेशनलिज्म का यही तकाजा है कि आप मौसम कंडीशंस को सब पीछे रख के 100% डिलीवर करें। डियाना बेग, कोई रन बनाने का मौका नहीं मिलेगा। बिस्मा की कप्तानी को भी दाद देनी पड़ेगी, अच्छे चेंजेस किए इन्होंने, फील्ड अटैकिंग रखी, इनवाइट कर रहे हैं श्रीलंकन बैटर्स को कि ओवर द टॉप जाने की कोशिश करें और वहीं पे चांसेस भी क्रिएट हो रहे हैं। इस बार फिर कंफ्यूजन श्रीलंकन साइड पे, और ये आउट हो सकता है और ये आउट है। एक और रन आउट श्रीलंका, एक बार फिर कंफ्यूजन का शिकार हुआ और 8वीं विकेट गिर गई। सर्कल में आज पाकिस्तान की फील्डिंग एक मरतबा फिर मिसाली रही है, शानदार पिकअप, फौरन थ्रो और निशाना बिल्कुल विकेट्स के टॉप पे मौजूद था। बाकी का काम विकेट कीपर ने किया और इसके साथ साथ ये हमांगी भी नजर आई, जो कि रन किसी भी सूरत में मौजूद नहीं था। 2 कदम आगे आई और एब्सोल्युटली परफेक्ट थ्रो पहुंची एक बाउंस के साथ, और इसको स्टंप्स के आगे से आकर कलेक्ट किया और बिल्स को डिसलॉज कर दिया, और बड़े वाज़े तौर पर बाहर मौजूद थी और अंपायर आसिफ याकूब को किसी किस्म की तरद्दुद का सामना नहीं करना पड़ा। तो पार्टनरशिप सिर्फ रही 7 रन की 16 गेंदों तक। सुगंधी का कुमारी का आउट किया है, रन आउट करके बिस्मा मारूफ और सिद्रा की मुश्तरका कोशिश ने 132 पे 8। विकेट गिरने का सिलसिला जारी है, कोई खास पार्टनरशिप नहीं बना पाए श्रीलंकन बैटर्स, और एक बार फिर जो T20 में परफॉर्मेंस थी वो ही नज़र आ रही है। इनोका नवीरा 60वां मैच खेल रही हैं। अंदर आया गेंद, इस बार सिंगल हासिल करने में कामयाब होंगे। हालांकि बात की थी जब कोच से हम इंटरव्यू कर रहे थे तिलक रत्ने से, उन्होंने कहा कि इन ऑफ डेज में उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट्स पे काम किया है, क्योंकि ये कदरे उनका एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, हिटिंग नहीं है, लेकिन कुछ खास फर्क नज़र नहीं आया। या हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लिया हो, जो कि मज़ीद इनको एंजाइटी में मुब्तला कर रहा हो, जो कि किसी भी सूरत मौजूद नहीं था। और मेरे ख्याल से ये फील्ड में भी बड़ा शानदार काम किया पाकिस्तान ने, कोई मौका नहीं दिया। और ये कैच का चांस था लेकिन नहीं हो पाएगा। बाउंड्री हासिल की, रन आ रहे हैं और श्रीलंका लेना चाहेगा कि और बाउंड्रीज के तरीके से रन आते रहें। बड़ी करामात इनिंग्स खेल रही हैं काविशा दिलहारी, और साथ साथ आप स्ट्राइक रेट भी देखिए 100 से ऊपर का। 5वां चौका उन्होंने हासिल किया, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, और इसको उन्होंने स्मैश किया, रिस्क लिया, लेकिन जो कि लेना पड़ेगा इस वक्त में जब सिर्फ 2 विकेट्स पीछे बाकी रह गई हैं। हालांकि ओवर्स की तादाद के लिहाज से अभी भी इनिंग्स बाकी है, लेकिन जो कीमती रन मिलना चाहती हैं अपनी बॉलिंग से पहले, उसमें बड़ा यूजफुल किरदार अदा कर रही हैं। सीधा खेल दिया इस बार, लेकिन फील्डर मौजूद है आलिया रियाज। अकेले अगर इनकी रनिंग बिटवीन द विकेट जो रन आउट हुए हैं उनमें देखें तो बहुत बेसिक गलतियां हैं। बॉल वॉचिंग बहुत ज़्यादा है, कॉल क्लियर नहीं नज़र आती, एक दूसरे को देखते नहीं है। नॉर्मली ये होता है कि अगर आपने गैप पिक किया है तो आप कॉल आउट करते हैं और आप एक नज़र डालते हैं अपने पार्टनर पे। ये देखें, इन्होंने खेला, उसके बाद बॉल को देख रही हैं, हल्की सी नज़र दी थी लेकिन उसके बाद पार्टनर को नहीं देखा। तो बहुत ज़्यादा
इशू नहीं है। बेसिक चीज़ें अगर आप नहीं सही करेंगे तो फिर आपको ऐसे ही नताइज मिलेंगे। 138 पे 8 आउट 40 ओवरों के बाद। दस ओवरों का खेल बाकी है और श्रीलंका 200 रन्स करना चाहता था, जो चमारी अट्टापट्टू ने टॉस पे जिक्र ज़रूर किया था, लेकिन बहुत पीछे हैं उससे। सादिया इकबाल को वापस लाया गया है अटैक पे। इनकी भी अच्छी बॉलिंग रही है। कदे लंबा कद है इनका और बाउंस थोड़ा मिलता है, टर्न भी करती हैं स्पेशली इस विकेट पे। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि क्योंकि श्रीलंका के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं कि पाकिस्तान किस तरह चेस करता है, जो भी हदफ मिलेगा। गाइड कर दिया इसको थर्ड मैन की जानिब। काम करना पड़ेगा आलिया रियाज को और अच्छी फील्डिंग, बहुत उम्दा फील्डिंग। पाकिस्तान इस एरिया में ज़रूर इन्होंने प्रोग्रेस किया है। यस, सर्कल के अंदर के बाद अब बाहर भी खासी दौड़ लगाई। ये 41वां ओवर है पाकिस्तान की फील्ड इन इनिंग्स का, लेकिन ऑन द टॉप ऑफ हर मार्क रही हैं आलिया रियाज। ख़ासतौर पर ये बाउंड्री लाइन पर मार्च करती ज़्यादातर नज़र आई हैं। खासी दौड़ लगाकर उन्होंने इस बाउंड्री को सेव किया और भूला नहीं होगा कि अभी भी अगर 160-170 तक पहुंचता है श्रीलंका तो मैच बना सकता है। इस बार कोई खतरा मोल नहीं लिया। बिस्मा मारूफ मौजूद थी मिड विकेट पे। एक आधा बाउंड्री हासिल करें और स्ट्राइक रोटेट करें, ये बेसिक प्लान होना चाहिए श्रीलंका का। इस बार कामयाब हुए कनेक्शन हासिल करने में। सादिया की जानिब से बहुत ज़्यादा टर्न देखने को नहीं मिला। उसकी एक वजह ये भी कि गुलाम फातिमा लूप देती हैं, फ्लाइट देती हैं। सादिया कदरे एंगल के साथ थोड़ा सा तेज़ गेंद करती हैं। आज शॉर्ट बॉल को बहुत अच्छे तरीके से नहीं उससे फ़ायदा उठा सके श्रीलंकन बैटर्स। यस, अपॉर्चुनिटीज़ हासिल होती रही हैं, लेकिन अब तक वो पार्टनरशिप जो कि बनने के बाद आगे बढ़ने के प्रोसेस से पहले ही पाकिस्तान तोड़ने में कामयाब रहा। कंफर्मेशन मिली है पाकिस्तान 243 पे चेस कर चुका है श्रीलंका के खिलाफ, जिस मैच में आपने ओपन किया था। आपकी परफॉर्मेंस पर तो अभी मैं नहीं चाह रहा, लेकिन वो श्रीलंका की आउटफिट मेरे ख्याल से खासी डिफरेंट हुई है उसके बाद से। अगर आप हाईलाइट करना चाहें अपनी परफॉर्मेंस को। बिल्कुल, एक मैच में 70 किया था मैंने श्रीलंका के अगेंस्ट, वो मैच हम जीते थे। लेकिन जिस मैच का भी जिक्र हो रहा है उसमें जवेरिया ने 100 रन्स बनाए थे और वो मैच हम जीते थे। उस टाइम श्रीलंका की कदरे बेहतर टीम थी। शशिकाला मौजूद थी, लुकसूरिया मौजूद थी। अब काफ़ी यंगस्टर्स हैं, क्रिकेट बहुत कम खेली है इन्होंने। 41 ओवरों के बाद श्रीलंका 142 8 आउट। फातिमा सना अब बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। क्राउड आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। ज़ाहिर है लंबा दिन है, ओडीआई का फॉर्मेट लंबा होता है। T20 में बहुत अच्छा क्राउड हमें नजर आया। फुल टॉस से इब्तिदा की, एक ही रन बन पाएगा। मरीना, पाथवे की बात कर रही थी। हमें कई जगहों पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट स्कूल्स में और घरों में नज़र आते हैं अभी भी आने वाले बच्चों में और बच्चियों में। तो पाथवे आप किस तरह से डिसाइड करेंगे कि जो समझते हैं जिनके पास टैलेंट है वो किस अंदाज से अप्रोच करें? कि अभी हतमी पाथवे तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल अगर देखें आप तो कोई अल्टीमेट पाथवे अभी है नहीं।
लेकिन बेस्ट ये होगा कि स्कूल क्रिकेट आपको करानी पड़ेगी, उसके बाद यूनिवर्सिटी क्रिकेट है, डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप बाय स्टेप जब आप रीजनल क्रिकेट की भी बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जब प्लेयर्स आते हैं, प्रेशर अब्जॉर्ब करना आता है, उसके बाद उनके स्किल भी इस दौरान फ्लरिश होते हैं। जो हम अक्सर बात करते हैं कि इस लेवल पे आके कुछ बेसिक टेक्निकल फॉल्ट्स हैं बॉलर्स में या फिर बैटर्स में, ये फॉल्ट्स अब इस लेवल पे आके नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ तक आने के बाद बहुत देर हो चुकी होती है। ये फॉल्ट्स आपके अंडर 16, स्पेशली अगर स्कूल क्रिकेट में बात करूँ, वहाँ से काम होना शुरू होता है, जैसे लड़कों का एक प्रॉपर पाथ हुए, ये बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे उस ग्रुप पे काम होना अंडर 18 पे भी किया जा सकता है। अंडर 18 स्टार्ट हुई थी चैम्पियनशिप, उसके बाद ऑब्वियसली कोविड की वजह से नहीं कंटिन्यू हो सका। ये काम वहाँ पे होने वाला है, और ना सिर्फ स्किल, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, आपकी फिटनेस है, आपकी फील्डिंग है, क्योंकि बाय द टाइम पाकिस्तान ए या पाकिस्तान कोई प्लेयर टच करता है, वो टाइम होता है डिलीवर करने का, और ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट के प्रेशर को अब्जॉर्ब करने का। वहाँ आप टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा किसी प्लेयर में भी नहीं चेंज कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है उस प्लेयर के लिए। कुछ स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ क्योंकि सारी दुनिया की आप आई एम श्योर के वुमेन क्रिकेट को भी पर्टिकुलरली फॉलो करती हैं, कुछ फैसिलिटीज़ वहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती हैं, कुछ हमारे ख़त्े में ममालिक ने खासी तरक्की की है टैलेंट के हवाले से और उसको निखारने के लिए। तो यही वहाँ पर भी जिस अंदाज से टैलेंट आगे आता है, स्कूल क्रिकेट का आपको फ़र्क लग रहा है या फिर रीजनल क्रिकेट या जिस अंदाज से जो दीगर एसोसिएशन हैं उनका भी किरदार उसमें इन्वॉल्व रहता है? डेफिनेटली स्कूल क्रिकेट का फ़र्क है, क्योंकि वो एज है जब वहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा प्लेयर आगे जाके किस रोल में आप उसको ला सकते हैं, और वहीं पे टेक्निकल चीज़ें करते हैं। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड जब आजकल का सेटअप है, एसोसिएशंस, ऑब्वियसली क्लब्स, इन लोगों का रोल आ जाता है, क्योंकि पीसीबी ने इनको जिम्मेदारी दी हुई है। आपके पास एक क्लब होना चाहिए। अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूँ, अभी तक कोई एक डेजिग्नेटेड ग्राउंड नहीं है विमेन क्रिकेट के लिए, और एकेडमीज़ ऑन एंड ऑफ हमें मिल जाती हैं, कोचेज़ हमें मिल जाते हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि आपको अब एज अ प्रोफेशन ये सेटल हो चुका है कि ये विमेन क्रिकेटर्स ने एज अ प्रोफेशन इसको लेना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप किसी से भी कंपेयर करते हैं, कोई भी टीम हो, चाहे वो इंग्लैंड से आप करें, ऑस्ट्रेलिया से करें, इवन इंडिया से, अगर आप देखें तो उनका ग्रास रूट इंफ्रास्ट्रक्चर सॉर्टेड है। पेस को चेंज किया है ये देखते हुए कि यॉर्कर काम नहीं कर सका, उन्होंने बहुत स्लो, बहुत बाहर गेंद फेंकी और एक और रन को निकालने में कामयाब रही हैं श्रीलंकन बैटर। अदरवाइज पाकिस्तान एक मरतबा फिर उस पोजीशन के करीब के वो जल्द समेट ले, हालांकि अभी भी इस पोजीशन में है कि पूरे 50 ओवर्स ना खेलने दे, लेकिन श्रीलंका लग रहा है कि 160-170 का कुछ डिसेंसी रखने वाला टोटल बना पाएगा। फातिमा सना को एक मरतबा फिर आज कोई विकेट नहीं मिली है, जो कि हम सम अप कर रहे थे कि उनके करियर की इब्तिदा इंतहाई धमाका खेज थी, लेकिन उसके बाद से वो शायद जो तवक्कुआत बन गई थी उसके मुताबिक परफॉर्म ना कर पाई। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, जिसकी वजह से बेल्स डिसलॉज हो रही हैं, अंपायर का काम बढ़ता जा रहा है। फातिमा सना ने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, गो के उस तरह विकेटें हासिल नहीं की, मैं मानती हूँ ये चीज़, लेकिन जिस तरह उनका एक तरह से इवॉल्व हुई हैं, वो इंटरनेशनल प्रेशर हैंडल कर रही हैं, बड़ी टीम्स के ख़िलाफ़ जो कंपोजर होता है एक प्लेयर का, वो रखती हैं, मेंटेन करती हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप देखें, इंग्लैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये वो अच्छी चीज़ें हैं कि अपने स्किल्स को बैक करती हैं और इनको प्रेशर अब्जॉर्ब करना आ गया, और बैटिंग में इन्होंने बहुत काम किया है, एक प्रॉपर ऑलराउंडर के रूप में उभर रही हैं। स्लोर वन सिद्रा नवाज से मिस हुआ, लेकिन रन का कोई मौका नहीं है। यस, अभी हालिया ये दिनों में जो फेयर ब्रेक टूर्नामेंट खेला गया उसमें ये बैटिंग पे भी जो तवज्जो दी है वो काम करती नजर आई, जिसमें ये बैटिंग ऑर्डर में टॉप पे भी आके बैटिंग करती रही। एक मरतबा फिर स्लो वन, और विकेट कीपर लगता है कि इसको हासिल करते करते अपने आप को हट कर बैठी हैं। अच्छी विकेट कीपिंग की है जनरली आज तक। एक मरतबा फिर फुल टॉस हासिल हो गई और इसको भी सिर्फ एक रन के लिए निकालने में कामयाब। तो 42 ओवर्स मुकम्मल, श्रीलंका 145 पे 8।
145 की कहानी में ये कुछ हिस्से हैं। चमारी अटापट्टू के नाम 25 उन्होंने बनाए। प्रसांदनी 30 अच्छी बैटिंग कर रही थी। काविशा अभी भी मौजूद हैं 36 रन के साथ। एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप बनाना यहाँ पे लैग कर रहा है। पार्टनर्स लूज किए जा रहे हैं। जो भी बैटर सेटल होता है को खास दूसरे एंड से उन्हें मदद नहीं मिल पाती। दाद देनी पड़ेगी बॉलर्स को, पाकिस्तानी स्पिनर्स को भी। अपील लेकिन आउटसाइड ऑफ स्टंप लग रहा है। एम्पायर भी कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है। आसिफ याकूब मरतबा फिर लूप दिया गेंद को और उसी एंगल के साथ स्टंप्स को छोड़ती हुई जाती। काफी क्लोज लगा लेकिन नहीं। आसिफ याकूब कह रहे हैं कि टर्न ज्यादा हो रहा है, शायद कम टर्न करो तो मैं आपकी हामी कुछ जवाब दे सकूं कोई। पाकिस्तान T20 वक्त सीरीज में भी रैप अप करने में नहीं कामयाब हो सका था। हालांकि आमतौर पे 20 ओवर्स के क्रिकेट में खाली नज़र आता है, लेकिन यहाँ पर अभी भी इस बात का अहल है कि वेल विद इन 50 ओवर्स वो श्रीलंका को ऑल आउट करे, रेगुलरली विकेट्स हासिल करता रहे। क्लस्टर्स में भी श्रीलंका को बैकफुट पे धकेला, लेकिन टेल एक मरतबा फिर बैक करती नज़र आ रही है श्रीलंका की। कट करना चाह रही थी। ये एक और एरिया है जिसपे पाकिस्तान को थोड़ा सोचना पड़ेगा, चाहे वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो। फिनिशिंग अक्सर जो इनके कोच हैं डेविड हेम्ब, उनसे बात होती है, यही कहते हैं कि प्लेयर्स फिनिशिंग करना सीखना एक आर्ट है। वो एक्सपीरियंस से भी आता है, लेकिन इस बार अच्छा गाइड कर दिया। एक ही रन दूसरे रन के लिए वापस आएंगे सिद्दर अमीन फील्डिंग करते हुए। इनका भी ओडीआई में वापसी हुई है। पहला मैच खेलेंगे आज यहाँ इस सीरीज का। यस, टॉकिंग अबाउट फिनिशिंग, हमने देखा इंडिया के खिलाफ गेम में जो पाकिस्तान ने तो बड़े लीप्स एंड बाउंड विकेट्स हासिल कर ली थी, लेकिन उसके बाद कुछ कंप्लेसेंट हुआ या कमबैक बड़ा शानदार किया था इंडिया ने। इस पे बात करते हैं। इस दौरान ओवर की आखिरी गेंद, जिसको एक मरतबा पे फ्लिक करके निकालना चाहती थी फॉर अ सिंगल, नॉट टू बी। 43 ओवर्स के बाद 147 पे 8। जी हाँ, बरीना बे ओवल वाले मैच के हवाले से बात कर रहे थे, जहाँ पर 114 पे इंडिया के 6 आउट कर लिए थे, लेकिन अल्टीमेटली वो 244 तक पहुंचने में कामयाब हुए। तो आप किस तरह से समअप करेंगी उस एफर्ट को पाकिस्तान की? सीधा उठा दिया कदमों का इस्तेमाल करके इस बार, और ये छक्का, क्लीन हिट इस वक्त, और इसके साथ ही अपनी 50 मुकम्मल की इन्होंने। शानदार बैटिंग की आज काविशा ने। शानदार एवेट काविशा की, 2 कदम आगे आकर हाई बैकलिफ्ट के साथ विद द विंड, और हालांकि फील्डर मौजूद थी, लेकिन आलिया के सर के ऊपर से उन्होंने इस रिस्क को लेकर भरपूर रिवॉर्ड हासिल किया। दिलकश शॉट और अपने सब्र का भरपूर उन्होंने फायदा उठाया। 50 मुकम्मल नहीं हुई, सेलिब्रेट उन्होंने ऐसे ही किया था बल्ला उठा के। शायद ये दिलासा दिया कि मैं मौजूद हूँ अभी। श्रीलंका के एक माइलस्टोन जरूर मुकम्मल हुआ था, 100 से 150 तक के 50 उन्होंने मुकम्मल किए थे। इंडिया और पाकिस्तान के मैच की आप बात कर रहे थे, बिल्कुल देखिए जो बड़ी टीम्स हैं या कोई भी अब इंटरनेशनल मैच, अच्छा गाइड किया लेकिन एक ही रन बनेगा। जब आप इंटरनेशनल मैचेस की बात करते हैं, प्लेयर्स ऐसे होते हैं डेप्थ में भी जो आके पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं। उस टाइम पे कंडीशन रीड करना, उस टाइम पे आपके पास क्या स्किल्स हैं जो आप डिफरेंट कर सकते हो, क्योंकि अक्सर हम
अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करूं, अक्सर देखा है कि वो वेट करने चले जाते हैं कि दूसरा गलती करे तो विकेट मिले। हालांकि अगर आप बड़ी टीम्स की अप्रोच देखें तो वो एक फ्रेज है ना, दे गो फॉर द किल। वो स्किल्स, वो थिंकिंग और वो प्लानिंग अक्सर पाकिस्तान लैक कर जाता है। यस, एक मरतबा फिर पाकिस्तान शायद आखिरी ओवर्स में रन्स लीक कर रहा है और मजीद रन्स हासिल होंगे इस मरतबा इनोका को। सिंगल के साथ एक बेहतर ओवर श्रीलंका के लिए मुकम्मल, 8 रन बनाए, 6 ओवर्स का खेल बाकी, 155 पे 8। Numbers have increased. People are coming in the ground. We can see that crowd is gradually building up. Yep, one nation, one passion. That is so true. 155 for red. Diana Beg will continue into her 8th over, giving away 27 runs. And a very smiling Leena Moinaz is with me. She's happy because Sri Lanka has made a match out of it. Absolutely, I am. And the reason is I want our girls to be challenged. The T20 they weren't challenged. Meanwhile, white ball score of around 100, 108 in the T20s. If they get around 170, I feel there will be a challenge. They won the last game on the very last delivery, the third T20. They were challenged at 107. You were asking for 170, Leena. Another wide. I want a bigger challenge. That was a T20, so fine. I mean, I was asking for 130, as everyone knows. Sri Lanka couldn't get that. We weren't challenged. Now I'm asking 170. Let's see. I just want them to win this series and start the championship on a high. I don't want them to get challenged. Just win the series. 170 can be a very dicey target. Nicely timed, straight to the fielder. How wonderful Kavishka has played. 43 runs at a time when team needed it the most. She has delivered. That is exceptional. Privately, you wanted a challenge, Ali. I know you did. So now you're saying something else, huh? Not at the cost of the match, no. Because we know that 170 can be a good target on this pitch. Oh, slower one in the air. Oh, there's no one there. Ali Arias from fine leg doing the fielding there. This is a good partnership again. 26 runs at the moment. We've spoken about Kavisha. She scored some runs in T20, and this inning will give her a lot of confidence. But in my opinion, she should be promoted. She should be. She's batted well. She showed, sensible head on her shoulders. Built a partnership. Chips were down. She was under the cosh, and she played really well at that time. So definitely deserves a promotion. Yeah. Yeah, we see this change in field. Fielder at third, inside the circle. Oh, that's ordinary. Third wide of the over. That is not what you expect from somebody like Diana Beg. She's the leader of this bowling attack, the most experienced one. And in these dead overs, when team needs it to break this partnership, which is 27 now, you expect her to bowl better. Wonderful. That is a good comeback. Yeah, that was an excellent Yorker. Well bowled. But overall, she has looked off color. Diana Beg needs to get her form back. And she is a much better bowler. Look at this Yorker. Nicely bowled. Deserved a wicket.
The line has been the problem for her. 7 wides already for Diana in this game. 12 in total for Pakistan. Just a floater. One more run added to the total. Yeah, she was given break for the first 2 T20Is. Just making a little bit comeback after the Fay break. T20 League, she did well there. This is a new challenge, ODI. It's not easy. It's very, very hot here in Karachi. Very hot and humid. Especially for the fast bowler, it's not easy. And it's a different challenge when you're playing for your country. Different pressure. Playing a league is pressure, but not this kind of pressure. Again, another wide. It's not working for... The angle is not working, definitely. Probably trying too hard for those Yorkers. The death overs. Diana needs to get her act together. But she's pretty seasoned. She's played a lot of cricket. She will make a comeback. Just needs to get some games under her belt. Better. Oh, better fielding was required. Had she collected it, there might have been another run out. That's what we've seen so many times from this Sri Lankan side. 5 in the last game, last T20 game. Another 2 or 1 here. 2 today. What is happening? And very unnecessary, the run outs. The first one was very unnecessary. Bad calling by the skipper at that juncture. Nicely timed, straight to the fielder, end of the over. After 45, it's 163 for 8 Sri Lanka. Much relaxed, much comfortable now. At one point, we all were thinking that they might not get to 130, 140. But now they look relaxed. They've got to a total where their bowlers have a chance to fight. And they've got a very good bowling lineup. A couple of very experienced fast bowlers. Then the trioca of the spinners. This is a kind of score that could trouble Pakistan. Earlier in the piece we were talking about Bisma Maroof and her field placing, captaincy. It's been pretty good, spot on. There has been a fielder everywhere, so she's covered the angles quite well. Very impressive. Impressive has been Kavisha. Very nicely timed again. All the way learner, just one run. Ah, they run back for second. Oh, that's ordinary. That is poor fielding. They should be looking to save every run from here. Not give away easy runs. That is top cricket by this pair. Excellent running. Just look at this. Should have been fielded in the deep, but slightly lazy. And well ran in the end. 3 runs short of a 50, Kavisha. Oh, that one kept low. But nicely handled in the end. The wicket is keeping low. That's my... this is what I'm thinking about. 170, 80 odd, wicket is keeping low. It's turning. We saw the turn by Ghulam Fatma. I mean, so Sri Lankan spinners can trouble the Pakistani batters. Absolutely. They have a very good spin attack, the Sri Lankan side. Kavishpa, one of them off spinner. Fatima Sana has not taken a wicket. She had a brilliant start to her career, took 21 wickets in her first 15 ODIs. Since then, it has been a dip in her performance. Just 7 wickets in last 8 ODIs. She was the ICC Emerging Player of the Year too. Just before our stint, Marina was saying that she has responded well as a batter, and in different situations, tight situations, she's kept her composure, even though she hasn't taken many wickets. But I mean, it hasn't been all that bad. So she, after getting the Emerging Player award, she has not completely lost it, but maybe just a little bit of a dip.
Nicely bowled. And good work by Sidra. She's been proactive behind the stumps. Very good day she is having behind the stumps. Very sharp, very quick with her hands. Have a look at that. Yeah, that was nicely taken, and then alert mind. Lucky for the Sri Lankans, the batter was in the crease, and also she's very close to a 50. We would want her to get a 50. She's played well, deserves it. 100%. She deserves a 50. If she gets it, this will be the first time that she will get to 50. She's never had a 50 in her career. What a time to get it. Nicely done again. Excellent fielding too. Ground fielding from Pakistan side have improved immensely last year or so. We saw that in T20 game. Muniba for the wicket-keeper batter in the side. T20 side we saw 2 wicket-keepers playing. In ODIs we're seeing different 2 wicket-keepers playing. Pakistan is rich. Very interesting that when she bats, she wears glasses which are for sight, and here she's wearing light enhancers. Another wide. Every time she bowls a good delivery, that follow-up delivery has been disappointing. And when you say that, she started off well. The expectations were so high from Fatma Sana. She got the emerging player of that, but she has not really been consistent after that. I understand that it is not possible to perform in every game. That's off the bat. And you're learning, and you're young, so you will improve. Over gone, 167 for 8. One name stands out. That is Kavisha Dilhari, 48 of 48. Wonderful inning. Chamari Adabadu scored 25, 30 for Prasadani Virakodi. Nothing really to talk about. 46 overs gone, 167 for 8. After losing a few wickets, Sri Lanka is responding very well today. They came back well, soaked the pressure, and now they're in a good position. Off the pad. Yeah, I believe the time when Bisma bowled, I think that was the time, that was a wrong move in my opinion. That gave a lot of confidence to Kavisha. That made it life easy for them. Before that, Ghulam Fatma took 2 wickets and then you brought yourself on. I think that was where the things went wrong for Pakistan. They were relaxed. They were easy. A few lapses in fielding. They made Sri Lanka come back in this inning. Oh, nicely played. Run taken. I'd have to agree with you. I mean, there was pressure then. There was no need to bring herself on. She could have gone with a more regular bowler. But then you give international team a window of opportunity. They're certainly going to cash that on. Although she has had a good day, but only that move, in my opinion, really was not a clever one. Uh-oh. Stayed in the air for a bit. We've seen a wicket gone down like this, playing towards onside, thick leading edge, but this one didn't carry to the fielder. Diana Baig searching for her first wicket. Yeah, that was an uppish stroke. Should have been, but the fielder, had the fielder been closer, maybe it should have been taken. So, also I do feel that Diana Baig needs to smile, be more relaxed. Okay, not doing well, doesn't matter. Uh-oh, hurry! Oh, makes it easy in the end. Got to be very careful with that running between the wickets. 2 already today. She's a woman of many talents. She can sing, does rap. Diana Baig. And yeah, so very talented.
just needs to relax. I've just been told that she was named after Lady Diana. Her father was a big fan of her. Excellent. Nah, they're not getting those. Oh, we see a faint smile, and that will help her. Body language will be better, help her relax more, get her act in order. Very talented, as we were just telling you. She can sing, rap, named after the great Lady Diana. Very interesting people in that region, by the way, in Gilgit-Baltistan. Very, very interesting. Floater guided towards fine leg, one more run. Interesting and strong. That's what we associate with people of KPK. 47 overs gone, 169 for 8 Sri Lanka. Nice and relaxed Sri Lankan camp. They were in a bit of bother when a couple of wickets fell in one over of Fatma. Ghulam Fatma, that is. Got a couple of Fatmas in the side though. One is bowling Fatma Sana. She's also searching for her first wicket of the game. Inoka has supported of Kavisha well. She's on 10 of 24. Sensible partnership. Inoka giving good support to her partner, who's closing in on a 50 for Kavisha. 49 of just 50 balls, almost run a ball. Excellent batting under pressure. Scoring runs briskly when she was under the cost. The team was under pressure. And it's helped her team reach 169 for 8 and maybe closing in on 200. The expression says it all. Salim Jaffer rather. He's not happy. They should have closed this inning way earlier, but they just let Sri Lanka be back in this game. That have put a huge smile on Lina's face. 169, almost getting to 170 now. And he's making me sound like I'm from Sri Lanka. But no, I'm neutral, so I just want a good match. Oh, it's in the air. It's in the air. It's taken. Nicely taken. That is a very good catch by Alia Riaz. She was running towards the left, kept her eyes on the ball, took it nicely to finish the inning of Inoka. Commentators curse. Smart catch by Alia Riaz and good wicket for Fatma Sana. We were just talking that she hasn't picked up many wickets. Just look at this. Full ball, she's trying to drive it and straight to the fielder who took a good catch. She's trying to loft this ball over the mid-off's head. Couldn't control it and nicely taken by Alia Riaz. 9th wicket gone, 169 for 9. $169 for 9 now. Inoka Ranavira, the last batter going down, was well caught by Alia of Fatma Sana. Ashini Kulasurya. All she has to do is just stay there with Kavisha, just look to give the strike back to her.
because she's the one who has scored bulk of runs, 49 of 50. Kavishka would have to farm most of the strike now. Just take a look at the wicket. Trying to get this ball over the mid-off's head. Couldn't control it. There's a loud appeal and that's given. Another wicket for Fatma Sana. Batter Ashini wrapped on the pads and the umpire had no hesitation. 169 for 10, and this is the end of the innings for Sri Lanka. Well bowled Pakistan. Yeah, Fatma Sana getting second wicket. And how unlucky Kavisha is. She's been not out on 49. Have a look at that. It was a floater, just slower one. Maybe just clipping the leg stump. Ending Sri Lanka's inning on 169. Pakistan would be a happy camp. Just a little disappointment towards the end, but overall, if you look at their performance, they've done well. Bisma Maroof had led them beautifully, and the bowlers, especially the spinners, have responded excellently to them. We'll have a look at the batting card here. Just one name stands out, that is Kavisha Dilhari. Very unlucky not to have gotten to that 50 mark. 25 for Chamaria Tapatu, 30 for Prasthani Virakari. 169 all out Sri Lanka. The highlights. That's the run out. Bat calling from Matapatu. And first wicket gone. Excellent pickup shot. Then a straight drive. Another one that went for a 6. Another pickup shot. That's a very smart catch on the boundary by Muniba. Good fielding by Pakistan. Yeah, they've been brilliant all through the game. This was probably the ball of the match by Sadia. Another very good stumping by Sidra. She has had a good day behind the stumps, very sharp. And that delivery, probably had no idea which way this ball is going. And in the end, it was Kavisha Dilhari doing all the runs in the end. She played beautifully with her footwork, with the placement, with her hands. She's been spot on. She was not scared to go over the head of the fielders. That has been her beauty, but was not quite supported from the other hand. They kept on losing wickets from the other end, courtesy to some good fielding and some ordinary running between the wickets too by the Sri Lankan batters. But Kavisha just carried on scoring runs. Very impressive captaincy, kept the fielders inside the circle most of the game, Bisma. And that was how the inning ended. The last wicket, LBW to Fatma Sana. Bowling figures. Pick of the bowler, Ghulam Fatma. Sadia Iqbal picking up 2 wickets. Fatma Sana also picking up 2 wickets. Sri Lanka folded for 169, and that is the target, 170. Ghulam Fatma has been the pick of the bowlers. 4 wickets for 21 runs. Couple of maidens included in those 10 overs too. 2 wickets to Sadia Iqbal, 2 to Fatma Sana in the end to finish off things. हमारे साथ गुलाम फातिमा मौजूद हैं. गुलाम फातिमा, बहुत बहुत मुबारक हो, आपने करियर बेस्ट फिगर्स आपके. कितनी खुश हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि होम सीरीज़ का मुझे वैसे भी बहुत लाइक विश थी मेरी कि होम सीरीज़ खेलूं और अल्लाह ताला ने इसमें मुझे सक्सेस दी. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैप्पी हूँ. क्या राज था आपका इस पिच पे बॉल करने का? किस लेंथ पे बॉल कर रही थी आप? जो कोचिज़ ने और कैप्टन ने प्लान दिया हुआ था उसी को ही कैरी कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कामयाब रही. तो अब 169 रन का टारगेट है, क्या देख रही हैं आप, कैसे चेज करने जाएंगी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैटिंग ऑर्डर जो है वो बेस्ट है और हम अच्छे से चेज करेंगे और इंशाल्लाह विन भी करेंगे. चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत शानदार स्पेल रहा आपका गुलाम फातिमा. थैंक यू सो मच. Right, that was the star performer of the day, Ghulam Fatma. So that's the story here. Pakistan requiring 170 runs to win at the rate of 3.4 runs per over.
We're going to take a break. We'll see you on the other side.
Welcome back to South End Club, Karachi, Pakistan, Sri Lanka. First ODI of the Transgroup Women's Series. It's the ICC Championship that has kicked off. Pakistan, well, they're up for the chase, but Sri Lanka won the toss and yet again decided to bat first. Only managed to pile up 170. We've got the umpires taking the field. It's a hot day. Asif Yaqub and Faisal Afridi, I beg your pardon. It's not going to be an easy chase. Sri Lanka will try to utilize the surface. The spinners have done some work. That's the story. Sri Lankans batting. Not much to talk about. Chamari once again getting out early, 25. Prasadani scoring 30. But the standout, Kavisha Delari, the fighter, just falling one short of a half-century. And these are the reasons why. Starting off with an easy dismissal. Ghulam Fatma with the ball. It was marvellous with stumping. Sri Lankan were unable to pick her up. Her leg spin, her googly, her flight. Deceived in whatever ball she delivered. Grabbing 4 wickets, giving away just 21. Marvellous performance, Leena. Absolutely well bowled by Fatma. She spun the ball and like you said, she got bounced, she bowled the googly. Sadia Iqbal also bowled well. Fatma Sana also picking up 2 wickets and now Pakistan will have to chase 170. The openers are out. Sidra Amin and Munib Ali Siddiqui. Sidra, a 46th match. Average and strike rate, yes, she can work on it. Best 104, had a good one day. She scored her century. The first ever century for Pakistan in a World Cup. ODI World Cup, that is. Just getting some good form. Muniba Ali, we've seen her scoring, but again, couldn't really capitalize her starts. Well, has to do some work. It's a different format. Have to be more patient and try and chase it down with ease. Pakistan needs a good start. They need runs from their openers. Sukandika Kumari with the ball, experienced campaigner. We've seen she can do wonders in the T20. This is a sort of surface the spinners fancy. Got one slip in, tight ring around the batters. Can Sri Lanka replicate what Ghulam Fatma has done? Muniba reminds me of Ganguly, wearing glasses, batting, left-hander, very similar, and wearing shades while fielding. So quite a few similar things there. Faisal Afridi waiting for the cue. Here's the call. Oh, that'll be a wide. It spun, but way outside off runs. It'll pick up a couple. Oh, it ran away to the boundary. Pakistan is up and running. Lucky start for Pakistan. 4 runs. That should ease off the nerves. Just look at this. Ball probably hitting a crack and no one really bothered about it. Not the keeper, not the slips, and it went for a boundary. Add a wide to it. Picked up 5 runs, Pakistan. Cutting it beautifully. That again will race to the boundary. Muniba Ali's bat has started to talk. Excellent shot, got room, got a chance to free her arms, and what an excellent shot. Just take a look. Wide of the off stump, nicely played, angled the bat and got 4 runs. Good shot. Sukandika wants to bring that slip into the play, but just dragging way outside off stump. Easy picking so far. It's driven. Good fielding.
That's one area where Sri Lankans are really good. They will put their effort. Kumari will have to tighten her line and length, because this one would have gone for a boundary also. But the fielding was good and that saved 4 runs. Straying down the leg side, another wide. It's not a big target to defend, but yes, Sri Lanka has the armory. They've got decent spinners, good pacers who can keep things under check. Straight bat, quick single. They've got protection down there. Things have been nice and easy for Pakistan. The first 3 balls, 11 runs on the board. They didn't have to move a muscle for it. Just an excellent shot by Muniba. And the rest, the first ball was a gift. Wide and 4 runs. So pretty easy start for Pakistan. But there's still a lot to, the story's just begun. So still a lot that has to happen. Sri Lanka got excellent bowling lineup. The Trioka of the spinners that I've been talking about, handful. 2 fielders out in the deep, long on and deep mid-wicket for Sidra Amin, the right-hander. Oh, juicy full toss. Missed out on this occasion. It was a free invitation to get off the mark for Sidra. Almost played on. Just take a look. She's trying to drive. Almost played on. Lucky didn't go on the stumps. Left and right hand combination for Pakistan. Not easy for the bowlers. Straight down the ground. Easy single there. All they need to do is just keep rotating strike. Sri Lanka will give opportunities to grab those boundaries. Nerves must have relaxed. Marina, the butterflies in the stomach must have relaxed. Calm down. Single to end the over. Pakistan 13 without loss. ICC Championship has been started. A lot is at stake. Don't forget, every match has point system to them. Pakistan would definitely be looking to bag all those points against Sri Lanka. Very, very expensive over the first one. And in the whole series, I haven't seen, has there been an over this expensive or no? This is the most expensive. And what a nice way to start your chase. 13 runs on the board. And just, the rest of the overs could be, they should take from here, they should take it easy and not do anything silly. They do need a good start. Chini Kulasurya with a slip in. Good start, just tailing into Muniba Ali. To be targeting that area. Not much bounce on the wicket, so have to be very careful going off the back foot. When it's keeping low, you've got to be very careful on the back foot. It is keeping low. Good thing that Muniba Ali is playing with the straight bat. She's a decent player, has a good range of shots, but again, couldn't really capitalize the start she's getting. Likes her stroke play, but it's a ODI format. She has the opportunity to score big. Driven and a quick single.
We'll see that a lot from Pakistan's side. So nicely played. We're talking about Muniba. She gets those starts and then she gets a brain fade and plays a really silly shot to get out. And that is what she's got to be wary of today and not do it. It's a bigger format, longer format. She can just take it easy. Just look at this. This is a really nice shot. Look at the talent she has. She doesn't have to do silly things. Was driven on the up. Exactly. They have to make sure that Sri Lankans earn their wicket, especially Muniba. Again, driven straight to the fielder. I haven't seen getting troubled against any bowler, but when she tries to probably over-attack, that's where she gets that brain freeze you're talking about. Just trying to keep up with the strike rate and the run rate as well. That's a different story now. Yeah, she can take a deep breath, calm down. Defended. She's a very stylish player, Muniba. Can play shots all around the ground. Straight bat, cover driving, off the legs. She's got all the shots in the book. So she doesn't have to think of a shot, predetermine a shot from before the ball is bowled. Just play according to merit. Beaten. No footwork from Sidra Amin. Just one coming off that over. Pakistan 14 without loss. Sri Lanka has a lot to think about. They won only single game in the previous championship circle, ended on 8th. Pakistan previously ranked 5th. Would like to improve on that, but it's a long walk. It's a marathon or a sprint. Taking every series and ticking the boxes for them, that's really important. Change straight away, Ama Kanchana. So Kandaka has been replaced, probably trying to get an opener out. But now they're changing back to the Pacers. Senior campaigner. Ama Kanchana, very, very experienced. Has been playing for Sri Lanka for a long time. And after that first very expensive over, they've now changed quickly. Because they haven't got very many runs to play with. 169 odds, not like a 250. So they had to make this decision quickly. And they can then bring that same bowler back when Pakistan is under pressure, maybe if they lose 1 or 2 wickets. Flicked away nicely. That's timed to perfection. Will race away to the boundary. Muniba Ali looking more calm and composed. Some of the shots she plays is just beautiful to watch. I mean, I can't help but admire her. Look at this shot. So nicely played. Just off her pads and just so beautifully played. Nicely timed. No hurry. Good position. Wonderful. One just hopes she just plays for a long time. Straight away the slip has been taken out. Well, they need to attack. They need wickets. It wasn't a bad delivery, just drifting down the leg. Now they've got a 45. Fuller length. Squeezing at Muniba. 45 for the brain freeze. That's a good point. She got out twice in the T20 series. And the same field position. Let's hope she doesn't do that again. Got ample time. Besides, she played that shot to the wrong bowler. Oh, what a beautiful shot. What a beautiful shot, but nicely fielded. Straight bat. Beautiful.
That's her strength. Straight bat shot. She's very strong on square of the wicket, can sweep, can go over extra cover as well. But this, look at that, steady position, good stable base and good fielding as well on Sri Lankan part. No problem there. They've got 5 runs already off the over. 2 more deliveries to go. Pakistan's got a rollicking start. They don't need to do anything silly. Just play the ball according to its merit. Take the singles. If the ball has a 4 written on it, dispatch it. It's good bowling just around that off stump, 4th stump area. Good length. Kanchana has a bit of a slingy action. Not very fast. But where Sri Lankans are disciplined is the length they hit. Yeah, very disciplined line and length. And they're going up for it. Just few paces down, Sidrameen. That's the over. 5 coming from it. Pakistan 19 without loss. Relaxed Pakistan camp. Umayma Sohail, Sadia Iqbal. We've got Ayman Anwar, who hasn't been playing, and Gul Feroza. Her debut in T20 but couldn't really capitalize on it. I'm sure she'll have plenty of chances. Heard so much about her. Heard that she bats like Babar Azam. Didn't get the opportunity to see her for longer. But yeah, like you're saying, there will be other opportunities to see her. You don't agree? I'm not sure if she plays like Babar Azam, but she definitely looks like that. Have a look at that. Shimmy down the wicket. Cross-batted shot. She thought she had her. Not out is the call from Faisal Afridi. Apesh falls safely. You have to be very careful while playing on the up shots. It's keeping low. It's getting a bit slower now. When Pakistan was fielding, they had a short cover, Bisma. And I'm afraid if they had that fielder, they would have gotten this wicket. So Sri Lanka needs to be aggressive if they want to win this match. Yeah, just the fielder moving in now. Staying leg side. Well fielded once again. They are going to make Pakistan work for each and every run. Once the shot is being hit and there's no fielder there, then, I mean, of course, it's like the horse being bolted. You need to be preemptive if you want wickets. Still, you never know. Muniba likes to drive. Stucking it. No run. 4 dot balls. Sri Lanka's bowled well except the first over, which cost 13 runs. They'd done well after that. Fielded well. But we've seen some very good shots by Pakistan also, in particular Muniba. Being very careful at this occasion. It was Fuller. Did not went for the drive. Given the fact the fielder is moved few paces in for that catching. 5 dot balls. Is it going to be a maiden, or Muniba will try to do something different?
That's a maiden. Brilliant bowling from Achini. Pakistan, after 4 overs, 19 without loss. Got a decent crowd in. Few cricketers as well. I've seen that in club and also domestic circuit. Pakistan's batting, Bisma Maroof leading, no doubt about that. That's the World Cup. Bisma Maroof scoring 191, 79 not out. Sidra Amin was the highest run getter with a century to her name. Exceptional century. Nerves of steel. She was losing partners, but she kept her cool. Ama Kanchana will continue. Interesting that Nida Dar got 2 50s, yet her average is not that great in the World Cup stats. That's driven and straight away call for a single. She's pretty quick, but had it hit the stumps, Sidra Amin might have been in a little bit of trouble. That was a nicely ran single. Straight away, full commitment to the run, no confusion. And very nicely played. Oh, wasn't a well-judged single. Got away with it. Sidra Amin, her strength is playing straight down the ground. Against spinners, she can sweep well. Targeting the stumps, Sri Lankan bowlers. The thing with a single is that even if it's not well judged, but if there's no confusion, you'll still complete it. But you stutter and you stop in the middle, there's definitely going to be a run out. And Sri Lankan innings has been one example of that, even in the T20s. Had it been a direct hit, she would have been walked to the dugout. Got away nicely, forcefully, but no run. Yeah, they'll pick up a single off the misfield. Trying to just maneuver those gaps. Munib Ali really strong off that square. 21 for no loss, Pakistan. This is a good start. They haven't lost a wicket, which is very important. They've taken some singles, they've got a few fours, and they're well on their way. This is a time to consolidate and not lose a wicket. This time she decides not to test the fielder and her luck maybe as well. Just one delivery left, 2 off the over. Steady start for Pakistan for sure. Sri Lankans, they need wickets. Pakistan's batting lineup runs deep. Dot to end the over. After 5, Pakistan 21 without loss. The 2 openers stayed out in the middle, Muniba and Sidra. Bisma Maroof, the captain, comes in next. Probably Umaima Sohail. We'll have to see that. We've got Nida Dar, Alia Riaz, Fatma Sana with the bat. She's pretty handy. Sidra Nawaz playing her first game of the series. Ample batting left for Pakistan. Straying down the leg. We just saw that Diana Baig was in the middle order. Was that a mistake, or she actually is going to be given a chance there? Is that going to be? Is she going to be a pinch hitter, or are they want a cameo from her? What exactly is the
desire, Marina. Yeah, I'm sure that wasn't the batting order. A few shufflings there. But Diana, she can be pretty handy. She can go for the boundary whenever required. But she's a very keen runner between the wickets. It's not easy with her being on the other end. She wants single for every ball. Proactive cricketer, Diana, huh? She's a character. Loves the game, loves to make a difference. Earlier today we saw a catching attempt. How athletic that was. She had raised the fielding bar for Pakistan team. Oh, for sure, for sure. Very athletic, real character. We're talking about her singing, rapping. Full toss. Oh, missed out on this occasion, Sidra Amin. It was there to be hit. Straight to the mid-wicket fielder. It's nice to have such characters in the dressing room, you know, to keep you entertained, happy. Every dressing room has one or two characters like this. So when you were playing, who was a character like this who kept you happy, smiling? We all were characters in our own way, but yeah, there were a few. Start off with Nadar. Cut away nicely. And it will race away to the boundary. Oh, exceptional fielding yet again. Saving a certain boundary. That's Sri Lankan's fielding for you. It's fantastic fielding on the boundary. Saving certain for a nice shot. Cut away, but nicely fielded. Amma Kanchana, one of the experienced ones. Have a look at that. Just flicking it back few meters away. These sort of fielding efforts does give you a certain vibe and can save the runs. And they can make difference at the end. Definitely drooping shoulders can be lifted by such fielding efforts. The Pakistani bats are sounding so nice, so nice. No run. Searching for those quick singles is Ramin. 6 overs gone, Pakistan 24 without loss. We do talk about how skills have evolved over the years. With T20, T10 coming in, franchise leagues coming in. But so has fielding. I mean, it's a whole different department, a whole different area where you can make an impact. Absolutely. I mean, you know, fielding does make a difference, especially when you haven't picked up a wicket. You need a wicket. You do need such efforts from your seniors to lift the team up. Seen some exceptional catches over the years in men and women's games as well. What recently comes to mind was Deandra Doughton in the World Cup, a flyer. She usually fields at the point area, one-handed, diving to her left. And I remember an incident when I first played against West Indies. If I call it correctly, I was playing with Nan Abdi. I played into the deep covers. Deandra Doughton was there. She was coming very casually, and I thought it's a clear double. And I called out loud to Nan, and she said, no, no, no. And I was like, she's coming casually towards the ball. She came, she picked up. And then her throw came in flat, and I could hear it hitting the keeper's gloves. And Nan looked at me and said, tell me now. And I said, okay, you were right. So who was the batter who was out, you or Nan?
No, once she called it that there isn't a double. You have to stay where you are. So everything was good in the end. Yes, exactly. But she knew better than me. Quick single once again for Muniba. These are fabulous stories, you know, when you're playing. Just good to hear your experiences. Commentary experiences, playing experiences. Just look at this shot. And look at the dive. Fielding does make a difference, big difference. Chamari Atapattu with some stairs to Muniba Ali. She's a fighter herself. Hasn't had a good outing with the bat, but definitely doesn't like to end on the losing side. Seems like a gentle giant. Oh, she is, definitely. We haven't seen the giant so far gentle. No width given. Sizra Amin searching for it off the back foot. 7 overs gone, Pakistan 25. No hiccups. Three bowlers used so far, apart from Sukandega, the expensive over of the first one, going for 13 runs. Achini and Amma has done a decent job keeping things quiet for Pakistan. Pakistan in a solid, good position. They need to be just sensible from over here, not lose wickets. They're 25 for no loss. Just take it to 50. They need to play small pockets well. The next 3 overs, take it to 10 overs, and then from there reassess and move forward. Discussions, skipper Bisma Maroof and Nidadar. They're relaxing, but you never know. Way outside off stump. It was a marvelous shot, but straight to the fielder. You have to feel for Muniba Ali. She got the chance to free her arms, drove it, full flourish of the bat, but nicely fielded. I'm really enjoying her batting, except the brain freeze. Kept low. But in the end, Muniba did well. Yeah, you can see some nerves now. 3 dot balls, have faced 26, just scored 14. There's no need to panic. She'll have her moments. They're going well ahead of the required rate. So like you said, absolutely relax, chill. Carefully maneuvered. But again, if I come back to how things have evolved, women cricket, now if you talk about bigger teams, their power score is 270. And if the team's ranking lower needs to catch up, they have to play a different brand of cricket. They have to attack and have a plan, especially for power play. Lifted up. Who's going to call it? And it's taken. Once again, the maiden over, the dot balls, has done the trick for Muniba Ali. First one to fall for Pakistan. And Achini Kuraseria taking the wicket. The fielder is winded. We just hope she's okay. Excellent catch. But she got winded. Trying to slog it into the leg side. It's a brilliant catch. Managed to keep hands on it. Muniba Ali falls short once again. 14 of 28. Pakistan 1 down on 25.
The captain walks in, Bisma Maroof. Same old story for Muniba Ali, Bisma Maroof. The numbers, playing her 116th match. Got ample runs, 2,793 average. Yes, she can improve on that. Best 99, that's one to feel. Yeah, she's done well in the T20 series, captained well, has come to bat when there was trouble, helped the ship sail through nicely. She's acted as a rudder and taken her team to victory. So she's done really well in the previous series. Sri Lankans on the charge. They're keeping things tight. 8 overs gone, Pakistan 21 for 1, 25 for 1. Opener still not working for Pakistan. Muniba Ali again repeating the same mistakes. It's all about the mental strength. Had all the potential, but again getting a start and throwing away your wicket. It doesn't help you or your team. Perhaps she heard us talking about the brain freeze so often and we casted a curse. Self-destruct button once again. Playing so well. Bat was sounding so well. And yet she just chose to play that shot. Then there's no reason to play it. Now you're going to see a lot of singles between Bisma and Sidra Amin. Really good between the wickets. That's the wicket. Muniba Ali just trying to slog it. Couldn't really get underneath it. It's a windy day. You have to give that to the fielder. Well-judged catch. But they got the early breakthrough now. Just tipping into Bisma Maroof. Did well at the end. Bisma's really impressed us all. You know, woman of crisis. And once again, she's come, not so much of a crisis here, but just take a look at this delivery. Nicely bowled. Anguish on the face of the bowler, Amma. Oh, it kept down. It's not an easy surface to bat. That's not for the first time for Bisma. She has a habit to fight for her team. Have a look at that. Just enough angle away and keeping down. Did well, the keeper. Shakespeare says, cometh the moment, cometh the man. So you can reverse it and say woman. And that's Bisma. Thick edge. They're targeting the stumps. That's a good thing from Sri Lankans. Giving no width or length to the Pakistani batters. And they do know importance of Bisma Maroof. 4 dots so far in this over. 2 to go. She's a very calm character. Shepherds you through crisis really nicely. Misfield will allow them to pick up a single. Bisma off the mark. Well, she's never calm in crunch moments, I can tell you that. She's a person who likes to win. Your former teammate, I'm sure you know. And she's led like that. She's like a leader, someone who wants to win. And she moves in the right direction towards a win. Oh, Sidra wants a run. Slight confusion, but everything is safe for Pakistan. She's playing with the fire, Sidra Amin. 9 overs gone, 27 for 1 is Pakistan.
पाकिस्तान अपने ट्रैक पे नज़र आ रहा है क्योंकि बड़ा टारगेट नहीं है और एक मरतबा फिर वो जो टेस्ट हम T20 इंटरनेशनल्स में है पाकिस्तान की टीम को ना होते हुए देखते रहे, वही शायद एक मरतबा फिर आड़े आएगा और वो जो 20-30 रन की कमी है वो शायद श्रीलंका को खले इन आखिरी लम्हात में। हालांकि इब्तिदा में उन्होंने विकेट्स हासिल की थी पहले T20 इंटरनेशनल में भी और उसके बाद भी। अच्छी शॉट, गैप तलाश करने में कामयाब रही हैं और खूबसूरत अंदाज से उन्होंने इनर फील्ड को बीट किया और पीछे कोई प्रोटेक्शन मौजूद नहीं है। खूबसूरत 4 रन्स। ऑन दी अप ड्राइव था, हाफ वॉली बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अगर आप गौर से देखें थोड़ा सा उन्होंने अपने हाथ को रोका और अपनी टाइमिंग हासिल करने के लिए वेट करना पड़ा अपने शॉट को और आखिरी लम्हे पर बल्ले का रुख जो है वो मोड़कर गैप हासिल किया। इस विकेट पर ऐसी ही बैटिंग की ज़रूरत है। स्ट्राइड भी अच्छी थी, वेट अपना फॉरवर्ड लेकर गई और जो गैप तलाश किया वो बहुत ही शानदार था। ये देखिए हल्का सा वेट उन्हें करना पड़ा और उसकी वजह से टाइमिंग और प्लेसमेंट हासिल की। मजीद रन हासिल होंगे एक मरतबा फिर, मुख्तलिफ शॉट लेकिन नतीजा वही और सेम एरिया का इंतखाब किया सिद्रा। बैक टू बैक चौके। इस मरतबा कवर के फील्डर के दाएं जानिब से गैप हासिल किया। इस मरतबा गेंद पीछे गिरा हुआ था, काफी वक्त मिल गया था उन्हें। ये देखिए शॉर्ट पिच बॉल और इस मरतबा बैक फुट पर साकिल ने कहा कि 2 मुख्तलिफ शॉट लेकिन सेम रिजल्ट, बैक टू बैक बाउंड्रीज। सिरा ने अच्छी बैटिंग की थी, खासतौर पर बांग्लादेश के खिलाफ जो वर्ल्ड कप खेला गया उसमें गो के पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फतवात हासिल नहीं कर सका। लेकिन अगर हम इनफरादी तौर पर इनकी बात करें, सेंचुरी उन्होंने बनाई थी और वो जो टॉप ऑर्डर में आपको रेंज ऑफ शॉट्स शाह फैसल नज़र आना चाहिए वो दिखता है सिद्रा की बैटिंग में। जी बिल्कुल, और काफ़ी तजर्बेकार हैं अब और वर्ल्ड कप में अच्छे खेल का मुजाहरा किया उन्होंने। मरतबा फिर काफ़ी वाज़ेह है कि बिल्कुल अपनी जो फ्रंट लेग को बॉल की लाइन की तरफ नहीं ले जा रही, ऑफ साइड अपने लिए ओपन करती हैं और वहीं पे उन्हें हाथ चलाने का मौका मिलता है। इस ओवर में 3 अच्छे स्ट्रोक खेले उन्होंने। ये पहला चौका, ये ज़्यादा बेहतर शॉट था क्योंकि बॉल इतनी ख़राब नहीं थी, यहाँ पे उन्हें विथ मिल गई थी जिसका फ़ायदा उठाया उन्होंने। जो ऑफ साइड पे गेम की ऑल राउंड स्ट्रेंथ है, बैक फुट और फ्रंट फुट पे दोनों दिखाई उन्होंने इस ओवर में। और अब बहुत ज़्यादा कमिट कर गई डाउन द लेग साइड। मजीद रन हासिल, पाकिस्तान की इनिंग्स का एक अच्छा ओवर। 9 रन ऑलरेडी इसमें बन चुके थे और इस वाइड के साथ ये 10वां रन कमा लिया है ऑलरेडी पाकिस्तान ने। और ये हेल्प नहीं करेगा, ख़ासतौर पर जिस अंदाज से स्पिनर्स के साथ शुरुआत की थी उस पर लिव अप नहीं करती नज़र आ रही इनकी फास्ट बॉलर्स। ये ऑन द ट्रॉट अपना 5वां ओवर मुकम्मल करेंगे इस गेंद के साथ। पावर प्ले की आखिरी गेंद। तो पाकिस्तान अपने डगर पे मौजूद 37 के नुकसान पे। दस ओवर्स के बाद दोनों टीमों में 7 रन का फर्क। एक ही विकेट गिरी थी श्रीलंका की भी और एक ही विकेट पाकिस्तान की भी। पाकिस्तान को एडवांटेज है कि उन्हें अपना टारगेट वाज़े नज़र आ रहा है जो उन्होंने हासिल करना है। और पिछले ओवर में बात कर रहे थे सिद्रा अमीन की वर्ल्ड कप में बैटिंग के बारे में, तो 7 मैचों में 202 रन बनाए उन्होंने, जिसमें एक सेंचुरी भी शामिल थी। 28 की उनकी एवरेज थी। पाकिस्तान के सिर्फ वो रन स्कोरिंग में सबसे ज़्यादा स्कोर उन्होंने बनाए इंडिविजुअली, एवरेजेस में वो 3रे नंबर पे थी, लेकिन एग्रीगेट सबसे ज़्यादा रन बनाए उन्होंने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए। यस, क्योंकि एक इनिंग्स उन्होंने बड़ी खेल रही थी, शायद वो जो कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड थी खासतौर पर टॉप ऑर्डर में वो काम ना आ सकी। एक्सपीरियंस हैं उशादी राना सिंह, गेंद करने के लिए आए हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से और अटैकिंग फील्ड अभी भी बरकरार रखी है। गो के पावर प्ले का खात्मा है और अब बाकी मानदा इनिंग्स के लिए 4 फील्ड बाहर रह सकती हैं दायरे के।
सिद्रा अमीन टॉप ऑर्डर में बैटिंग करती हैं और आमतौर पे जब आप दीगर ओपोनेंट्स के खिलाफ खेलते हैं तो ज़्यादातर फास्ट बॉलर्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन अभी इनका एक इम्तहान है किस अंदाज से स्पिनर्स को फेस करेंगी जो कि ज़्यादातर एक्शन में नज़र आएंगी ये मिडिल पार्ट ऑफ इनिंग्स में। और स्ट्राइक की रोटेशन जो कि शाह फैसल शायद कम नज़र आ रही थी या ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पर उन्होंने करने की कोशिश की, जिस कोशिश में हमने देखा कि रनआउट्स T20 में भी और ODIs दोनों में इनके आड़े आए। बिल्कुल, अब जो इनिंग्स का फेज शुरू हुआ ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। स्ट्राइक रोटेशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है और स्पिन ही श्रीलंका की उम्मीद होगी इस मैच में। और अब पावर प्ले के ख़त्म होने के बाद स्पिनर्स एक्शन में नज़र आएंगे। हमने ये भी देखा है कि विकेट पे बॉल भी अब नीचे रहना शुरू हो गया है, तो ये फेज बहुत ही क्रिटिकल है और ये पार्टनरशिप बहुत ही अहमियत की हामिल है। ये आमतौर पर हम विद द विंड अगेंस्ट हम इन बात करते हैं तो जब बैटर्स मौजूद होते हैं तो उनके जहन में होता होगा ये सारे इक्वेशन का मामला कि किस तरफ शॉट खेलना है फील्ड के साथ साथ अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। बिल्कुल होना चाहिए और इस लेवल पे होता ही है क्योंकि और फील्डिंग साइड को भी। और अभी जो बिस्मा की जो हिट है थ्रूवर्ड्स ऑफ साइड होगी विद द विंड। और राइट हैंडर के लिए ज़्यादा एडवांटेज है यहाँ, अगर ऑफ स्पिन बॉलर कर रहा है तो उनकी जो हिट है विद द विंड होगी, लेकिन फिलहाल लेफ्ट हैंडेड बिस्मा जो है वो क्रीज पर हैं। एक स्लिप है और लॉन्ग ऑफ के फील्डर को अब पीछे भेज दिया है। यहाँ पे एक रन अवेलेबल है बिस्मा के लिए अगर वो इस रुख खेल सकें। अच्छा ओवर पहला उशाद ईरान सिंगे का, पाकिस्तान 38 पे 1। बिस्मा मारूफ इस सिचुएशन के लिए टेलर मेड हैं क्योंकि वो अपना वक्त लेकर खेलती हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस भी हैं। 112 इनिंग्स अभी तक पाकिस्तान के लिए वो खेल चुकी हैं, तो काफ़ी तजर्बा रखती हैं। और जो इस तरह की रन चेज में इस तरह का कामिंग इन्फ्लुएंस बहुत ज़रूरी होता है। हमने T20 में भी देखा उन्हें कि जब वो क्रीज पर मौजूद रहीं तो उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि वो मैच को आखिर तक लेकर जाएं और फिनिश करें। 112 इनिंग्स का तजर्बा जो है अकील काफ़ी तजर्बा है और इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं हमें नज़र आती हैं। आजकल की जो उनकी बैटिंग जिस तरह चल रही है वो अपने भरपूर तजर्बे का मुजाहरा कर रही है। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। रानावीरा है नई बॉलर, 59 मैचों में 63 विकेटें हैं इनकी, 4 विकेटों का कारनामा एक दफ़ा है इनकी कैरियर में। और श्रीलंका को भी विकेटों की ज़रूरत है, पार्टनरशिप डेवलप नहीं होने देनी अगर इस स्कोर का दिफा करना है। बॉलिंग में ज़्यादा तजर्बा मौजूद है श्रीलंका के पास बैटिंग के बरक्स। यहाँ बिस्मा की आप बात कर रहे थे, जहाँ तक सवाल है इनका मैच को फिनिश करने का, वहाँ पर उन्होंने ज़रूर ये अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, लेकिन वो जो ट्रिपल फिगर्स वाला कॉन्फिडेंस है वो जो आपको एक नया स्पार्क देता है वो उनके करियर में अब तक नहीं आया। बिल्कुल अकील, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। 2793 रन उन्होंने इस इनिंग्स से पहले बनाए इंटरनेशनल क्रिकेट में और 28 की एवरेज भी है जो कि काफ़ी कंसिस्टेंसी शो करती है। क्योंकि बीच में से ऐसा लगता है स्वीप शॉट खेली, काफ़ी रिस्की लगा। और मुनीबाली ये आउट होने वाली वाहिद खिलाड़ी हैं। आज भी अच्छा खेल रही थी, लेकिन जो चॉइस ऑफ शॉट जो था वो काफ़ी, वो खुद भी उससे खुश नहीं होंगी। टच प्लेयर हैं। रन हासिल होंगे सिद्रा अमीन को और वहां पर अच्छी कोशिश की है डीप में। पावर प्ले के खात्मे के बाद फील्ड वाइड स्प्रेड है, अपने बैलेंस को गंवा दिया था, लेकिन अच्छी कोशिश के ज़रिए से दसनयाका ने इन दी एंड कंट्रोल किया और गेंद पे काबू में रखा और पारल रन आकर बनाने में कामयाब रही। अच्छा स्वीप शॉट खेले बिहाइंड द स्क्वायर, गो के गैप मुकम्मल तौर पर तलाश नहीं कर सकेंगे, लेकिन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए क्रिएट करती नज़र आ रही हैं सिद्रा।
ऐसा लग रहा है कि रानावीरा ने ये नोट कर लिया कि इस तरह जब स्वीप खेलती हैं तो थोड़ी सी अपनी लेग स्टंप एक्सपोज कर देती हैं, शायद वो वहीं पे उन्हें खिलाना चाह रही हैं। बिहाइंड स्क्वायर प्रोटेक्शन है उन्हें दायरे के अंदर भी और बाहर भी। एक और अच्छा ओवर अपने अख्तिताम को पहुंचा, दोनों एंड से स्पिनर्स इन एक्शन। पाकिस्तान 40 पे। तेज़ हवा चल रही है शहर कराची में और बहुत ज़्यादा ये गर्म दोपहर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अपने आप को तरोताज़ा रखना ज़रूरी। और कुछ तादाद में ज़रूर यहाँ पर देखने के लिए क्राउड मौजूद है। अच्छी तादाद में स्कूल्स के बच्चे आए थे और अब थोड़े बड़े वाले बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं इन गेम्स को देखने के लिए। पहला वन इंटरनेशनल है और वर्किंग डे, तो बहुत ज़्यादा शायद आप तवक्को कर भी नहीं सकते। और ख़ास तौर पर ये जो ग्राउंड इसकी लिमिटेड फैसिलिटी है, इसमें जितना मैनेज किया जा सकता है उसमें बेहतर तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में ऐसी सीरीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड रहती हैं। अच्छा गैप तलाश किया, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल, विट मौजूद थी लेकिन उसके भरपूर तरीके से टाइम और प्लेस कर दिया 4 रन के लिए बिस्मा ने। गैप तलाश किया हाई बैकलिफ्ट के साथ, इन्होंने जिस अंदाज से खेला है इनके टैलेंट का भरपूर सबूत। बहुत बड़ी ये अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं थी लेकिन फील्डर के बाएं जानिब से निकालने में कामयाब है। खूबसूरत शॉट, ऑल ग्राउंडेड, बिस्मा का पहला चौका। जो बिस्मा की बात कर रहे थे, थोड़ा वो खुद भी फिक्रमंद होंगी इस चीज़ के बारे में कि वो अपना ये स्टैट को जो है वो करेक्ट करें और एक 3 हिस्सों की बारी खेलें, क्योंकि वो ज़रूर इस काबिल हैं, अहलियत है उनमें। ऊंचा खेल दिया इस मरतबा, मिड ऑफ के सर के ऊपर से 2 टिप्पे खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और खूबसूरत स्ट्रोक बिस्मा मारूफ का। फ्लाइट दी एक मरतबा फिर शादी ने और भरपूर फायदा उठाया इसका। 2 कदम आगे आने के बाद टॉप ऑफ दी ऑफ स्टंप ऑफ के मिड ऑफ पर मौजूद फील्डर की जानिब से खेला और आन की आन में गेंद चौके के लिए चले गई। अचानक से अपना गियर बदला है बिस्मा मारूफ ने और अपनी शॉट्स की रेंज भी दिखाती हुई। पाकिस्तान तेजी के साथ अपने 50 रन को अप्रोच कर रहा है। ऑलमोस्ट 4 की एवरेज इन्होंने हासिल कर रखी है इन 2 चौकों के साथ। मुश्किलात बढ़ रही हैं श्रीलंका के लिए और बहुत ज़्यादा इनके पास है नहीं ऐसा टोटल जिसको डिफेंड करने के लिए ये तजर्बात कर सकें। एक और अच्छा ओवर पाकिस्तान के लिए, 9 रन हासिल हुए 49 पे। मुनीब अली जिन्होंने अच्छी शुरुआत हासिल की थी कि वो कैच आउट हुई, निराक्षी ने कैच लिया और उसके बाद से सिद्रा अमीन और बिस्मा मारूफ ने कमान संभाली है। पाकिस्तान की बड़ी डीप जाती है बैटिंग है और ज़्यादा मसाइल होने नहीं चाहिए इस बज़ाहिर आसान नज़र आने वाले टोटल को चेस करने के लिए, बल्कि जिस अंदाज से अब गियर को शिफ्ट किया है बिस्मा मारूफ ने, पाकिस्तान इस बात का हल हो सकता है कि ओवर्स को स्पेयर में रखते हुए अपने लिए टारगेट सेट करे कि वो जल्द इस टोटल को हासिल कर सके। ऑल इम्पॉर्टेंट गेम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जीत आपकी पहली तरजीह है, तजर्बात आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बड़े अहम दौरे भी करने हैं और बड़ा बिजी सीज़न है पाकिस्तान के लिए, और इसमें आप जो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसको टेस्ट और इम्प्रूव ज़रूर कर सकते हैं।
और बिस्मा के बारे में हम बात कर रहे थे, 112 इनिंग्स और अब उनके 2800 से ज़्यादा रन हो गए हैं, लेकिन एक बड़ा अनवांटेड सा वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके पास, इस बॉल के बाद जिक्र करेंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं बिस्मा मारूफ ने बगैर सेंचुरी बनाए, तो ये इस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिस पे वो खुश होंगी, लेकिन रन उनके अच्छे हैं, एवरेज भी उनकी अच्छी है और एक मरतबा 99 पे रन आउट हो चुकी हैं अकील, तो ज़्यादा दूर नहीं थी इस मैजिकल हिंसे से। ये देखिए, इस इनिंग्स से पहले उनका स्कोर 2793 था, 28.5 की एवरेज 112 इनिंग्स में। जी, आप अच्छी खबर की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपको कम से कम ये भी बताता है कि बगैर सेंचुरी के अगर आपने इतने रन बनाए तो आप कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, लेकिन ऑब्वियसली जिस लेवल पे अगर आप पहुंचते हैं तो आप चाहते हैं कि उस ट्रिपल फिगर के हिस्से को अबूर करें, वो जो फीलिंग है उसके एक मरतबा कम से कम उस पार जाकर देखें, ताकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो स्पार्क हासिल हो सके जो कि आपको इस लेवल पे लेके जाएगा। बिल्कुल, और काफ़ी दुनिया की अच्छी खिलाड़ी हैं इस लिस्ट में जो 3 हिस्सों तक नहीं पहुंच सकी। इस लिस्ट के आखिर में सना मीर का भी नाम था, पाकिस्तान की आइकॉनिक ऑलराउंडर और फॉर्मर कप्तान। बिस्मा ने 99 के साथ 92 भी किया है बांग्लादेश के खिलाफ नेशनल स्टेडियम कराची पे, तो कुछ मौक़ों पे वो ज़रूर करीब गई हैं, लेकिन यकीनन उनकी ख्वाहिश होगी कि 3 हिस्सों का फिगर जो है वो हासिल करें। आगे आकर शॉट को खेला है और बड़ी तेजी के साथ गैप तलाश कर लिया, प्रोटेक्शन मौजूद थी कवर्स में, लेकिन उसको करीब भी आने का मौका नहीं दिया। सिद्रा का एक और खूबसूरत चौका, ओवर मुकम्मल 54 पे। पाकिस्तान 54 पर 1। अच्छी पार्टनरशिप ये डेवलप हो रही है। मुनीबा की विकेट के गिरने के बाद 29 रन सिर्फ 37 गेंदों पर। बॉलिंग में तब्दीली हुई है। चमारी आतफातू 40 मैचेस 23 विकेटें और 31 रन देकर 3 खिलाड़ी आउट। इनकी बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस है। पार्ट टाइमर हैं, लेकिन यहाँ पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए अपने आप को लेकर आई हैं और श्रीलंका को इस वक्त विकेट की ज़रूरत है, बल्कि जिस तरह का इनका टोटल है, इनको रेगुलर विकेट्स लेते रहना होगा इस टारगेट को डिफेंड करने के लिए। यस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करने की ज़रूरत। पिछले ओवर में बड़ा खूबसूरत चौका लगाया सिद्रा ने। शाह फैसल जी, सिद्रा ने ये दिखाया कि वो जो अपना फ्रंट स्ट्राइड आगे तो लेकर जाती हैं, लेकिन बॉल की तरफ नहीं जाती, जिससे उनको अपने आर्म्स जो है वो फ्री करने का मौका मिलता है और ऑफ साइड पे गैप तलाश करने में आसानी हुई। ये एक अच्छी पार्टनरशिप है, क्योंकि बिस्मा की जो ऑलराउंड गेम है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, ख़राब गेंद का इंतज़ार करती हैं और उसके अलावा स्ट्राइक रोटेशन में भी काफ़ी महारत रखती हैं। यहाँ सिद्रा अमीन का काम कदरे आसान हो सकता है, सिर्फ वो जो कंसंट्रेशन है वो बरकरार रखनी है, क्योंकि इस वक्त श्रीलंका की टीम काफ़ी प्रेशर में है। अगर खुद से गलती नहीं करेंगी तो बड़ी इनिंग्स खेल सकती हैं यहाँ पे। मजीद स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं सिद्रा के लिए थ्रू द कवर्स। 3 फील्डर ऑन साइड पर रखी हुई हैं बाउंड्री लाइन पर, और एक मरतबा फिर कवर्स का इंतखाब किया और इस गेंद को उसको बहुत फ्लाइट दी थी, उसको भी ड्राइव करने में कामयाब रही हैं। और एक मरतबा फिर उन्होंने गैप तो तलाश किया, वो टाइमिंग ना दे सकी, लेकिन अच्छी बैटिंग करते हुए और इंटेंट नज़र आ रही है। और अब कम से कम पाकिस्तान इस मोड में है कि वो अपने लिए टारगेट सेट कर सके इस टोटल को जल्द चेस करने का। आतफातू ने उन्हें टेम्प्ट किया, क्योंकि वो
चाहती हैं कि सिद्रा यही शॉट खेलें और अगर बॉल टर्न हो तो गैप बने। ज़्यादा फुल थी पिछली डिलीवरी और सिद्रा की टाइमिंग आज काफ़ी अच्छी है। ऑफ स्टंप का ऑफ साइड का गैप उन्होंने खाली छोड़ा हुआ था पतू ने, और वो अटेम्प्ट करना चाह रही हैं। अब मिड ऑफ के फील्डर को पीछे भेज दिया उन्होंने। एक मरतबा फिर अपनी लाइन पर कंट्रोल ना कर पाई। चमारी का पहला ओवर मुकम्मल। पाकिस्तान 15 के बाद 58 पे। पाकिस्तान का कैंप काफ़ी रिलैक्स्ड है। तो तजर्बेकार खिलाड़ी इस वक्त मिडल में हैं और सिचुएशन को कंट्रोल किया हुआ। जिस तरह पिछले ओवर में मैं कह रहा था कि श्रीलंका की टीम अंडर प्रेशर है, इसलिए कि रन उन्होंने कम बनाए, और अगर एक पार्टनरशिप बड़ी लग जाती है तो उनका काम काफ़ी मुश्किल होगा। यहीं पे बैटर्स का काम है, पाकिस्तान के बैटर्स का, कि उस प्रेशर को बरकरार रखें। श्रीलंका की इस खेल में वापसी सिर्फ उसी वक्त होगी जब पाकिस्तान ऊपर नीचे विकेटें खोएगा। अगर ऐसा करने से वो रोक सके श्रीलंका को तो पाकिस्तान की अच्छी पोजीशन है। शाह फैसल, आप भी आमतौर पे सर्दियों के महीनों में कराची आते हैं क्रिकेट कवर करने के लिए, लेकिन अली से मैं पूछ रहा था क्योंकि इस मरतबा गर्मी में आए हैं तो कराची के नेशनल स्टेडियम के अलावा कई ग्राउंड पर क्रिकेट आपने कवर किया है, तो आई एम श्योर कि सीज़न को एक्सटेंड करने के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और आप कैसे देख रहे हैं फैसिलिटीज़ को, और आपका फेवरेट ग्राउंड यहाँ पे कौन सा है? कई जगहों पे कई ग्राउंड्स में क्रिकेट आपने कवर की थ्रू आउट दी सीजन्स। अगर विकेट्स के हिसाब से बात की जाए तो स्टेट बैंक की जो विकेट थी वो फर्स्ट क्लास सीज़न में इस साल बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेटिंग पिच थी, जहाँ पे बेहतरीन क्रिकेट देखने का मौका मिला। लेकिन अगर इस सीरीज़ की आप बात करें तो ये एक आइडियल किस्म का वेन्यू है। जिस तरह यहाँ हमने एटमॉस्फेयर देखा T20I में, जिस तरह का क्राउड यहाँ पे आया और जो मैचेस हुए, तो थोड़ा सा विकेट पे यहाँ अगर काम किया जाए, क्योंकि थोड़ी स्लो और लो है ख़ास तौर पे 50 ओवर्स के लिए, लेकिन ये वेन्यू भी बहुत ही मुतासिर कुन है। और जहाँ तक गर्मियों में कराची का में मई और जून में पता नहीं लग रहा है, यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी अभी नहीं है। हवा जो चलती है यहाँ पे मेरे ख्याल पूरे पाकिस्तान में उसका मुकाबला नहीं है। खास तौर पे शाम में जब सूरज ढलता है तो वो जो हवा है, जो सी ब्रीज है, वो अनमोल है। अगर आप कमेंटेटर ना होते तो शायर होते, जिस अंदाज से सूरज ढलने की आपने बात की है। यस इंडीड, क्योंकि मानसून की आमद से पहले ये हवाएं मज़ीद पिकअप कर जाती हैं और बादलों की भी आमद का सिलसिला कराची में ज़्यादा शुरू होता है। फिल वक्त भी गो के शायद प्लेयर्स इस बात से इतफाक़ ना करें, लेकिन अदरवाइज़ काबिल बर्दाश्त मौसम है। ख़ास तौर पर जो हमारे मेहमान मुल्क के दीगर हिस्सों से आए हुए हैं वो यकीनन इस विंडी सीज़न से बड़े महसूस होते हैं, जो कि थ्रू आउट कराची में कभी समुंदर की समत से और कभी मशरिक कभी मगरब की जानिब से चलती रहती है। तो कल शाम को जो आपने सीज़न के एक्सटेंड होने की बात की, तो जो कल शाम को या जितने जब से हम आए हैं, जब शाम का जो मौसम है डे नाइट क्रिकेट के लिए, तो शायद एंड ऑफ मई और अर्ली जून भी आइडियल मौसम है कराची में। अभी भी देखें दोपहर के वक्त काफ़ी हवा चल रही है। ओवर का इख्तिताम, पाकिस्तान 59 पर 1। पहले दिन मैंने कहा और इसके ना चारों बड़े बड़े वो लगाने खजूर के सारी बिल्डिंग्स वगैरह छुप जाएंगी। हाँ यहाँ पे इजीली टेस्ट क्रिकेट हो बिल्डिंग टेस्ट क्रिकेट को देखने नहीं, बहुत अजीब सा ड्रोन शॉट और सारा बड़ा अजीब।
साउथ एंड क्रिकेट क्लब में इस वक्त पानी का वक्फा है। पाकिस्तान 59 पर 1। Just one wicket. Munib Ali falling to Achini. Just 14 runs. Sidra Amin, Bisma Maroof since then have steadied the ship a bit. 59 for 1 after 16 overs. First over was expensive. It was timed to perfection by Munib Ali. Got momentum going on again, getting a good start. Sidra Amin looked compact. Few drives, piercing the gap off the back foot. This was exceptional. Just timing it into the gap. And this is Bisma Maroof. He's taking the charge. Joined by Sidra Amin. And slightly put Sri Lanka off to the back foot. 6 bowlers used already. Just 1 wicket for Achini Kulasurya. 5 overs, 1 for 13, 2 maidens. Rest of the bowlers searching for wickets. 111 more runs to win. Nicely cut away. Will only be 1. She's looked a really good deal, Sidra Amin. Technically very correct, temperamentally very correct. Looks like a player of the longer format. That is what you look when you choose a side of ODI. Players like Sidra Amin. We saw in the previous matches, T20 specialists were playing. But now in the ODI, we've got some ODI specialists here. You do need to have a certain temperament to play the longer formats. Sidra Amin has definitely improved on that. We saw a magnificent 100 in the World Cup from her. Huge learning experience. That will be a wide.
while Faisal Afridi signalling it a wide, rightly so. Bisma Maroof playing like a captain Pakistan. 27 deliveries for 12, just taking her time, and that's what she usually does. It's important that she stays in. Off the back foot, nicely done and easily managed in the end also. Few close calls for Pakistan. Early on we saw Sidra Amin doing that, but at least it's a clear call. Just pushing it down the ground off the back foot. That maybe provided just a few meters. Had it been a direct hit, it would have been curtains for her. Straight to the fielder. The only batter out is Muniba Ali. Can you explain what that shot was? Marina, being the vice captain, being the selector also, what do you do? What do you say to them? What was it? Was it the mental blockage? Was it the fitness? Was it the skill-wise? What happened there? It's actually a combination of all. I mean, yes, I do realize that there were dot balls coming in. She faced a maiden over, but that's where you have to be resilient. You know you have swallowed up few dot balls. Oh, overthrows will allow few more runs to Pakistan. But that's how you build a temperament. And the more concerning thing for me is that you cannot have a pattern as a player. When you're having that, like you said it earlier, that it means you're not learning. Every time she looks compact, she looks calm, gets the timing right, gets the start, and then throws her wicket. Yeah, even in the T20s, we saw Iram Javed play a few good strokes, looked good, looked very compact, and then just throws it away. Because that's, in my opinion, probably is the lack of temperament. Eased it for one. This is good cricket. She's looked the best so far, Sidra Amin. That's the end of 17 overs, 65 for 1 Pakistan. Bangles, well, every girl likes to wear them. It's a whole process. They melt. The class temperatures are around 1300 or 1400 Celsius. And then all the art, all the creativity comes in different colors, different combinations, complementing each and every dress. It's a must for every girl. What's more difficult, to choose bangles or being chief selector? Choose bangles. Beautiful though, the bangles there that we saw. Sidra Amin on 29, she looks all settled for the big one here. I would really want her to finish the game because that is something that is lacking. Again, nicely done. They've run well too. Probably they've realized where the singles are available. The judging to perfection. That's one thing where Sidra Amin has improved. Earlier in her career, she would do the same as we have seen in Muniba or even Iram's innings. She would throw away her wicket. But now she has found that balance to fight it out. She has even strengthened her areas where she was strong enough, rotating the strike and then just waiting for the right delivery to attack. That's nicely swept. There is protection. Should look to get to. Yes, easily done. Very fit, these two, Bisma and Sidra. They run really well today. Sri Lanka is an excellent fielding side, putting pressure on the fielders at boundary line. Easily taken.
And that's what Bisma brings to the table. Times it to perfection. She exactly knew where the boundary was. Doesn't try to overhit. She's always looking to score runs, not in terms of boundaries, but she likes to pick up the gaps. Always pushing for singles and doubles. That's another plus for Sidra Amin, that she has Bisma out in the middle. You can have a plan with her, you can talk, you can pick your options. Yeah, the skipper, she looks like such a calm personality, always there for the players. She was excellent with the field positioning, bowling changes while fielding all throughout the series. She played some important knocks. Nicely done. Should only be one. It's obviously not easy being a mother now. Coming back from the maternity leave, taking up the captaincy right away. And before that, she had to fulfill all the requirements of fitness and also performing to try and make her way back into the side, and then straight up World Cup. That was a huge turning point for her. That shows what sort of character she is. Yeah, the only thing surprises me, Marina, is that she's played a lot of cricket, lots of ODI cricket, still without 100. Does that surprise you? She's got over 2,700 runs without 100. It does actually, but it has been some unlucky incidences. She got run out on 99 against South Africa. I remember that game in Sharjah. 116 games without 100. Through the gap, will only be one. 18 overs gone, 71 for one Pakistan. David Hemp, the coach, he's done well. As far as the fielding is concerned, the bowling is concerned, they've done really well, especially after the World Cup. Till now, I think there is a lot of improvement. And that's what you want to see. You want to improve as a team. So the Shams in the middle, the youngster who made it to the team, yet to get an opportunity. Decent crowd in. It's good to see youngsters coming in, families coming in to support the girls. Many young ones will get inspired, especially watching her, the skipper. Bisma Maruf still searching for her first 100 at this level. Bisma, Misbah, lots of similarities, captains without hundreds. That's nicely guided. That is good cricket by Bisma. Nice use of the wrist. Placed it nicely for one. They're coming back to the same point. Bisma not scoring 100 till now. Where do you think she's missing? Probably a proper stage. Yes, she has played a lot of matches. Many times a batting order has been shuffled, but it's more about the intent. I've seen her take team out of the crisis every now and then. And as far as I know, personal achievements, yes, they do matter, but for her is not the priority. She wants to make Pakistan right up there. But yes, she has all the potential to score not just one, not just two, many hundreds. And I'm sure that Pakistan and Bisma are getting there. One day. Down the track. It'll only be one. Yeah, I totally agree. She's been such an important part of this Pakistan side. She looks somebody that holds the side together. In her absence, Javeria was the captain, but since the time she's come back, although she didn't have a good time in the World Cup, only one victory against West Indies, rain-affected game. But now is the time, probably. This is the way forward from here. Starting from this game, this ICC Championship.
a lot is expected. I'm really hoping that this team will do wonders. Some new faces been brought in. Tuba, we already saw that she's a star in making. Iram Javed been given another opportunity. Sidra Amin looks really good. Umaima Sohail, they all look so good. I'm pretty sure that, yes, Aisha Naseem is another one. Oh, you got to be very careful when going onto the back foot. That's the end of the over. 19 overs gone, 74 for 1. Salim Jaffer on the right of your screen, former Pakistan international left-arm fast bowler, played in the 90s. Now he's done a good job here with the bowling of Pakistan. We've seen a lot of improvement. That will just eased it towards longer for 1. That is where Bisma is so good. Her footwork, she rocketed on the back foot. Whenever needed, she comes down the track. That's where she's so good. The partnership is now 50 runs of 68 deliveries. The one thing she has up her sleeve is she knows how to create and craft an innings. And that is a huge thing you can learn from her. Being her teammate, by watching her, all the young cricketers. She reads the field well, she reads the bowler, and accordingly adjusts to what her plan is. Not quite going where she wanted it to. Thick inside edge. Talking about this, the Pakistan structure, the domestic structure. It's so disappointing to see no first-class cricket is being played here. Only what we see is T20 cricket. I remember that a couple of months ago we saw that T20 tournament being organized, the intra-regionals tournament, but that was T20 cricket. In my opinion, you don't really learn from T20 cricket. You learn from longer version. And that is probably, in my opinion, is the missing link in Pakistan women's cricket. I couldn't agree more. I mean, 2-day matches can really create a difference. And not just these players, but it has to be somewhat compulsory for the ones who are opting for cricket as a profession. You develop your skills, your mental strength, your fitness, your game awareness, and how you can utilize your skills out in the middle. That's all you learn from the longer format. 20 overs gone, Pakistan 76 for 1. Munib Ali, that was really a poor shot to lose her wicket. Just 14 runs she scored. She looked good for those 14 runs. But the topic we've been talking about, that mental blockage, they just give it away. 33 for Sidra Amin. Bisma Maroof looking good for 20. 76 for 1. A lot of options for Sri Lankan captain to pick. 6 to be very precise, and only 1 successful, Achini Kulasurya. You have to give credit to how Pakistan is chasing this down, especially with Bisma out. Sidra looking really compact, sorted out. That's more suitable word for her. Nicely bowled. Be careful. I told that earlier, because these left-arm spinner from Sri Lankan, they've got a very good armour. Have a look at that again. The length, maybe look to play on the front foot. Well, that's nicely done. That has gone through the gap. This will run away for 4. Yes, it does. That is a very good shot by Sidra Amin.
Placed it perfectly between the two fielders. Got the desired result. And Oka just slightly hitting the shorter length outside off stump. Sidramin pouncing on it. That's where she has gained her confidence as the batter waits for the opportunity. And then have a look at that, just keeping it down, rolling the wrist. And timing was impeccable. Nicely bowled. This is better. At least she's looking to play on the front foot. Because on a pitch like this, which is keeping low and slow, you got to be looking to play on the front foot. That's better. Nicely played. Well, they got 90 runs to win of 29 overs. Really, I would really want them to finish it inside 40 overs. Just to show the authority, just to show the confidence. They whitewashed Sri Lankans in the T20 series. Oh, that was hit hard, but straight to the fielder. Definitely, they should be eyeing that 40 over mark. They've got plenty of batting. They've got a decent foundation. Sidramin on 37, Bisma on 20. These two should be looking to finish it off. That's how you can excel in your skill set. 21 overs gone, Pakistan 80 for 1. There's a cricket game going on. Lady, please wake up. Please wake up. Not a good side. Wake the other one up. Come on. Wake her up. She's not in a mood. $90 more runs to win out 29 overs. Should be an easy target for Pakistan. They look to be in a very commanding position at the moment, just one wicket down, that of Muniba. The captain looks good. Sidramin really looks good. As we see Kavisha Dilhari, 3 wickets to her name. Best of 2 for 34. Always a contest. Left-hander batter and off-break spinner with a slip-in. Exceptional innings she played in the first outing. Well bowled. That is really well bowled. This is a very good start by Kavisha Dilhari. She was brilliant with the bat. She's got a job to do with the ball. Can she get the breakthrough? Because this partnership is now 55 runs. Can well be the match-winning partnership for Pakistan. Too early to say though. Beautiful. That is beautiful. Top-class bowling. Where has she been? We've been waiting. This is the 22nd over. This is the first time that we're seeing her today. Scored some crucial 49 runs for her team. I think they had enough with the left armers. Oh, that's nicely played. Fielder doing a bit of work here. She should look to get to. Easily done in the end. Sweep shot coming in. One of the release shot for Bisma Maroof. But what she does well is get on top of the bounce, keeps it down. It's always tricky against an off spin bowler. Not much worries on the coach's face. It's got the same expressions every time. Oh, that's gone through. That is ordinary.
Not defending much, so you got to save every bit of run here. The captain herself cannot blame anyone. Sri Lanka should be looking to put pressure on Bisma Maroof. They can probably bring someone up in the circle, force us to go over the infield, might open up an avenue to create chances. That's not much of the difference in the current rate and the rate required. 3.80 the current rate. Required is 3.09. That's gone through. Nicely timed and placed by Sidra Amin. She looks so gorgeous whenever she's looking to play on the offside. Gave herself room and placed it beautifully. It's end of 22 overs, 85 for 1 Pakistan. Bit of batting to come for Pakistan. Umaima Sohail technically very correct. There's Alia Riaz, the dasher. Got Nidar Dar, the cool Dar, the finisher. Sadia Iqbal also. Sidra Nawaz can bat too. So a bit of batting to come. Let's hope it doesn't go that down for Pakistan's sake. Marina, we have seen that happen. You want something to happen, right, Ali? No, my colleague, Alina Moin Aziz, she really wants something to happen. She really wants a good game of cricket, and rightly so. It is a good game of cricket. It's a steady chase for Pakistan. Two well-set batters. That's not a good game of cricket according to her. The good game is winning on the last delivery. Eased it towards long on, one more run. She likes those crunch games where last ball, 4 runs required. Batter hits a 6, Pakistan wins. That's her ideal image of a cricket game. Yeah, a rush of adrenaline. That's all she wants. 6s being hit, wickets falling down, good catches. But this is a one-day game. Not to forget, this is ICC Cricket Championship. Starting today, the 3rd cycle. Such a huge opportunity for Pakistan side to start off things on winning ways and get those important points. Remember, 5 teams will have an automatic slot in the 2025 World Cup. Can forced it. Nicely done through the gap. Another boundary for Sidra Amin. This is beautiful timing. Excellent batting. Sidra Amin with a resolute plan. She's reading the field really well. Not much turn to be offered. Staying on the leg side. Picked up the gap perfectly. Her timing has been brilliant today. Steady, allowing the ball to come, playing underneath her. That's one of the key to get runs on the surface. Proper. She's a proper batter. Sidra Amin. Oh, that's wanted to go hard on it. Got to be careful. When you're timing it nicely, why go that hard? It's tossed up nicely outside off stump. Bit fuller this time. I wanted to play that square drive. Better. Nicely, right from the middle of the bat. Forced it for 1. Sidra Amin scored 100 against Bangladesh this World Cup. She looks technically very correct, very cool head. A very good prospect for Pakistan side. Oh, that's a good sign. Pakistan Junior League coming soon. Doesn't get any better than this. That's a good opportunity for all the youngsters, the under-19 players. Talking about women's PSL too, Marina, what are the plans there? Have any news about that? Yeah, it was definitely announced by the chairman, Ramiz Raja. And that is the need of time. If you just have a look around the globe, franchise cricket has
been given a lot of importance, and it does help when you share your dressing room, your field with superstars, players performing at the international level. You learn a lot. You learn the work ethics, you learn the skills. So it's around the corner, all fingers crossed. I hope that it does bring a positive change for Pakistan women's cricket. 23 overs gone, Pakistan 93 for 1. Pakistan needing 77 more runs to win. Let's have a look at Pakistan's highest successful chases. They've done well over the years. 245 for 3 against Sri Lanka at Sharjah 2015. 225 against West Indies. There have been 4 times that they've chased score over 200 runs. So the potential, the capabilities are there. But the only thing, the worrying sign is the only one score of 211 that has happened in after 2020 or 21. Rest has been before 2015. So that's where the problem is. Definitely back our girls. We are here to do that. Punched off the back foot. She's really impressive, I tell you. Probably the best batter that I have seen all through this series. Not happy? Worried? Angry? Sad? He's always thinking. David Hemp, he'll be pretty happy so far with the performance. But yes, they want to finish on high. They want more batters taking responsibility. That's what he always talked about. Taking responsibility, finish the game. Once you're in, that's your role to do. Straight to the fielder. Sri Lanka are searching for that wicket. Looking to break this partnership with just 69 runs. Just 93 deliveries. Kavisha, the star with the bat. Can she be the star with the ball? Can she get the breakthrough? Nicely run. That is good running. That is excellent. That is top cricket by Bisma. Good cricket from this pair. Loud calling, understanding, soft hands from Bisma Maroof. That's a good deploy against an off spinner. We'll look at that right underneath her eyes. Played it softly and called it early. I wouldn't mind a slip for Bisma. They need this wicket, Sri Lankans. Yeah, that's where Bisma was so good with her captaincy in the first inning. She kept the slip in, kept the fielders in. I think the mid-on and mid-off were up in the circle for almost 50% of the inning. That's where probably Sri Lanka has missed the trick. They've given away easy runs, easy singles are available. That's where you should be looking to do, because there's not many runs to win now. Got to take wickets, got to put the pressure. And it's not easy to go over the top on this pitch particularly. Just bring in few fielders and push them to take the aerial route. Oh, that's dropped. That went straight to Kavisha. Was it? Did it bounce? For a second I thought it's gone straight. Oh! I thought it went straight to her. Got me excited. That's how bad Sri Lanka wants a wicket. Sri Lanka or you? Just a good game of cricket. 24 gone, 95 for 1. अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ बड़ी
ये लाइट डिस्कशन जारी है लेफ्ट हैंड पे, जबकि दाएं तरफ बहुत ही कुछ सीरियस किस्म की डिस्कशन हो रही है। और इस तरफ ये पावर ड्रिंक है जो कि इस वक्त सिद्रा अमीन हासिल कर रही है। एंड आई एम श्योर कि इनके पास जल्द ये मौका होगा कि वो एक और माइलस्टोन अबूर करें। एक अच्छी फॉर्म को वो कैरी कर रहे हैं थ्रू आउट द सीज़न, साथ उनके कप्तान मौजूद हैं, तो एक अच्छा ओवरऑल मौका है पाकिस्तान के लिए मज़ीद इस बर्तरे को सब्त करने का और सिर्फ एक फॉरगॉन कंक्लूजन बनाने का फतह को। अच्छी गेंद, जोरदार अपील, और अंपायर के ख्याल के मुताबिक गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी। जोरदार अपील कुमारी की जानिब से, बड़ा क्लोज शाउट था ये, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहती थी और बड़ा ही क्लोज शाउट था। शायद पिच आउटसाइड हुई हो अकील, वरना तो मुझे इसमें कोई कबाहत नजर नहीं आ रही। ये तो बहुत ही बार पिच हुई थी, मेरे ख्याल से कॉम्पेंसेट कर दिया या अंपायर को बताया कि ये होता है लेग स्टंप के बाहर पिच होना। खुद ये नेचुरल है कि बॉलर तो खुश नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन आफरीदी साहब के ख्याल के मुताबिक ये लेग स्टंप के बाहर थी। बॉर्डर लाइन केस लगता है, मजीद देखेंगे स्वीप प्ले को। मुताद कर दिया दूसरी तरफ बिस्मा मारूफ को और अच्छी बॉलिंग की है टाइट लाइन और लेंथ के साथ, और ये देखते हुए कि अपनी क्रीज पर वो जमी हुई हैं। ये गेंद जो कि अब पिच हुई है, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक इट वाज अ वेरी क्लोज कॉल और इधर उधर दोनों तरफ जा सकता था डिसीजन। राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन क्रीज पे पाकिस्तान के लिए 96 पर एक अच्छी पोजीशन पाकिस्तान की। अगर ये डिसीजन दे दिया जाता तो शायद थोड़ा जान आ जाती मैच में। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी अली कह रहे थे कि मैं क्लोज गेम चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान अच्छा फिनिश करे और अगर 10 ओवर पहले फिनिश करे तो फिर उससे ये होगा कि जो 250-60 के हदफ की हम बात करते रहते हैं अक्सर, हमें लगेगा कि पाकिस्तान इस पोजीशन में आ गया कि वो अचीव कर सकता है। और एक रन हासिल किया इस दौरान, क्योंकि अब जो मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही है अकील, जो भी अभी वर्ल्ड कप में भी हमें नज़र आया, 250, 60, 70 ये एक आम स्कोर है जो अब ख़वातीन हासिल कर रही हैं, इवॉल्व कर गई उनकी गेम। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की भी गेम इवॉल्व करे और अब भी अंडर बिस्मा ये लग रहा है कि ये इवॉल्व कर रहे हैं। ख़ासतर आज जो ये मैच नज़र आ रहा है वनडे, उसमें पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी अभी तक परफॉर्मेंस दी है। आगे का नहीं कह सकते, अभी तक बड़ी अच्छी है। सिंगल के साथ सुगंधिका का एक अच्छा ओवर मुकम्मल हुआ जिसमें अपील की, बैट्समैन को बैकफुट पे धकेला, 3 रन दिए 98 पे 1। रिलैक्स्ड आफ्टरनून कराची में, जहां पर हफ्ते का बिल्कुल वस्त है और ग्राउंड के वस्त में एक्शन जारी। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम्स इस ऑल इम्पॉर्टेंट वुमेन वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप के पहले मैच में मद्दे मुकाबिल, जिसके साथ ही इस लीग की शुरुआत हुई है। पाकिस्तान के लिए अच्छा मौका है क्योंकि टॉप 6 टीम्स ने डायरेक्टली क्वालिफाई करना है आने वाले वर्ल्ड कप के लिए, और ये बड़ी टाइट रेस है। अगर हम टॉप टीयर में देखते हैं जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ अब इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जैसी टीम्स आती हैं, और वहाँ पर अगर आप डायरेक्ट क्वालिफाई करने में कामयाब हो पाते हैं तो बजाते खुद एक बड़ी कामयाबी होगी। कविशा दिलहारी अपने तीसरे ओवर के लिए। अच्छी गेंद, अच्छी लेंथ पे गेंद कराई। आज श्रीलंकन स्पिनर्स ने अभी तक वो लेंथ हासिल नहीं की जो वो T20 में उन्होंने हासिल की थी, और जिस तरह पाकिस्तान के बैटर्स को मुश्किलात में डाला था, वो लेंथ जो आगे लेंथ होती है आज वो हासिल नहीं हुआ। और कई दफ़ा शॉर्ट डिलीवरीज की जिसका पूरा फ़ायदा उठाया
पाकिस्तान के बैटर्स ने कट किया, कवर ड्राइव किया, बैकफुट पे पंच किया, तो तमाम किस्म की शॉट्स लगाएं, क्योंकि लेंथ अकील की होती है स्पिनर के लिए। अगर आप पीछे गेंद करेंगे तो आपको मार लगेगी, और थोड़ा सा आगे करेंगे तो आप जो है अपने आप को चांस देंगे। अगर बहुत ही आगे कर देंगे, ओवर पिच करेंगे, तो फिर भी आपको मार लगेगी। तो एक बहुत ही कम सा एक जगह होती है। श्रीलंका की स्पिनर्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने ज़्यादा फ्लाइट भी दी है और कंडीशंस के शायद बेहतर फ़ायदा उठाया है। जब आपको जीत हासिल नहीं हो रही होती तो फिर आप दीगर जो मुस्बत इलामात होती हैं उस पर अपनी निगाह डालते हैं। और इसमें चूंकि श्रीलंका की टीम एक बड़े अरसे के बाद इस सीज़न में क्रिकेट खेलती हुई रीग्रुप होकर नज़र आ रही है, तो शायद बहुत ज़्यादा उनकी टीम की मैनेजमेंट की तवक्कुआत होंगी भी नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो अपने लिए वो एरियाज़ फोकस कर सकती है जहाँ पे वो इम्प्रूव भी कर सके। बहुत क्लोज आई रखी हुई है पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक वाइस कप्तान और अब हमारी को कमेंटेटर मरीना इकबाल ने। और साथ किसी को समझा भी रही हैं, जो रिसीविंग एंड पे है वो कुछ समझना चाह रहे हैं कि नहीं इस बात के हवाले से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बताने में फुल इंटेंट है एटलीस्ट। मरीना अमूमन इतनी एनिमेटेड होती नहीं है, और आज इस डिस्कशन में काफ़ी एनिमेटेड लग रही है वो। मुतमईन नहीं नजर आ रही, क्योंकि आगे से जो जवाब आ रहे हैं वो उसमें इसके बाद उन्होंने कहा उसके हाल पे छोड़ दिया है। अब मैं इसको कुछ नहीं समझा सकती। शुक्र है मैं मानी हूँ, वरना मुद्दा मुझ पे आता। एक और बड़ी वाइड जिसके साथ पाकिस्तान ने अपना एक माइलस्टोन मुकम्मल किया। सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर आधे ओवर मुकम्मल करते ही पाकिस्तान 100 रन तक पहुंच पाया है। मजीद सहूलत हासिल होगी बिस्मा मारूफ को, जो कि ये शॉर्ट सिलेक्शन में कुछ आज मोहताज नज़र ज़रूर आ रही हैं, लेकिन बहुत बड़ा आस्क भी नहीं है, फ़ायदा उठा सकती हैं इस कंडीशंस का मूविंग फॉरवर्ड यहाँ से जल्द हासिल करने के लिए इस आसान टोटल को। और इस सीरीज़ में बिस्मा मारूफ ने बड़े फैंस बनाए हैं, और मैं उनमें से एक हूँ जिन्होंने मुझे अपना फ़ैन बना लिया, बिकॉज उन्होंने बड़ा अच्छा शेपर्ड किया T20 सीरीज़ में भी, और अब आज भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेल रही हैं। अच्छी शॉट, लेकिन एक ही रन हासिल होगा। और एक रडर की तरह उन्होंने शेपर्ड किया मुश्किलात में से अपनी टीम को, इवन T20 में भी और आज भी। तो ये एक, चाहे उन्होंने 100 बनाए या नहीं बनाए, बड़ी डिस्कशन हो रही थी थोड़ी देर पहले, बेसिक बात है कि वो अपनी टीम को जिताती हैं। और ये बड़ा अच्छा मरीना ने कहा कि 100 से क्या फ़र्क पड़ता है, टीम को जिताना मेन चीज़ है। काविशा दिलहारी का ओवर मुकम्मल, जिसमें 3 रन दिए उन्होंने। पाकिस्तान 101 पे। छिहत्तर रन की शराकत हो चुकी है। जल्द विकेट गिरने के बाद लग रहा था कि शायद कोई ट्रबल आ जाए, लेकिन एंजॉय करते नजर आ रही हैं दोनों सुपरस्टार्स इस वक्त बैटिंग को। खासतौर जिस अंदाज से सिद्रा अमीन ने कमान संभाली है, 5 चौके लगा चुकी हैं वो अपनी इनिंग्स में, जबकि उनका साथ दिया बिस्मा मारूफ ने इन 2 दिलकश चौकों के साथ गेंदों को जल्द पिक किया और गैप में खेलती हुई नजर आई। इसके साथ साथ सिद्रा अमीन की ये कवर की जानिब खेले गए शॉट्स दीदा जिप, और जिसके बाद से एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ इस टोटल तक पहुंचा दिया है। पाकिस्तान के लिए सादा मसाइल नहीं है, ऑलरेडी 100 के बियॉन्ड जा चुका है। अगर श्रीलंकन स्पिनर्स बेहतर बॉल करती तो शायद ये मैच फंस सकता था, लेकिन क्योंकि उनकी लेंथ जैसे अभी हम बात कर रहे थे डिज़ायरेबल नहीं थी, तो इसलिए मैच जो है, और बड़ा अच्छा पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड भी किया, 1 रन हासिल किया। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत आला है जब बिस्मा होती है, और ये ओवर थ्रोज भी मिलेंगे पाकिस्तान को। रनिंग बिटवीन द विकेट इज़ बहुत ही वेरी गुड। एंड उसके बाद जो जिस तरह फील्ड में भी फील्ड प्लेसिंग थी बिस्मा की, प्रेशर डाला शॉर्ट कवर से, शॉर्ट मिड विकेट से, वो भी बड़ा आला उनकी एक एग्रेसिव कैप्टनसी थी। तो काफ़ी अच्छे साइंस पाकिस्तान के लिए। वाइट बॉल, और जब आप एक
वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में अपनी टीम को लीड कर लेते हैं और इसके साथ साथ ये ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड अपनी एक्टिविटीज़ के बायस बड़े पॉजिटिव अंदाज से नज़र आई खबरों में, तो उसकी परछाई कहीं ना कहीं आपके करियर पर ज़रूर पड़ती है, जिस अंदाज से वो कॉन्फिडेंस और मैच्योरिटी हासिल होती है। जब इनको कप्तान बनाया गया था तो उस वक्त भी काफ़ी नौजवान थी, अभी भी चूंकि इन्होंने अपने करियर को बड़ी जवान उम्र में शुरू कर लिया था, ये 15-16 साल की उम्र में ज़्यादा एक्शन में नज़र आने लग गई थी, तो उस वजह से ऑलरेडी एक्सपीरियंस इनके पास मौजूद था। और अब ये अच्छी बात है क्योंकि जो गैप हम श्रीलंका की टीम में देख रहे हैं ट्रांजिटरी मोड में, वो शायद पाकिस्तान को ज़्यादा ट्रबल नहीं देगा, क्योंकि एक के बाद एक करके जो टैलेंट है वो एक दूसरे के साथ कदम बना के आगे आ रहे हैं। 48 पे नॉट आउट है सिद्रा। और जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के काफ़ी क्लोज मैचेस हुए, पाकिस्तान शायद 2-3 मैच ऐसे थे जो पाकिस्तान जीत सकता था, तो लग रहा है कि यहाँ पर जो गलतियाँ वर्ल्ड कप में हुई उनसे सीखा गया और इवॉल्व करने की कोशिश की जा रही है और गलतियों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, एरियाज़ को करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। श्रीलंका इतनी बड़ी टीम नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ बेहतरी ज़रूर नज़र आ रही है। बहुत ही बाहर कर दी गेंद ऑफ स्टंप के, जो कि शायद तवक्को नहीं कर रही थी और गेंद दूर जाती चली गई, जिसके साथ एक और बेहतर ओवर पाकिस्तान के लिए मुकम्मल। 105 पे। मुनीब अली एक मरतबा फिर एक अच्छा आगाज़ हासिल करने के बाद उस पर एक बड़ी इमारत कायम ना कर सकी, जबकि सिद्रा बीन एक अहम इनिंग्स खेलते हुए अब इसमें मारूफ ने अपनी मैच्योरिटी के साथ साथ निभाया है और पाकिस्तान के पास जो बैटिंग ऑर्डर मौजूद है उसमें ज़्यादा मसाइल होने नहीं चाहिए। पार्टनरशिप ऑलरेडी इनकी अप्रोच करती हुई एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ 80 को। स्पिनर्स दोनों जानिब से एक्शन में हैं और उन्होंने मोमेंट्स भी क्रिएट किए। अच्छी गेंद अच्छी लेंथ पे पड़ी, इसको डिफेंसिवली खेला बिस्मा ने। और पार्टनरशिप्स जो हैं किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट में अकील एक बहुत बड़ी अहमियत होती है, चाहे वो टेस्ट मैच हो या वनडे या इवन T20। स्वीप शॉट टारगेट किया है और फील्डर के टॉप से खेलने के लिए गई, जब खेला तो भरपूर। पाकिस्तान की कप्तान बिस्मा मारूफ का तीसरा चौका, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन ड्राफ्ट करके उसको मोड़ दिया ऑन साइड पर। एक शानदार चौका हासिल। बहुत ही बेहतरीन शॉट, बॉल की लाइन एंड लेंथ को कवर करते हुए लेग साइड पे अपिश तो था, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर और अच्छा चौका हासिल किया। शायद दोबारा अपने फास्ट बॉलर की जाने वापस मुड़ना पड़े श्रीलंका को, क्योंकि मुतमईन नजर आ रही हैं स्पिनर्स की इन बॉलिंग के दौरान और अपनी शॉट्स के लिए गैप तलाश करती दिखाई देती हैं पाकिस्तान की बैटर्स। एक मरतबा फिर सिद्रा अमीन जो कि एक अच्छा साल गुजार रही हैं रन्स के हवाले से, वो सामना करेंगी। शॉट सिलेक्शन उनकी शानदार नज़र आई, गेंद को जल्द पिक करती हैं, गैप में खेलती नज़र आती हैं। अब इनके लिए पैक की हुई ऑलमोस्ट ऑफ साइड की फील्ड। अकील बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कि लेंथ बड़ी जल्दी पिक करती है सिद्रा, और जो भी प्लेयर लेंथ जल्दी पिक करता है वो कामयाब प्लेयर होता है। बिकॉज किसी भी बड़े प्लेयर को आप देख लें तो लेंथ को पिक करना उसकी खासियत होती है, चाहे वो कोई खातून हो या कोई मर्द। एक और ओवर आसानियां लाता हुआ पाकिस्तान के लिए 7 रन बने काविशा के ओवर में। 113 पे 1।
अब 28 ओवर्स का अख्तिताम हुआ। सिद्रा अमीन बदस्तूर 49 में नॉट आउट। 7 बॉलर्स को आजमाए हैं अब तक और एक मरतबा फिर स्पिनर्स पे निसार कर रही हैं श्रीलंका की कप्तान। खुद भी गेंद करने के लिए आई महज 1 ओवर के लिए, लेकिन खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो पाई और शायद एक मरतबा फिर इनको अपने फास्ट बॉलर्स की जाने वापस मुड़ना पड़े जल्द या बदेर विकेट्स निकालने के लिए। बड़ी तादाद में एक्स्ट्रास भी इस इनिंग्स पे मौजूद आ गई हैं खुद। अब कप्तान अपना दूसरा ओवर करने के लिए। अकील अगर आज 50 रन हासिल किए सिद्रा अमीन ने, तो ये इस सीरीज़ की T20s मिलाकर और ये चौथे मैच की ये पहली निफ्ट सेंचुरी होगी, तो ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टैट है। एक और क्विक सिंगल जो कि जल्द पिक कर लिया था। दोनों के दरमियान हची मांगी नजर आती है, जिसके बाद उन्होंने हालांकि एक मौके पर बड़ा रिस्की नजर आया लेकिन आसानी के साथ इन द एंड मुकम्मल किया। जी हाँ, ये भी समझ करता है कि बड़ी तादाद में रन्स बन नहीं सके, ना सिर्फ T20 इंटरनेशनल में। श्रीलंका पहले बैटिंग करते हुए और अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान चेस कर रहा है। फील्ड सिद्रा अमीन के खिलाफ एक मरतबा फिर पैक किए ऑफ साइड पर, एक फील्डर को भेजा है बाउंड्री लाइन पे कवर्स की। कवश दिलहारी मौजूद, जबकि दायरे के अंदर 2 हैं और इसके साथ साथ एक फील्डर को लेने का फैसला किया है बैकवर्ड पॉइंट गली की जानिब। पॉसिबली ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद रखेंगी क्योंकि अब तक शॉट खेलती नजर आती हैं कवर्स की तरफ। शॉट गेंद कर दिया, बैकफुट पे जाके इस गेंद को टर्न कर दिया 1 रन बनाने के लिए, और बल्कि दूसरे के लिए भी वापस नजर आएंगे इस फंबल के साथ। और इसी के साथ सिद्रा अमीन के 50 रन मुकम्मल। लाहौर की शाइनिंग स्टार सिद्रा अमीन इस साल में रन्स के अंबार लगाती हुई पाकिस्तान और श्रीलंका किसी भी टीम की जानिब से इस टूर में स्कोर की गई पहली 50 और रन्स के आने का सिलसिला जारी। ब्रिलियंट मोमेंट सिद्रा और पाकिस्तान के लिए। क्या शानदार 50 रन सिद्रा ने अभी मुकम्मल किए। बहुत ही काम कैलकुलेटेड इनिंग्स थी, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक्स इसमें नजर आए और वेल डिजर्व 50। गो के आपको शायद बहुत ज़्यादा क्लोज मैचेस ना नजर आए, लेकिन दोनों टीम्स के लिए खासतौर पर पाकिस्तान के लिए इन मोमेंट्स को एंजॉय करना बड़ा ज़रूरी है। चाहे वो तूबा की T20 में बॉलिंग हो, गुलाम फातिमा ने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और अब सिद्रा अमीन जो कि पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर का बैटिंग का इंतहाई अहम सतून है। अगर वो रन्स अपने पास रखती हैं तो ये बड़ा माने रखेगा उनके अपने करियर और पाकिस्तान के लिए। और इस बात से कहता नजर कि जितनी स्ट्रेंथ श्रीलंका के पास मौजूद है, जो शॉट सिलेक्शन दिखाई है और जिस मैच्योरिटी और रिस्क फ्री स्टाइल से बैटिंग करती है, वो काबिल दाद है ऑन पार्ट ऑफ सिद्रा। जी हाँ, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप दोनों प्लेयर्स ने बनाई यहाँ पर, और पार्टनरशिप की होती है किसी भी क्रिकेट मैच के लिए, उसको जीतने के लिए। और अच्छी बॉल अंदर आई, 117 पर 1। दोनों प्लेयर्स ने बड़ी समझदारी से, अक्लमंदी से ये जो पार्टनरशिप है उसको बनाया, रिस्क फ्री खेला, लेकिन बेहतरीन शॉट्स भी खेली इसमें, और अच्छा रन हासिल किया। इसी चीज़ की ज़रूरत होती है अगर आपने मैच जीतना है और एक अच्छी पोजीशन में आना है, तो पार्टनरशिप ज़रूरी है। सिद्रा अमीन ने इब्तिदा से ही मेला लूट लिया कराची में खेले जाने वाले इस पहले वनडे इंटरनेशनल में चेस करते हुए कवर्स की जानिब उनके शॉट जिनको जल्द पिक किया, गैप तलाश किया और पूरी रेंज दिखाते हुए, चाहे शॉर्ट बॉल हो या इसके साथ और पिच डिलीवरी, सबको उन्होंने मेरिट के हिसाब से खेला। और बिस्मा मारूफ ने भी भरपूर अंदाज से साथ निभाया है अब तक की इस बैटिंग में सिद्रा अमीन की, जो कि टॉक ऑफ द टाउन है।
5 चौके इस दौरान उन्होंने लगाए और साथ साथ बड़े खूबसूरत अंदाज से गैप्स क्रिएट करती हुई नजर आई। लाहौर से ताल्लुक रखने वाली शानदार शाइनिंग स्टार 30 साल सिद्रा के रन्स का सिलसिला जारी। अच्छी गेंद, इसको क्वाइटली खेल दिया। 118 पर 8। मज़ीद रन हासिल होंगे। श्रीलंका की हम फॉर्म की बात कर रहे थे, आगे पाकिस्तान जो उनका रिकॉर्ड है वो बिल्कुल चेंज हुआ और इनकी अगर हम 2017 के वर्ल्ड कप के बाद से भी लीना परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो बिल्कुल भी काबिल ज़िक्र नहीं दिखाई देती। बहुत कुछ काम करने को बाकी है। 25 मैचेस इन्होंने इस दौरान खेले हैं, इस दौरान सिर्फ 2 में इनको फतवात हासिल हो सकें। तो इतना अगर आप पोजीशन में चले जाते हैं तो उसके बाद शायद इम्प्रूवमेंट ही आपको नज़र आ सकती है, जो कि इनके लिए एक वाहिद पॉजिटिव साइन है, लेकिन इसके लिए भी बहुत कुछ बात करनी पड़ेगी। अच्छी गेंद, बॉल अब थोड़ा सा टर्न करना शुरू किए, थोड़ी सी लेंथ भी श्रीलंकन स्पिनर्स की बेहतर हुई है, जो कि शुरू में जैसे हमने पहले बात की कि लेंथ उनकी इतनी अच्छी आज नहीं पड़ रही थी, या ओवर पिच बॉल हो रही थी या शॉर्ट हो रही थी, जिसका भरपूर फायदा उठाया पाकिस्तानी बैटर्स ने। एक मरतबा फिर खेलते रन लेने के लिए दौड़ने की स्ट्रेटजी जो कि क्लियर नजर आ रही है बिस्मा के जहन में, वो उनको 40वें रन तक पहुंचा गई। रोल्स को निभाया है या दोनों बैटर्स ने अब तक इस शराकत में, जो कि एक और मुस्बत साइन नजर आता है। और दूसरी तरफ श्रीलंका के लिए जो बहुत कुछ काम करने को बाकी है, उसमें से एक ना सिर्फ रनिंग बिटवीन द विकेट्स बल्कि प्रेशर डालना और विकेट को हासिल करना है, सब कुछ आई एम श्योर कि श्रीलंका के कोचिंग स्टाफ और शांत लग रखने को करना पड़ेगा। अच्छी शॉट गैप में और 4 रन हासिल हुए। बेहतरीन शॉट। आज पाकिस्तान के बैटर्स ने बहुत अच्छी शॉट्स लगाई, खासकर सिद्रा अमीन ने ऑफ साइड का बहुत ही बेहतरीन एग्जिबिशन किया शॉट्स का। बड़ा कम गैप मौजूद था और उसको उन्होंने हालांकि हवा में खेला, लेकिन बड़ी ब्रेवरी के साथ एक्सप्लॉइट किया। विद द विंड जाता हुआ शॉट, पीछे रोकने के लिए कोई मौका मौजूद नहीं था। छठा चौका सिद्रा अमीन का। पाकिस्तान 124 पे। श्रीलंका की कप्तान शामिरा अताबतू को अपॉइंट किया गया अब से 1 सीज़न पहले, और इनके लिए बहुत कुछ इम्प्रूव करने को होगा, क्योंकि जो फॉर्म हम जिसकी बात कर रहे थे उसमें सिर्फ ये 2 मैचेस जीतने में कामयाब रही हैं 2017 के वर्ल्ड कप के बाद से। इस पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त ये दोनों टीम्स डिजर्व करती हैं एक ड्रिंक्स ब्रेक, सो ड्रिंक्स ऑन द फील्ड।
शानदार पार्टनरशिप जारी, जो कि अब किसी भी लम्हे क्रॉस करती नजर आ रही है 100 रन्स के इस जादुई हिंसे को। सिद्रा अमीन ने कमान संभाली और बिस्मा मारूफ भी अपनी तेज रनिंग के जरिए से, गो के इस 40 रन के सफर में उन्होंने महज 3 चौके लगाए हैं, लेकिन वो कैचअप करती नजर आ रही हैं। इसमें क्लियरली डोमिनेट किया पार्टनरशिप के शुरुआत से ही सिद्रा अमीन ने अपने इन दिलकश चौकों के जरिए से, जिसमें उन्होंने बैक टू बैक ये चौके लगाए कवर्स की जानिब, और उसके बाद बिस्मा मारूफ भी जागी और उन्होंने खासतौर पर ये शॉट जो कि ओवर द टॉप लगाया वो देखने से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन सिद्रा अमीन के चौकों के सिलसिले को कोई ना रोक सका। फास्ट बॉलर्स भी आए दरमियान में और ख़ास तौर पर श्रीलंका के स्पिनर्स इस पर ब्रेक लगाने में कामयाब नहीं हुए, और बड़ी मैच्योरिटी के साथ सिद्रा अमीन ने अपनी इस बैटिंग के जरिए से 50 रन तक पहुंची हैं, जबकि पार्टनरशिप 1 रन की कमी से मौजूद है 100 रन के हिंसे पे। शानदार पार्टनरशिप, बहुत ही बेहतरीन आज स्ट्रोक्स नजर आए खासकर सिद्रा की जानिब से, और बिस्मा अपना काम एंड कलेक्टेड रोल उन्होंने बेहतरीन प्ले किया। अच्छी गेंद, सो कवर में खेल दिया। हमारे एक बड़े मशहूर कमेंटेटर थे, वो कहते थे पार्टनरशिप 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 3 दफ़ा, यानी कि इतनी ज़्यादा अहमियत होती है पार्टनरशिप की। जी हाँ, जैसे कबूल है कबूल है कबूल है, बिल्कुल। तो पाकिस्तान की टीम को तो क्लियरली ये कबूल है नज़र आ रहा है, क्योंकि इसी के साथ 100 रन तक पहुंच पाई हैं। लेकिन श्रीलंका शायद इस कबूलियत से दूर रहा है। फ्लाइट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और फुल टॉस भी मिली, लेकिन उसके लिए भी लगता है कि तैयार नहीं थी। अपने लिए कुछ मोमेंट्स क्रिएट करने चाहिए बिस्मा को भी। एक तो आई एम श्योर कि वो 50 रन जिसके करीब पहुंच रही हैं उसको वो लोग फॉरवर्ड कर रही होंगी। अच्छे 50 होंगे बिस्मा के लिए, डिजर्व करती हैं। सारी सीरीज बड़ी अच्छी खेली है, अपनी टीम को जिताया है, कलीदी किरदार अदा किया है विक्ट्रीज में अभी तक, तो थॉरली डिजर्व करती हैं 50 रन। रिलैक्स अंदाज से इस पार्टनरशिप को लेकर चल रही हैं, एंजॉय करती नज़र आती हैं बिस्मा और सिद्रा अमीन, जो कि इंतहाई माने रखता है कि अगर आप गेम को किसी भी अपने काम को एंजॉय करें तो आप ज़्यादा बेहतर अंदाज से परफॉर्म कर सकते हैं। फील्ड को अब एक मरतबा फिर जो कि हम देख रहे हैं शराकत के दौरान कि पैक रखा हुआ है ऑफ साइड की सिद्रा के लिए, ख़ास तौर पर उनको गैप नहीं देनी जिसके लिए वो बाउंड्री की जानिब जा सकें। और अकॉर्डिंग टू द फील्ड बॉलिंग के साथ ओवर का अख्तिताम किया, 2 रन दिए कप्तान ने इस ओवर में। पाकिस्तान जीत की डगर पे 126 पे 1।101-run partnership between Sidra and Bisma has been the distinction between the two teams. Cruising towards the victory, only 44 runs required. Got a good decent crowd in, watching their favourite players in the action. A very relaxed Pakistan camp. Kavisha Dulari will continue. Off the back foot. Strike rotation has been the summary of this partnership. Shah Faisal. Absolutely. That strike rate, 102 of 140 deliveries will indicate that. Been plenty of good strokes, but they made sure that left-hand, right-hand combination gives constant headaches to the Sri Lankan team and their skipper. This has been one magnificent partnership so far.
She likes to stay on the back foot. Not a tall girl, not muscular, but times it to perfection. We've seen those plenty today. The strokes effortless towards the boundaries. Got the sweep as well. Perfect package. Her offside play has been magnificent today. Here's that peculiar style where she just presses forward and then clears the front leg to open up her arms and open up that offside for her. Plenty of gorgeous strokes. And in partnership with skipper, they've almost taken the game away from Sri Lanka. Soft hands yet again. Very comfortable between the wickets, these two. Apart from few run-out chances, they haven't given anything to the Sri Lankan players. If you look at their bowling performances, what different they could have done. I think that was a consensus among us that at the break they were about 30 to 40 runs short and they needed to take wickets at regular intervals. They failed to do that because there weren't enough penetration in the attack, and it was expected that the wicket will keep slow and low, but we haven't seen that prodigious turn that we saw earlier in the innings from Ghulam Fatma, and probably that's the X factor they're missing, some wrist spin. And also you have to give credit to the Pakistani batters as well. We'll come back and continue that. Pakistan 129 for 1. Pakistan realized very quickly that to keep Sri Lankans at bay, they don't have to give away any cheap wickets. And after that early blemish by Maniba, these two have really dug in deep, used all their experience. And like you said, other than a few half chances with run-outs, they haven't offered anything to the Sri Lankans. So all credit to these two. Sri Lankan skipper searching for wickets. They want to break this partnership. Straying down the leg. They haven't really actually created any sort of pressure around these two. They've given away easy singles. This is holding its line. Ah, full toss. That's a no ball. Free hit for Sidra Amin. And that's the reason they couldn't build any pressure. There haven't been many overs where they could string a sequence of a couple of overs together and keep the pressure on. They haven't been able to maintain a good bowling partnership. So even if one bowler was doing well, runs were leaked at the other end. That is a free hit. Field can be changed though because the striker has changed. Look at that. Way over her waist. 3 sweepers on the onside. Just the one fielder in the ring behind square. There's a sweeper on the offside as well. Down the track. One bounce. They'll try to push for double. No. They've got the protection there. We have to give credit to Bisma and Sidra Amin. They understand the role. They know that these are the opportunities where they can score their runs. It's not a big target to chase down, but an opportunity to improve their averages as well. And overall, it looks more compact team. Well, very ambitious shout. That pitch way outside the leg stump. But Sri Lanka, like we mentioned, haven't had a sniff. They're desperate. Probably got the inside edge as well. The keepers love to go up, right? It's giving her some room. It's all about just nudging and nicking around.
36 required. From here, these two will be disappointed if they can't get the team over the line. Like you said, international runs, it never comes easy. So if you get yourself into a position like this, you have to capitalize. Get yourselves a nice not out and a comprehensive win for the team to get the ICC championship and the first win under your belt. Has been very strong in this area. You have taken some gloves on. How chirpy were you behind the stumps? I think it's built in with the wicketkeeper's DNA. You can't help but be chirpy because you have to lift the whole fielding side, and doesn't mind really having a go at the opposition as well. Why not? Oh sure. Did you ever pick up a fight with someone? Not a fight, but a lot of batsmen got wound up real bad and ended up losing their wickets. Played a lot of three-day crickets and with the ring of fielders close to the bat. That's wide. How about appealing for no reason? Where do you stand? Everything that hit the pads almost seemed out from behind the stumps. And every time you get given out in front of the stumps, you didn't like it. Good sound. Misfield allows Sidra to steal another single. 33 overs gone. Pakistan 137 for 1. This is becoming a little bit of a fortress for Pakistan. 2 ODIs, 2 wins, and 6 wins in T20Is out of the 8 they played here at this venue. Lucky ground for the girls in green. Let's schedule every series here in this venue. Like you mentioned previously, a lot of their training camps are held here, so the girls are pretty familiar with the surroundings and of course the wicket. It's just a matter of time now. They're pushing for the second one. Sidra Amin comes, but fumble down at the deep fine. Allows the ball to roll over the boundary. They've given up. As the first signs from Sri Lankan team that they really think there's no coming back from them. They've tightened the line on Sidra Amin because of her offside play, but she's now brought out the sweep shot to good effect. But that's elementary. That should have been stopped. They have been so good in the field, but now the heads are dropping. Kept her eyes on it. Well, that's what you need. You need to play against the plan of the bowler. They're coming straight at her. She's got a couple of tricks up her sleeve. It's good intelligent batting. Got to react to the situation, and Sidra Amin has done it brilliantly today. .66 of 99. It's been a very clean innings from her. That's what you want to see more often from the players coming in. Taking responsibility and making sure that they take the team over the line. Sweeps again, but straight to the fielder. That's a good test for Sidra Amin as well. Like we said, the Sri Lankan bowlers, they've really figured out where's her strong area, so they're coming up with plan B. And so far so good from Sidra Amin. It's more of a practice for her. In her early days, she was very dominating towards the leg side, but then she worked on herself, on her skill set, and now probably she's find that perfect balance. Still, as far as international cricket is concerned, she need more range of shots. But it looks like she's struggling. Tired.
They fielded for almost 50 overs. She had to come in quite early, so it's a test of her patience and her fitness as well. As easy as you like. 34 overs done. Pakistan 143, 144 for 1. Happy camp. Pakistan side. Salim Jaffer, the bowling coach, having a word or two with Sadia Iqbal. She's been brilliant today. Got a few fans, some working on the laptops, chit chat going on. It's 2 hours and 20 minutes that Sidra Amin has been in the middle. But now, focus shifts on Bisma Maroof. She's just 3 away from her 50. There's no sweeper deep on the offside. It's a long off and a long on. Bisma Maroof, calm and calculated, like always. Just taking the scoreboard, that's all they need. 26 required now. Careful on this occasion. No hurry whatsoever. Not at all. The only variation the Sri Lankans have shown in their bowling innings with the spin is just subtle variation in pace and flight. Not much turn for them. Down the track, chip set into the leg side. Just for 1. So again, as you mentioned, we haven't seen a lot of turn. Maybe because of the angle they bowl in and probably the pace. I haven't seen any spinner just trying to give it a flight or float it, trying to extract that turn Pakistan spinners were getting early on. 3 sweepers for Sidra on the onside. Will she go big? He's struggling a little bit. Generally the tendency is to rush to the finishing line. Will she just look at her skipper and do it in a calm way that Bisma is doing it? Ideally, Bisma would want her to carry the bat. She's done all the hard work. Just 25 more runs, Sidra. Fight it out. Now, had they got something on it, we'll have to wait. Glove or back of the bat, it flew over the head of the wicketkeeper. It's good for her that she's at the non-striker end now. She got herself cramped with her footwork for that sweep shot. That hands were going nowhere. And eventually she didn't make any contact with the blade. Just 2 runs shy from her 16th 50. Bisma Maroof, prolific batter and captain for Pakistan team. It's hard to break her. Slight adjustment in the field. Shot mid-wicket now, getting a bit straighter. She's pushing for 2. Will she get it? Will Sidra? No. It's well fielded in the deep. No run there. Moves to 49, Bisma. 35 overs gone, Pakistan 147 for 1. Stronghold of Pakistan. Impeccable batting from Sidra Amin and Bisma Maroof. It's never easy chasing. Wasn't a big total, yes, but they too have been exceptional out.
68 not out. Sidra Amin and Bisma on 49. The only hiccup for Pakistan was Muniba Ali yet again getting a start and couldn't really capitalize. Will be disappointed for sure. Nothing much to write home for the Sri Lankan bowlers, even their spinners. They couldn't come to the fore. Really, Pakistan didn't give them a chance at all. You have to say that. Kawisha Dilhari, pretty expensive. Atapathu as well. None of them could get a breakthrough. Just 1 run required for the 50. Kept low. Shandi now operating with the delivery. Only once Pakistan have won by 9 wickets or more in ODI. The early was against Ireland in Colombo in 2011. Did you play in that game? Searching for that one. Yeah, I remember that. It was a good game. Naina Abdi, if I'm not wrong, she was a high scorer. Still no run. Sri Lankans are making her wait. Just a word from Sidra Amin to remain calm. There it is. Bisma Maroof, 16th 50. And what a time and what a way to bring. Calm and calculated Bisma Maroof raises her bat. Has been brilliant in this chase. Throughout the series, her presence in the middle is very reassuring for the Pakistan changing room. Once again, leading from the front, Bisma Maroof is guiding this chase with calmness and a lot of skill. Plenty of determination and guts as well. Take a bow. Great knock. Just 22 needed. Down the track. They're dealing in singles. And that's a sensible way to do it. It's not easy. It's hot out there. It's humid. But that's what professional teams should do. Once they get the perfect platform, they have to make sure that they end up on a high with a dominating win. No run. 2 from this over. Just having a word or so. Manipali. 36 overs gone. Pakistan 149 for 1. Coach David Hemp having a word with Muniba. She started off nicely but would be disappointed to give it away. That's Bisma Maroof's 50. A lot of good timing, not a lot of power. On that occasion, she did use the power. Slog sweep, one of her go-to shots. But plenty of hard running between the wickets. And a wonderful knock. Oh, some bounce there. Yeah, surprised Sidra Amin as well. I think the time has come that Sidra Amin has realized she will have a dash to the finishing line. On the flip side, she's thinking to just carry her bat, and that would be a mature thing to do. Just 21 runs required now. Hard blade flashing. Clearly out of rhythm in the last 10 or so minutes. Sidra Amin, I think she's tired and she's lost her touch. It looks like it. That's more like it, allowing the ball to come to her rather than chasing it. Well, that's what professionalism is all about.
It's 20 runs needed. It will be a huge thing for her to carry the bat. On 70, she can go not out. Finishing the match, that's more important with the skipper. I'm pretty sure she's battling within her mind. Skipper Bisma can help her by striking a couple of boundaries and get the target close enough. Two of the fittest players of Pakistan team. They both have certainly set high standards for the fitness test. And you can see why. It's not easy out in the middle. Just one coming off this over. 37 overs gone. Pakistan 150 for 1. Is hot and sticky. Plenty of sweating. Plenty of spare pair of gloves. And as soon as they go out, they're left out there to dry, because they might be needed again. A lot of pair of gloves. I hope they're not running out of it. It has been exceptional performance from Pakistan. That's the real standard. That's how you differentiate as a team who ended at number 5 in the previous circle. Struggling a little bit to find a good connection. It's not easy. A lot of sweating, hot, humid. Yes, breeze is there, but you do get cramps. You do get a bit dehydrated. But it's mind over matter, mind over body. That makes you do extraordinary things. There you go, that breeze that Marina was talking about. They've backed that for her. No more runs on the sweep. They've protected it. Probably should go down the ground, just keep rotating the strike. Don't put yourself under pressure. Straight down the ground. Use of the feet. That's more like it. It's pretty evident that she's battling really hard. She's lost that rhythm, but to her credit, she don't want to give it away. She's trying. And so far, she's gone up to 71, just 19 needed. With Sri Lanka also, to their credit, they're making it hard for them. Just nudging around, dealing in singles. Definitely string of singles and plenty of dot balls. But I think the game is pretty much in the bag. Shantilakaratne, he knows it. That's more like it. Resolute plan. Just keep it clean and clear. 3 singles off this over. Pakistan moves to 153 for 1 after 38. Few PCB officials, security people as well. I have to give credit to them for keeping us safe, keeping the players safe. No run. They've packed that area for Sidra Amin. Got loads of run today in that area.
No connection. You're talking about the security and the arrangements earlier. You have to say it has been top-notch. Throughout this series, we've seen wonderful arrangements, and this is a very scenic little ground, ideal for these sort of competitions. Pushing for second one. I don't think Bisma will come. Godfield is patrolling the leg side boundary. It's a 16 required now. In talking about this, the arrangements and the venue here, we just saw how good Pakistan's record is here as well. Probably with cricket returning to Pakistan and post-COVID, we're going to see a lot of cricket on this venue. And look forward to Pakistan dominating here in years to come. Almost played it on. It's not easy to score off the back foot on this surface. Bisma Maroof 51 of 89 deliveries, 73. Sidra Amin still fighting her way out. Ah, Kaplo did well, Bisma. Sri Lanka would have been hoping for this to happen earlier and a lot more frequently, but two set batters in, it's not as much of a bother as opposed to a new batter. Ends with a single. Pakistan 155 for 1 after 39. पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका ही के खिलाफ अपना बेहतरीन चेस किया था, जिसका हमने पिछले इनिंग्स के दौरान भी तस्करा किया, जिसमें हमारी को कमेंटेटर जो कि अभी मौजूद थी, उन्होंने इनिंग्स की शुरुआत की बैक इन 2015। 245 रन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, 2 मरतबा 200 से ज़ायद, और नेदरलैंड्स के खिलाफ भी पाकिस्तान चेस कर चुका है। इसके साथ 9 विकेट्स के साथ कदमों का इस्तेमाल किया, एरियल रूट दिया बिस्मा मारूफ ने, और ज़बरदस्त अटैम्प्ट के बावजूद गेंद तक पहुंचने में कामयाब न हो पाई, और जख्मों पर नमक छिड़कते हुए श्रीलंका के ये गेंद चौके के लिए चली गई। अच्छी ब्रेव शॉट, नीचे आके फुल फेस ऑफ द बैट से ये अच्छी शॉट बिस्मा ने लगाए, और अब इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि बिल्कुल जीत करीब नजर आ रही है कि कोई भी शॉट्स खेली जा सकती हैं, और बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली है बिस्मा ने भी, और साथ उनके सिद्रा अमीन ने तो बहुत शानदार इनिंग्स खेली। दो 3 कदम नीचे आके शॉट लगाई, अब फील्डर कैच लेना चाहती थी लेकिन हो नहीं सका। पिछले ओवर में जो आपको एक पैक्ड ऑफ साइड फील्ड नजर आ रही थी, तो उस पर एक शेर याद आता है कि बहुत देर की मेहरबान आते आते, यानी कि इतनी देर लगा दी सोचते हुए कि वो आपके चिड़िया तो चुग गई खेत, और जब आप लाए ये क्लोज इन फील्डर, भाई पहले ले आते थोड़ा तो आपको फायदा हो जाता। हाँ जी, अब तो चिड़ियों के वापस घोंसलों में जाने का वक्त हुआ चाहता है। महज 2 चौकों या 1 बड़ी हिट और 2 सिंगल्स की दूरी पे पाकिस्तान फतह से, और जो बड़ी फतवात की बात कर रहे थे उसमें अगर इतना बड़ा मार्जिन, यानी कि इतने ओवर स्पेयर और 9 विकेट्स पाकिस्तान स्पेयर में रखते हुए कामयाब होता है। कदमों का इस्तेमाल अब सिद्रा अमीन ने किया है, और अगेंस्ट द विंड खेला, जिसके बायस वो बाउंड्री लाइन तक तो ना पहुंचा पाए इस गेंद को, लेकिन सेफ एरिया में खेला 1 रन के लिए। तो इस ओवर में तेज़ी के साथ चीज़ें वकूफ़ पजीर होते हुए, तो अगर 9 विकेट्स अपने बैग में रखते हुए 10 ओवर्स के अराउंड आप जीतती हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस भी देगा
ये पाकिस्तान की जो कि हासिल होती नज़र आ रही है साल की दूसरी ODI की फतह होगी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जमूत को तोड़ने के बाद वर्ल्ड कप में। जी हाँ, शानदार विक्ट्री होगी ये, क्योंकि ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। जब ये टारगेट मिला था तो हम सब महसूस कर रहे थे कि शायद श्रीलंकन स्पिनर्स पाकिस्तान के बैटर्स को अपनी लाइन लेंथ से, अपनी वेरिएशन से मैच फंसा सकें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनकी लाइन लेंथ भी कुछ अच्छी नहीं आज गई, लेकिन बहुत ही अच्छा शानदार खेल पेश किया पाकिस्तान के दोनों बैटर्स, बिस्मा और साथ सिद्रा अमीन। शानदार कप्तानी भी नज़र आई, फील्ड प्लेसिंग के जो की थी उन्होंने जब पाकिस्तान फील्ड कर रहा था। प्रेशर बना के रखा बिस्मा ने फील्ड प्लेसिंग के थ्रू, क्लोज इन फील्डर्स के थ्रू, और अटापट्टू वो प्रेशर ना बना सके। बिस्मा मारूफ ने देर से पार्टी को ज्वाइन किया, रन बनाने में भी उन्होंने स्लो स्टार्ट किया, लेकिन अब वो बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ रन्स बनाती नज़र आती हैं। अभी भी खासा वक्त है आज के दिन में, लेकिन इस मैच में लगता है कि अब ये आखिरी चंद गेंदें साबित होंगी। एक बड़ी हिट की दूरी पे पाकिस्तान फतह से, 10 ओवर्स अभी भी बाकी हैं। इस बीच में आई हैं उशादी राणा सिंह गेंद करने के लिए, जिन्होंने काम बिल्कुल टाइट बॉलिंग के साथ रखा था। बिनोका ने उनको रिप्लेस किया। और डेफ्ट टचेस भी अब नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी बैटर्स की जानिब से, ना सिर्फ बड़ी शॉट बल्कि डेफ्ट टचेस, बहुत अच्छी शॉट्स अब लगा रही हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ। सिर्फ 6 रन चाहिए पाकिस्तान टीम को एक बहुत बड़ी फतह हासिल करने के लिए। रीना, श्रीलंका की टीम के अगर पॉइंट नुक्ता नज़र से बात करते हैं तो वो भी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ है। बहुत बड़ा उनके पास शायद पूल नहीं है जिसमें से वो इंतखाब कर सकें, लेकिन अब तक उन्होंने पूरे टूर के दौरान, जिसमें टीम का कॉम्बिनेशन कमोबेश एक सा रहा है, टॉस जीत के पहले बैटिंग ही करने का फैसला किया। कोई बड़ा टोटल पुटअप कर नहीं पाई। रिवर्स स्वीप और 4 रन हासिल होंगे। बेहतरीन शॉट, गट्सी शॉट, और बहुत ही बेहतरीन इसको लेंथ को रीड किया और एक बहुत ही अच्छी रिवर्स स्वीप लगाई बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट से। 4 रन। बिस्मा के दरकश में क्या तीर मौजूद हैं उसका मुजाहरा करते हुए दिखाती हैं आखिरी लम्हात में। खुशाइंद बात यह है कि बड़े क्लीनली खेले, हालांकि कहने को एक रिस्की शॉट, लेकिन मुकम्मल कंट्रोल के साथ ज़मीन के साथ दबा के वो ये उल्टा स्वीप खेलने में कामयाब रही हैं और ऑलमोस्ट मिडल स्टंप से उन्होंने शॉट को कशीद किया। सिर्फ 2 रन की दूरी पे पाकिस्तान इस बड़ी फतह से। और टॉस की बात आप कर रहे थे, तो टॉस पे यकीनन आज डिफरेंट फैसला हो सकता था। विकेट भी हमें नजर आई कि दूसरी इनिंग्स में जब पाकिस्तान ने बैट किया तो विकेट ईजियर खेली। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की बॉलर्स ने बॉलिंग भी बड़ी अच्छी करी, स्पिनर्स ने, और विकेट की जानिब से भी उनको कुछ हेल्प मिली, तो यकीनन आज डिफरेंट डिसीजन कर सकती थी अटापट्टू। आने वाला ओवर हो सकता है आखिरी इस पहले ODI का। 2 रन की दूरी पे पाकिस्तान फतह से 168 पे। मुस्कुराहटों की बरसात पाकिस्तान के कैंप में, और क्यों ना हो मुसलसल चौथी फतह के करीब, और साथ ODI क्रिकेट में गो के पाकिस्तान वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करके एक फ़तह हासिल कर पाया, लेकिन वो एक दहाई के जमूत को तोड़ा वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ हासिल करता फ़तह के साथ, जो कि वर्ल्ड कप में इस पूरे अरसे के दौरान पाकिस्तान को हासिल नहीं हो सकी, और अब इस विनिंग मोमेंटम को बरकरार रखने के करीब सिद्रा के पास ये मौका है कि वो विनिंग शॉट्स को लगा सकें और फिटिंगली सम अप करें इस गेम को। ओ, खतरनाक अंदाज से खेलने के लिए गई, लेकिन मजीद इंतजार करना पड़ेगा पाकिस्तान को इस फतह के लिए। विनिंग शॉट खेलने की ख्वाहिश के साथ बैकफुट पे कट करने की कोशिश की थी, लेकिन ये गेंद शायद ज्यादा करीब थे कट करने के, स्टंप्स पे गई, और सिद्रा अमीन की शानदार इनिंग्स का यूं खात्मा। शानदार इनिंग्स, और इस तरह ये आउट हुई
बॉल जरा अंदर आई, उसको कट करना चाहते थे, लेंथ भी कट के लिए सही नहीं थी, लेकिन क्योंकि 1 या 2 ही रन रह गए थे फतह के लिए, इसलिए एक शॉट उन्होंने खेली और बोल्ड हो गई। 168 for 2. मोहम्मद सुहेल इस आसान तरीन मौके पर बैटिंग के लिए आई हैं जब फतह के एक कदम पीछे पाकिस्तान 24 साल बैटर ने रिप्लेस किया है सिद्रा अमीन को। और मजीद सहूलत हासिल होगी क्योंकि स्कोर्स अब लेवल हो चुके हैं। पाकिस्तान ने 1 विकेट को मजीद गंवाया, हालांकि ये एक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट होता अगर 9 विकेट्स बैग में रखते हुए फतह हासिल करता। अब लग रहा है कि ये भी तैयार भी हैं, एंटिसिपेट भी कर रही हैं पाकिस्तान की विक्ट्री। इस वक्त रन मैसर नहीं था। पाकिस्तान 1 रन की दूरी पे एक शानदार 8 विकेट की फतह से, और देखते हैं कि इस बॉल पर ये फतह हासिल होगी या नहीं। और मेरे फेलो कमेंटेटर ने पहले ही कह दिया कि नहीं, नॉस्ट्राडामस हो गए गोया के आप क्रिकेट के। चलें देखते हैं इस बॉल पे आप क्या कहते हैं अकील, होगी या नहीं होगी। आपने कहा कि होगी और नहीं होगी, बराबर हो गया मामला, लेकिन मुझे लगता है इस बॉल पे हो जाएगी और शानदार फतह होगी अकील। बहुत ही कंट्रोल से मैच खेला पाकिस्तान ने, पहले फील्डिंग में, फील्ड प्लेसिंग में, और ये पाकिस्तान के लिए एक शानदार फतह। 8 विकेट से पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया और शानदार बैटिंग की, इससे पहले शानदार बॉलिंग की और बहुत ही एक आला फतह जिसका आगे जाके पाकिस्तान को बहुत फायदा होने वाला है। मुसलसल चौथी फतह है इस टूर की भी, और साथ ओडीआई क्रिकेट की श्रीलंका के खिलाफ, जो कि डेट बैक करता है 2018 तक। पाकिस्तान ने इस विनिंग स्ट्रीक को बरकरार रखा है और गो के श्रीलंका के पास शायद ना सिर्फ ये कि फतह हासिल ना हो सकी, बहुत कुछ गेन करने को नहीं निकला, क्योंकि टारगेट ऐसा ज़रूर था कि जिसमें वो कुछ मोमेंट्स क्रिएट करता, लेकिन ये 1 वे ट्रैफिक रहा है कम से कम पाकिस्तान के चेज़ के दौरान। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि जब इन्होंने पहले बैटिंग की तो इस दौरान मिनी पार्टनरशिप्स पनपती हुई ज़रूर नज़र आईं जो कि गेम को बना सकती थी, लेकिन पाकिस्तान की गर्ल्स ने वहाँ पर कोई बड़ा टोटल नहीं बनने दिया और आसानी के साथ इसको चेज़ किया है। इस साल की ये दूसरी ओडीआई क्रिकेट की फतह वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में विक्ट्री हासिल की थी, और अब इस सीरीज़ की भी शुरुआत इस 1 साइडेड विक्ट्री के साथ की है। क्लिनिकल परफॉर्मेंस पाकिस्तान की हर शोबे में, बैटिंग तो समअप करती 8 विकेट्स के साथ, इसके साथ साथ जिस अंदाज से गुलाम फातिमा ने बॉलिंग की, पाकिस्तान की ओवरऑल सर्कल में फील्डिंग, बाउंड्री लाइन पर जो एफर्ट्स की गई, कोई ऐसा चांस नहीं था जो कि रायगा गया हो पाकिस्तान की इस फील्डिंग के दौरान, और इसके साथ साथ इंजॉय करता नजर आता है ये बंच, और सोने पे सुहागा साबित होगी ये विक्ट्री पाकिस्तान के लिए इस पूरे टूर के दौरान। हैप्पी कैंपर्स पाकिस्तान की टीम इंप्रेसिव विक्ट्री के साथ, उनकी कप्तान ने सिद्रा अमीन के साथ फ्रंट से लीड किया, आखिर तक खेली, और ये पूरी सीरीज उन्होंने शानदार तरीके से बैट किया। और जब कप्तान इस तरह फ्रंट से लीड करे अकील, तो मज़ा आता है, आपके जो फॉलोअर्स होते हैं उनको भी, और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छा है। एक्सपीरियंस मौजूद था पाकिस्तान के कैंप में जहां तक बैटिंग का सवाल है, और उसको भरपूर अंदाज से ब्रोकर लाया। मुनीबा अली ने भी एक मरतबा फिर अच्छी शुरुआत हासिल की, लेकिन बैट शॉट सिलेक्शन उनके आड़े आया, और एक नाम जोर शोर से जगमगा रहा है सिद्रा अमीन का, जो कि इनिंग्स के ऑलमोस्ट फिनिश तक मौजूद थी। एक और शानदार 76 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली, जबकि बिस्मा मारूफ 62 रन बनाने में कामयाब रही। सॉरी लुकिंग स्कोर कार्ड फॉर श्रीलंका, जहां तक उनकी बॉलिंग का भी सवाल है।
सिर्फ 2 विकेट्स इनको हासिल हो सकी आखिरी लम्हात में उस शादी को, जबकि इब्तिदा में विकेट हासिल की थी कलासूरिया ने, लेकिन वो उस पर डेवलप ना कर पाए। और पाकिस्तान की बैटर्स की आप शॉट्स देखें, क्या शानदार लेट कट किया, लेग साइड पर 4 रन हासिल किए, अप शॉट, और ये आउट हुई मुनीबा। शानदार कवर ड्राइव, कट शॉट, स्क्वायर कट किया, और ये बहुत अच्छी कट शॉट लगाई, मिड ऑफ के ऊपर से भी 4 रन। एक दफा फिर एक खूबसूरत सिब्रा अमीन की कवर ड्राइव, बहुत ही शानदार शॉट्स लगाई, खासकर ऑफ साइड को लेस किया अपनी बेहतरीन शॉट से। और फिर बिस्मा, इन्होंने लेग साइड को काव कॉर्नर पे अच्छी शॉट्स लगाई, और साथ साथ सिब्रा अमीन भी अपनी शॉट्स को इस्तेमाल करती रही और पाकिस्तान को आगे ले जाती रही। ये 4 रन जो बिस्मा ने हासिल किए, और ये शानदार रिवर्स स्वीप बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट, ये सिद्रा का आउट होने का मंजर, और पाकिस्तान ने एक 8 विकेट की शानदार फतह हासिल की। खूबसूरत शाम बनी पाकिस्तान के लिए। एक मरतबा फिर मुसलसल चौथा टॉस जीता श्रीलंका की कप्तान ने, लेकिन वो जो फैसला किया उनके हक में एक मरतबा फिर ना जा सका। हालांकि कविशा दिलहारी ने एक शानदार नॉक खेली, जिसके साथ उन्होंने रिकवरी दी श्रीलंका को। सिर्फ 1 रन की कमी से अपने 50 रन मुकम्मल कर पाई, और इब्तिदा में प्रसदानी और चमारी ने भी अच्छी बैटिंग की, लेकिन इनकी दीगर बैटर साथ ना निभा पाई। और शानदार बॉलिंग की गुलाम फातिमा ने आज वो सुपरस्टार रही हैं, 2 गेंदों पर 2 विकेट्स भी हासिल की, और साथ साथ फातिमा के हिस्से में 2, जबकि सादिया ने भी 2 खिलाड़ी को आउट किया। जवाब में पाकिस्तान ने 1 वे ट्रैफिक के साथ इस टोटल को अपने नाम किया, 8 विकेट्स को स्पेयर में रखते हुए, जिसमें सिद्रा अमीन की शानदार कंट्रीब्यूशन और पाकिस्तान की कप्तान बिस्मा भी 50 रन के हिस्से को अबूर करती हुई 62 नॉट आउट की शानदार शॉट खेलने में कामयाब रही। ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद इस मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए आपके मुंतजर होंगे अली यूनुस।
Here's the match summary. Sri Lanka winning toss and yet again batting, getting 169 runs. Pakistan in reply getting the 170 pretty easily. Let's now go to Ali Yunus for the presentation. Yes, we're ready with the presentation of the first Trans-Scope One-Day International between Pakistan and Sri Lanka. In the presentation party, I've got Asmavia Iqbal and Mr. Sadiq Mohammed, the former Test cricketer, with us. Thank you so much for being with us. Before we go on to the awards, I would request Ms. Asmavia Iqbal to present a shield to Mr. Sadiq. Now I would request Mr. Sadiq Mohammed to give away the player of the match. That goes to Ghulam Fatma for her brilliant spell of 4 for 21. गुलाम फातिमा बात करेंगे हमसे। बहुत मुबारक हो आपको, पहले भी हमने आपसे बात की, क्या डिफरेंट कर रही थी आप इस पिच पे? पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये कामयाबी दी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे होम सीरीज़ का एक फिश थी कि मैं होम सीरीज़ खेलूँ और अल्लाह ने मुझे इसमें कामयाबी दी। और अल्हम्दुलिल्लाह ट्राई मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रही थी, जो आता था मैं बस उसी चीज़ पे जा रही थी कि मैं अपना जितना हो सके अपना बेस्ट दूँ। लेग स्पिन एक मुश्किल आर्ट है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी इंस्पिरेशन कौन रही है? शेन वॉटसन। Right, all the best. Thank you so much. Right, it's time to call upon the losing captain, Chamari Athapajo for Sri Lanka. Four out of 4, batting first, not working. Maybe look to do something different in the next game? Yeah, maybe. Actually, the thing is, our batters not playing positive cricket today. You know, we lost a couple of wickets early in 2 run-outs as well. So this wicket is maximum we can score 220. It's a good score in this wicket, but 169 is not enough for defend. All the result is not going your way, but some positive. Somebody like Avisha Darhari, her performance has been brilliant. Yeah, she's a very young cricketer in our team, so she's playing good knock under pressures. That's really good, positive things for our side. What would be your message to your team going into the next game? Actually, we have to play our positive cricket always. Matches, sometimes we lost matches, but we have to stick our plans and playing positive cricket, play freely. That's my message to my team. Right, all the best for the remaining games, Shamaya. Thank you very much. Right, time to call upon the winning captain, Bisma Maroo for Pakistan. Well done. Thank you, sir. Good. First of all, very well done for the team. It's the right way to start off ICC Championship. Definitely, we want these points, and we worked really hard today. It was quite hard, but credit to the girls, especially Sidra, how she has played. Credit to her. Looking at the pitch, your bowling side is tailor-made for these conditions. It was quite low when we were batting. I think we restricted them well, and yes, I think we can do a little more better with the ball as well. Talking about your own performance, you've been the key member of that batting side, performing in every game almost. Happy with that? Yes, just trying to finish the job, and yes, from the other end, I think my role is to support, and I think how Sidra has played, credit to her today. Every game, every series matters in ICC Championship, so intensity should be the same in every game? Definitely. 2 more matches, and we're looking for the next match, and we'll try to win the series. Right, all the best for the remaining series. Thank you. Right, that is all we have from Danwar. Back to the commentary box. Here's the promo for the next match, second one-day international, 3rd of June, Friday. And hope you join us then. And until then, take care. See you then.